ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. So that I request all the players of both the team, kindly request you to complete the formalities of signatures. And if you are complete the signature, I request the captains please report here for the tossing ceremony. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಟೆಂಪೋ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಟೆಂಪೋ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದಯಮಾಡಿ ಅದರ ಮಾಲಕರು ಆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. I request the captain of Torpedoes Khana as well as young friend Surwa, please report here immediately for the tossing ceremony. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ನಮಗಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ
Welcome back for the most waiting moment for the cricket lovers, and sorry for that because of course we understand that you are spent a lot of time here coming here in UCG cricket ground to witness this cricket tournament, and because of some strong reason we couldn't manage to start the match in a time, and thank you for your patience, and we are going to start here the big match of this prestigious GAURAV Trophy 2025, which is proudly presented by JEPPU friends and in the sweet and loving memory of their member GAURAV Bolar. So after that 2 days of wonderful cricket tournament we have witnessed in the UCG cricket ground, and because of rain interrupted in the day number 2nd, we were remaining 3 matches, 2 semi-final and the final, and the waiting is over. We are going to start the first semi-final in this prestigious and historical UCG cricket ground. And of course the time is almost inching towards 12 o'clock, so that I have to say good morning and good afternoon together, and welcome back for this prestigious cricket tournament, and welcome for all cricket lovers, those who are already occupied their places in the spectators gallery in the morning itself. I understand that some of them came 2-3 hours earlier because of some schedule is fixed in the earlier it is at 10 o'clock, but because of I already mentioned about some strong reason we have to start the match now. So thank you very much for your once again for your kind cooperation for this prestigious cricket tournament, and good morning those who are of course we are talking about the spectators here, but more than the spectator, and so much of the viewers so excited to watch a live telecast of this cricket tournament through YouTube channel, one of the most popular and quality YouTube channel, Mangalore Media, having a live telecast of this cricket tournament. And welcome for all our lovely viewers. And the waiting is over, and now just we are going to start the first semi-final of prestigious GAURAV Trophy 2025. Myself, Satish Salian, in English, once again welcoming all in commentary box. As the third umpire, we have Pradeep Kotari. So in the scoreboard operation, we have Shrikant, and everything is ready here in our commentary box. Winning the toss, captain of Torpedoes Khana, elected to ball first in this bright sunny afternoon. And looks to be, it's electrifying atmosphere the morning itself here in UCG cricket ground. All we can see that the spectators gallery, which is covered with a absolutely jam-packed stadium, and opening batters are walking towards the middle, and we have a very successful opening pair, left and right combination once again. Santosh Bantwal, who got a lot of runs from the bat in this tournament, and he will be the non-strike, and Arshad Bajal. And coming to the Arshad Bajal, killer of the ball, it is going to be a proud and defining moment for Andhra cricket, that the destructive batter Arshad Bajal has been selected to represent Karnataka, our state, in the Indian Softball Cricket League that will going to commence in coming December. A true recognition of the talent, hard work, the proud moment what we are talking about for all of us having Arshad Bajal in our state team. Of course, in the ISCL, we have 2 teams from Karnataka. One is Bangalore, another one is a Karnataka team. And another proud moment here is for South Kent district is Lokesh Puttur is one more player who is selected for Karnataka state for the ISCL after their performance in the KSPL. And definitely it is a proud moment for all of us having these 2 very good players. But proud moment for us because the batter who is dominated in Andhra cricket is also recognized, and is once again becomes a dominator in the softball cricket, all-round softball cricket, Arshad Bajal. So altogether, yes, we are just starting here the day number last and decided day of this cricket tournament. And as always, Nizam will go into start the proceedings, and umpire Roland Pinto, and just waving his hand to our scorer. And after that, 2 days of wonderful job done by Ratish, who done a great job as a scorer in a commentary box. And the first ball, here comes, far outside the line of off temp, and it's going to be a, looks like, I request electrician,
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ the first ball is a wide which is gone for by umpires. This time nicely driven in the gap. Down the goal point, a chance of run out. Arshad Bajal is in trouble. If it is a direct hit, I think is all over for the killer of the ball. Gabbar is in trouble. In the first ball itself, and definitely the very lucky escape here for Arshad Bajal as the throw which just misses the stumps. And it was absolutely, it was a long breath taken by all the supporters, and more than the supporters of Young Friends Urva. Of course, we know that, understand that this one has got more fans and followers. Arshad Bajal, for his the way of the batting performance, is absolutely dominator, and why he's been given a name as a killer of the ball. And but of course, in this particular tournament, he's not looked that much of comfortable in the middle in the first two matches which is played, and definitely is most dangerous. He can be very effective at any stage. He's got a potential, he got a talent, and more than anything else, he has got immense power behind every stroke he playing. And wait and see how Arshad Bajal will going to bounce back here in this big match. Here comes Nizam bowling away from us. Right arm over the wicket delivers. This time switch it is comes into play. Played it into deep cow point region. Fielder behind the ball and just inside the boundary line. Lovely work done by Sharan in the deep cow point region. Excellent work altogether. Good cricket in the middle. Exquisite switch it. Even though it's a new ball, it's not so easy to get the ball timing and power. And that way that Sharan is chasing the ball. And absolutely, it was excellent chasing here of Sharan as he got a jump here and saving the boundary from Arshad Bajal. But 3 valuable runs in the account of Arshad, and total score moves on to 4 on the board. 5 on the board, correction. This time, played it upishly, very, very safely in that occasion. Nizam realizing that he's just got a view of setting a one fielder in the mid-wicket for Santosh JEPPU. Santosh is a very good user of the wrist. Of course, he's a very good wristy player sometime. And rolling his wrist, and fortunately for him, the ball didn't carry to the fielder at mid-wicket. And scoreboard numbers on to 6 on the board. What innings he played by Santosh Bantwal in the first 2 matches. He played some extraordinary cricketing stroke, especially the 2 stroke which is played. One is a reverse stroke, is an outstanding, and one is straight down the ground into the commentary box. That was 2 valuable strokes from the bat of Santosh Bantwal. This time tried to get that one into the fine leg region, but doesn't get that much of proper connection as he played it down to Sinan. The Sinan is a one man. Of course, it might be the last tournament for him as he was flying to Gulf for maybe for the work and for the bread and butter. Is absolutely the big miss here for the Torpedoes Khan and for his fan and followers. And wishing him once again, all our cricket lovers, have a great future, and great future for your cricket field and your personal life as well. Here comes the next one. Right arm over the wicket balls. This time appeal for something. There's chance of run out. Oh my goodness. Arshad Bajal today has been outstanding. He is having some luck. One more opportunity of run out. Direct, it might be a curtain in the innings of Arshad Bajal. Well. Santosh Bantwal just wanted to go for the switch it in the irrigation. Ball just missing the leg stump. And this is what we are watching, that save from the fielder Sharan in that second delivery of the over. It's 8 without loss of any wicket. Good start here for Young Friends Urva. This time, wrist walk, played it down to mid-wicket region. Sharan will going to cut it off, but ample time for the batter to complete a valuable couple of runs. Straight away 10 runs in the first over for Young Friends Urva. It's good start, the positive start from the opening batters. And especially we can see that both batters are complementing each other with getting a respective 4 runs each. And a couple of runs in the form of extras. Altogether, first over completed, it's 10 without loss of any wicket. You're watching GAURAV Trophy 2025 here in this most beautiful and historical UCG cricket ground.
So 7 hours game. There is no change in format of the game. And in the first day, second day also, we are for the Bangalore pool. It's a 7 hours game. So 2 hours going to be power play. That means 1 hour power play is remaining here. And fantastic weather condition. And time is exactly 12 past 5 in the afternoon. Bright sunny afternoon. And the more than the atmosphere is what, and even here in UCG cricket ground is also the electrifying atmosphere is absolutely very hot condition here in UCG cricket ground because of two very good teams are clashing, and the team which is most successful in that season 24-25 and Torpedoes Khana lifting up the most number of titles in that season, and Young Friends Surva in the second place. And that's why it's going to be a very, very the big match as far as this cricket tournament is concerned for the cricket lovers. Chetan brought into attack to bowl the second over from the Planet Air Travel end. And Arshad Bajal for Arshad Bajal looks like the fielder down at deep square leg and one at deep mid wicket, and the fielder at mid off and mid on and dips a short square leg, short fine leg, short third man, backward point and short extra cover. Starts with the warm up delivery of the afternoon, is gone far outside the lineup of tempo, and Torpedoes Khana need to be very careful while giving such kind of extras, because this is a semi-final. No excuse after being such a hard work to come to the semi-final. You have to be very careful conceding the extras. 11 without loss of any wicket. Chetan round the wicket right arm. Arshad this time appeal for leg before wicket. Suddenly that ball going missed the leg stump, because the way that Chetan is bowling the wide of the crease, we can see that angle what the bowler is delivering that, and Chetan knows that, and right addition there from umpire Sriraj. That ball is just going to miss the leg stump, and leg by is called by umpire. With that extra scoreboard moves on to 12 on the board without loss of any wicket. You are watching this prestigious cricket tournament, GAURAV Trophy 2025. Late GAURAV Bolar is an active member of JEPPU Friends. Of course, physically we are missing him, but his sweet memories always remains in the memories of all the members of JEPPU Friends. Here comes Chetan from the far end. Right arm over the wicket delivers. This time tipped it up, catch it is a call, but ball is sailing and going into the fence for a 6. Can you believe this? My goodness, no one can imagine that the ball will going to travel to the fence. My goodness, maybe that the wind is absolutely taking the ball into that deep, wideish long of boundary. Unbelievable struck here from Santosh Banta. Just have a look at that one. Maybe the two things are really happened in this, because the one thing is that Santosh is using a heavy bat. He is using a heavy bat. At the same time, the direction of the wind is also, and ball is almost deposited into that spectators gallery. Unbelievable struck. Just have a look at that. What I am saying about Santosh Bantwal, the thickness of the bat. You're using the heavy bat. It's not so easy for everyone to use such kind of bats. And the roll of the wrist is absolutely giving everything for that stroke. It's 18 without loss of any wicket in the over number 3rd is in progress. Again rise that one powerfully and confidently down to deep long on protection there in the deep. And before the throw coming from the fielder in the deep, ample time for the batter to complete the single. Terrific form. Santosh absolutely has got a good comeback here for young friend Surva, even though he's been missed out in the last season. But once again, what a welcome for him in this playing 11 of young friend Surva. So far he did a great job from the bat for young friend Surva. Is batting on double figure 11. Arshad is on strike now. This time Arshad joining the party, and it's a massive one. Ball sailing into the road. What a magnificent struck. This is what Arshad Bajal, why he's been selected for the Indian softball cricket league. This is the one reason I want to tell you. The way that he is having the ability of dispatching the balls, it's unbelievable struck. Have a look at the stroke. High and handsome. Oh my goodness.
Why is being a killer of the ball? Why is the gubber of underarm cricket? This is the one reason I want to tell you. The way that he's hitting the ball. The Chetan has been punished badly in this over. 25 without loss of any wicket. In the over number second is in progress. Here comes in Chetan again from the Planet Air Travel and across the line like a placement. Ashraf the fielder down at short mid wicket. Good comeback here by Chetan. It's a rare occasion seeing that Chetan has been punished like that. He's knowing for the economical overs. He's knowing for wicket taking overs. But in this particular over, is a 2 sixes really killing his economy. What he always loves to do in the middle of the ground as in action. Again from the Planet Air Travel and right arm around the wicket. Balls swings and missed and dot ball. Good comeback here by Chetan, but damage already done. Damage already done by both the batters by hitting 1-6 each and taken the total score into 25 after completion of over number 2. This is perfect domination. Perfect domination of the power play from this left and right combination. 25 runs in 12 balls. And both are looking very aggressive, isn't it? And the crowd came here today with a large number. They're not really disappointed, isn't it? The way that this batter absolutely is giving some enjoyment for the spectators who really came in with a big large number. Someone maybe they're made an absence for the office, and some students can be here. We can find to bunking the school and coming here to watch, enjoy the game of cricket, especially the batting of Arshad Bajal and Santosh Bantwal. And I think it's all are paid off. The way that two batters are dominating the first 2 overs, but still Torpedoes Khana has got an opportunity to back in the game. And if you wanted to back in the game, the first thing they have to do is to break this partnership as quick as possible. Otherwise, this batter will going to take this total score is definitely is going to be a monumental, the big one. And if you carry on the business another 3-4 overs, I think it's going to be a difficult job for Torpedoes Khana. So it's very important here for them to break this partnership. That's why they're getting this man, the most successful wicket-taking bowler in the last season for Torpedoes Khana, Sharan brought into attack. He's got a potential, he got a ability, he got a variation, Sharan. And sometimes he can surprise with the pace, sometimes he's surprised with this turn of the ball. So altogether, and captain expecting more from him to do something special here in this third over after that power play. Santosh Bantwal is batting on 11 in just 6 ball, facing first delivery of the over number 3rd. This time delicately swept that one down to fine, like not quite intended as he wanted to play very fine. Ball is in the air for a while. Lucky for him that ball didn't carry to Shakir down at short fine leg region. Ample time for the batter to complete the single. 26 without loss of any wicket. Now that brings Arshad Bajal into strike now. After that power play, we can see that so many bodies out than the deep square like mid wicket, long on, long off, deep cow point, and deep backward mind in fact for the reverse sweep for Arshad. Here comes again outside the line of form with his opponent going for the single, chance of run out. Oh my goodness, this is the 3rd chance. This is why I'm always mentioning about the luck is a fundamental ingredient in the success. And so if you have got a little bit of luck here, if you see the 3rd opportunity to Arshad here, every time the fielders of Torpedoes Khana are shying at the stump, the ball is missing. And once again, luck, fortunes, the brave, what we are saying in cricket is a very beautiful word. Outside the line of leg stump, it's going to be a wide. One more extra addition added to total. It's 28. Umpire not taking. They're confirmed that it's a wide. Even bowler is also saying that yes, it is a wide. I don't want to take. Now umpire saying is already your yes, absolutely right. Because wicketkeeper already they're already gone for review. So he can't take once you are make a decision, he can't take back, isn't it? Because you are losing the one very important review here. Just have a look at that one replay. The review has been taken. Umpire called it wide. And wait and see. Pradeep Kothari
in our commentary box as the third umpire. Will it going to be a wide or not? So wide is confirmed, so that yes, from third umpire as well. So one more addition to total with the addition of that single score, but moves on to 29, 28 correction, 28, and already runs which is registered here. So that one more addition for the total for Young Friends Surwa. Young Friends Surwa, they got a flying start here, electrifying start in the after that power play over. We are witness some powerful hittings from Santosh Bantwal and Arshad Bajal. And now Sharan just asking an umpire to see the quality of the ball. Is that good enough to continue? Umpire says yes, it is. So carry on the business. And Sharan back to his bowling mark. Not a big run up, and with a short run up to 2-3 steps away from umpire Roland Pinto as he bowls next delivery of the over number third. Right arm over the wicket. Santosh. Santosh this time sensible, absolutely sensible batting in the negation. You know exactly the some delivery. Need to give some respect. Not only need to give the respect, but you have to play some soft hand comes into play to realize that there will be a single, because all we can see that fielders are standing in the edge of the circle. And one more addition, scoreboard numbers on to 29. And more than I think there's a game plan sometime from Santosh Bantwala. Maybe he's just thinking about, I think it's maybe the better to have Arshad Bajal in strike. And now maybe the umpire saying that while you are changing your angle, you have to mention to the umpires, isn't it? Whether you're bowling around the wicket or of course left and right combination. When left hand batters coming into the middle, the bowler bowling down the wicket. That time I think they have to tell the umpire, isn't it? This is very important. It's a common thing. I have to be keep in mind the bowlers. Isn't every time you are changing your angle, you have to inform the umpires, isn't it? So. Anyhow, it's a 29 on the board. Over number third is in progress. Around the wicket, he balls to Arshad Bajal. Arshad lofted and ball will going to carry it to the fielder in the deep extra cover region. Arshad Bajal departs. Even though hearing that huge sound from the bat is absolutely instrumental sound. Everyone thought it might be a big six. But just like I mentioned about sometime, the direction of the wind will not going to help you to get the distance. The same stroke which is played by same stroke which is played by Santosh Bantwal from this end to the extra cover. That end, the wind which is carried the ball to the fence. But from that end, it's not so easy to get the distance. At the deep, wideish long off fielder taken the catch just inside the boundary line. Just have a look at it. Comfortably taken by Nizam in the deep long off. So Arshad Bajal, danger man, is back in the pavilion. And Sharan once again justifying his captain's decision. And captain wanted him to please come and bowl and get one wicket here. And he got a huge fish in the net by picking up the wicket of Arshad Bajal. He departs. It's is out for 11 after scoring 11 in 8 balls with the help of one massive sixes. And replacing him is the captain of the side. He's a cool captain, technically very sound player. The man has got a lot of runs from the bat in the last season. In 1-1 day. Sajid coming into middle here for Young Friends. Very useful position for him. Is the number 3 batter. Will going to face Sharan. Sharan, successful bowler. Right arm over the wicket. Reverse sweep comes into play straight away. The chase here for the fielder. Will they come back for the second? Yes, he does, because of slight bit of fumble from the fielder. The ample time for Sajid to complete that couple of runs. Straight away is a level of confidence. We can see that Sajid is usually build the innings by playing some orthodox cricketing show. But in this particular, I'm really surprised the way that is implementing that reverse sweep for the first ball he faced. And he got a success for that as well. 31 for 1. Oh, just wanted to steer the ball. Not a bad idea to do. Then good over. Very good over after that too expensive over in the power play. Sharan has got economical come
wicket taking over, which is comes to an end. I think six runs came from this over of Sharan, because after the 2 overs it's a 25. Now it's a 31 on the board, and 31 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. This has been outstanding crowd. We can see that this is what I'm always mentioning about the love and affection towards cricket, what we are watching in UCG Cricket Ground. This is absolutely jam-packed stadium, and I'm really surprised, Gopi, it is about Wednesday, the working day, and never looks like it's a working day. Is that maybe they're someone absent for their work? Quite understandable, but they doesn't want to see that the cameraman is focusing them. Otherwise, if his manager will going to watch them. They will going to get some firework tomorrow. They have to get some strong reason why you are writing the leave note. But anyhow, Gopi, this is what all about the beauty of the cricket is about. Now, more than I think is everything for the students. You can see some uniforms as well. And this is what the cricket is all about. Underarm cricket is all about. 31 on the board without loss of one for the loss of 1 wicket. This time reverse sweep comes into play. And played it down to backward point region. The couple of runs which is completed here. Chetan, the fielder, just running back and fields the ball ample time for Santosh Bantwal. So this is Santosh Bantwal's innings is how quickly changing his technique. After that, he's very aggressive in the first 2 hours. He's implementing that the technique of rotating the strike after that power play. This is what sometimes is the quality of some cricketer, some batters, and of course experience. What we are talking about, being the experience is not important, but converting your experience into performance is so important. Here comes next one. Wanted to go for the switch it, expansive switch it, but he couldn't manage to get the ball. But because Shakir is too clever in that occasion, changing the line cleverly and bowling outside the line of leg stump, and the ball is collected by wicketkeeper behind the stump. This time down the leg side, they're going for the run, extra run as well. It's going to be a bye signal by umpire, not a wide. Misjudgment here from Santosh Bantwal. Maybe thinking that it might be the delivery which is a wide, what he thought, but it's well within the reach of the batter. 34 on the board for the loss of 1 wicket. This time wrist work comes into play. It's been outstanding technique there from Sajid. I want to tell you, this is not so easy. I will tell you, if underarm wicket, using your back foot, it's not so easy. The way that is using the deftness of the crease, just going back and rolling his wrist to get the single. It's been outstanding. 35 for the loss of 1 wicket. Slowly and steadily, Tarpadus Khan are tightening the screws here. And this time, step shot, played it down to deep square leg region. No one there inside the ring. The fielder in the deep square leg. So that one more single had it to total 36 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. Shakir, the man, is in action from the Planet Air Travel, and right arm over the wicket balls. Reverse sweep again. Played it nicely in the gap. Excellent placement. They can try for the 3. And if they run well, and definitely they're turning for the 3rd as well. Sajid is struggling here. He's struggling. Direct it. It's a lazy running bit of the wicket, I want to tell you, because Sajid is not really running towards a dangerous end. Santosh Bantwal is running towards a dangerous end. But I don't know why the Sajid is that much of slow to react for the 3rd run. He looks like the beautiful, absolutely perfect work done by Shakir. Just a back and flick here after collecting the ball. Just have a look at the way that is broken the stump. And 3rd umpire has been given, decision which is pending, but direct it is always going to be a touch and go. It's going to be a touch and go. Wait and see how well, how could be the decision coming from the 3rd umpire, Pradeep Kothari. Sometime what really happening, sometime even the ball hits the stump, ball is hitting the timber, but because sometime the weight of the ball will not going to dislodge the bails quickly. It takes a little bit time to dislodge the bails. This is going to be a very crucial, Gopi. Sometime testing time for the umpire and technician as well. We are already talking about that testing time for the batter, bowler and the fielder. But sometime even umpires has also been tested, isn't it? Because after that, the technology is a lot more advanced here. And what we're saying about that bails is dislodged from the groove. It's what we need to take a time. Sometime what we are talking about, we are always talking about the hardness of the ball. Some soft ball will not going to dislodge the bails quickly because of the lightness of the ball. And if it is hard ball, I think is immediately we can give the decision. The bails can come off quickly. But here, umpire have to see that when the
the bat is dragged, whether the batsman is safe or not. It's always going to be a very, it takes a little bit time, quite understandable, and needed to be, because what umpiring is teaching here, the fair decision, isn't it? And that's why I'm not really thinking about the time which is spent, but altogether we need to get some excellent result, the best result, the fair result, what we are talking about, because the wicket is very crucial for both the teams. For Tarpurus Corners also knows that Sajid's wicket is very important, and at the same time, young friends who also knows that Sajid's wicket, the captain's wicket, is always is going to be very crucial. So very close one, and at the two things have to be. Well. It's going to be very crucial. And sometime, of course, in the present cricket, we're only watching in the mobile phone. Of course, Gopi, sometime the mobile will going to give us different views. But if you're coming here in our monitor screen, after getting 3-4 angles, there's different thing. And because that's why sometimes the confusion for the spectators as well, more than those who are watching in the mobiles as well. There is too many third umpires in the spectator side. Go be quite understandable. We see that everyone is bending down, watching their mobiles, and thinking that why can't we can become the third umpire for this? And well, the wait and see. And Pradeep Kottari here absolutely observing each and everything here. And Pradeep Kottari. Oh. Sometime we are thinking about only the SSLC exam, second PUC exam, degree exam is a crucial, but this is the examination for umpires as well. He is the third umpire. When it's going to be examination, everything is tested here. Well. Let's talk about the more cricketing action is coming up, and the Pradhav Friends Club registered organizing PFC Trophy 2025 as they are celebrating their Golden Jubilee celebration. So coming 7th December and 14th and 21 December, we are going to witness one more big tournament, the big cash prize of rupees 1,50,000 and one more entertainment for the cricket lovers. That cricket tournament will be organized in Karnataka, Shaktinagar, Mangalore. Of course, it was Shaktinagar government school cricket ground. And that tournament will going to commence on 7/14 and 21st of 25. And Ubar Cup will going to commence in 13 and 14. And one more big tournament will going to commence in Uppinangadi, not in UCG cricket ground. And if you want to witness the cricket tournaments in UCG, I think they have to wait for another 1 month, isn't it, Gopi? Kudla Premier League, one more festival of cricket will going to commence here in UCG cricket ground. And that will from 23 to 26 and 4 days of wonderful cricket. So here comes the decision, and hold your heart, Rick, and it's not out. The batter is safe. So 3 runs has been added to total. It's been outstanding work done by the third umpire and technicians. So thanks to the technicians of Mangalore Media for providing the different angles, whatever the third umpire wanted from the technician, and technicians did a great job.
And what we are talking about, not only third umpire, but even the technicians also tested here. And the cameraman, thank you man, cameraman, giving the angles and provided. So 4 overs completed. After completion of 4 overs, it's 39 for 1. And time to change in voice and time to my friend Mr. Gopi to take over the microphone. Gopi, welcome back and good afternoon. And what a great start here for young friends Surwa. 39 in 4 overs, Gopi, just under 10 runs per over. And projected score will going to take them into 70. And that might be, I think, a danger sign for Torpedoes Khana. And if they do back in the game, Gopi, Torpedoes Khana have to boss 3 good overs to restrict them under 50. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आपने फरमाया, बिल्कुल 39 रन बन चुके हैं। 5 ओवर के पहली गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर खेलना चाहा था। इस वक्त पैरों पर गेंद टकराने के बाद शायद बल्ले का बाहरी किनारा टकराया था। 1 रन का इजाफा हो चुका है। 40 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। और जैसा कि आपने फरमाया सतीश, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इसी रन धारणा के साथ अगर रन बनाते हैं बचे हुए 3 ओवर में यंग फ्रेंड्स, तो उनकी टीम की कुल रन संख्या 70 तक पहुंच सकते हैं। और 70 रन संख्या जो है टॉर्पेडोज खाना के लिए ऐसा कहना पड़ेगा कि लंबा सा लक्ष्य होगा। यहाँ पर अगर 70 या उसके ऊपर का लक्ष्य अगर यंग फ्रेंड्स प्रदान करते हैं तो यहाँ पर कमबैक करना है टॉर्पेडोज खाना के गेंदबाज को। देखते हैं किस तरह से वो कमबैक करते हैं। इस बीच संतोष के लिए हल्के से बैकफुट पर गेंद को पुश कर दिया। इस वक्त कवर पॉइंट पर गेंद पहुंचे, 1 रन का इजाफा। जहां तक संतोष का सवाल है, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया था, इस वक्त तकनीकी कम आक्रामक मिश्रित बल्लेबाजी करते हैं। हर गेंद पर वो करारा प्रहार नहीं करते। गेंद की लाइन को, गेंद की चाल चलन को देखते हुए वो बल्लेबाजी करते हैं। और यहाँ पर अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ऑन साइड पर साजिद ने गेंद को मोड़ दिया। गेंद जाती हुई मिड विकेट पर, फील्डर थोड़े से पीछे तैनात है जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर। 42 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर गौरव ट्रॉफी 2025 के नाम पर खेला जाता है। पहला सेमीफाइनल मैच इस वक्त प्रगति पर। संतोष के लिए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पर टकराई, फील्डर थोड़े से पीछे तैनात। बासित गेंद तक पहुंचते हैं, दूसरे रन के लिए दौड़ पर थ्रो पहुंचा और यहाँ पर साजिद बच नहीं पाए। साजिद का विकेट यहां पर गिर चुका है। हालांकि पिछले ओवर में रनआउट के मामले में वो बच चुके थे, लेकिन यहां पर वो बच नहीं पाए और कुछ हद तक ऐसा कहना पड़ेगा धीमे गति से दौड़े थे और गेंद लगभग संतोष के पैर से टकरा कर गई थी डीप स्क्वायर लेग पर, जहां पर बासित डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से दौड़ कर आए। गेंद को उन्होंने फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन जब तक साजिद रन आउट सेकंड पर पहुंचे, दूसरा रन पूरे करने के लिए थ्रो पहुंच चुका था गेंदबाज के हाथों में और गेंदबाज ने विकेट चटका दिया। देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था। क्लीन पिकअप एंड अवे आउट ऑफ द क्रीज बाय साजिद। और इसी के साथ विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। साजिद की सेंसिबल पारी पर पर्दा गिर चुका है। साजिद आउट फॉर 8 एंड अ सेकंड विकेट लॉस्ट फॉर यंग फ्रेंड्स 43 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। तो जहां तक सवाल है टॉर्पेडोज खाना के गेंदबाजों का, तो यही एक सही वक्त है इस वक्त टॉर्पेडोज खाना के गेंदबाजों को शिकंजा कसने का। यहाँ पर उन्हें कमबैक करना होगा अगर यंग फ्रेंड्स को 50 या 60 रनों के अंदर अगर रोक कर रखना है तो यहाँ पर देखते हैं बचे हुए ओवर्स में किस तरीके से इस वक्त टॉर्पेडोज खाना के गेंदबाज यहाँ पर कमबैक कर पाए। लेकिन जब तक संतोष क्रीज पर मौजूद है, यंग फ्रेंड्स उर्वा की बेहतर रन बनाने की उम्मीदें बरकरार रहेंगी। और एक और बल्लेबाज जिनका आगमन इस वक्त हो चुका है, वन मोर गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, अजमल ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವರು ಸ್ಟೇಜ್ನ ಬಲಭಾಗದ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। तो इस वक्त जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज अजमल, वन मोर गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। और इस वक्त अजमल और संतोष का जहां तक सवाल है, इस वक्त उन्हें साझेदारी निभानी है, एक बेहतर साझेदारी यहाँ पर निभानी है और यंग फ्रेंड्स उर्वा को एक बेहतर स्कोर तक यहाँ पर पहुंचाना है। और जहां तक अजमल का सवाल है, मास्टर क्लास प्लेयर, उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, परिस्थिति के अनुसार वो बल्लेबाजी करते हैं और संतोष की तरह ही आक्रामक मिश्रित रक्षात्मक तरीके की बल्लेबाजी का वो प्रदर्शन करते हैं वक्त के नज़ाकत को समझकर। और यहाँ पर देखना यह है कि संतोष बंटवाल के साथ मिलकर वो किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनाते हैं। इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए निजाम। यह गेंद इस वक्त हल्के से गेंद का पुश कर दिया, गेंद इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में। संतोष बंटवाल की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। संतोष बंटवाल ने रन चुराना चाहता, बैक टू द बॉलर की दिशा में ढकेला और ऐसा कहना पड़ेगा फैंटास्टिक वर्क ऑन हिज फॉलो थ्रू मेड बाय द बॉलर। गेंद को हालांकि फील्ड करने के बाद उसी एंगल में इस वक्त थ्रो किया घूमते हुए और उनका थ्रो इस वक्त बिल्कुल स्टंप्स पर सही बैठता हुआ। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, गॉन फॉर अ ब्रिस्की सिंगल एंड ही नॉट सर्वाइव्ड। उनका विकेट इस वक्त गिर चुका है और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए संतोष बंटवाल का विकेट का पतन कुछ हद तक ड्रॉबैक साबित हो सकता है, क्योंकि संतोष
बंटवाल एक बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे थे, जहाँ तक उनका व्यक्तिगत स्कोर का सवाल है, ही इज आउट फॉर 19 इंक्लूडिंग 1-6, और उनका विकेट गिर जाने के बाद ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम 2 गेंद पर 2 विकेट गिर जाने के बाद निश्चित रूप से यहाँ पर मौका जरूर है टॉरपेडो स्काना के गेंदबाजों को यहाँ पर बाउंस बैक करने का। और निजाम इस ओवर हालांकि कुछ हद तक किफायती गेंदबाजी की है, पहले ओवर के तुलना में अगर देखा जाए अब तक 14 रन प्रदान कर चुके हैं 1.5 ओवर में। अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार, इस ओवर में सिर्फ 4 रन निजाम ने प्रदान किए। नए बल्लेबाज एक और बेहतर बल्लेबाज यंग फ्रेंड्स सुरवा की ओर से अजहर का आगमन यहाँ पर हो चुका है और इस वक्त अजमल सामना करने के लिए तैयार है। इस वक्त निजाम की गेंदों का दाहिने हाथों पर विकेट, अजमल के लिए रिवर्स शॉट, दिल्ली के इंप्रोवाइजेशन, गेंद जाती है बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, वहां पर गेंद को रोकने में सफल। इम्तियाज शायद फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। इंप्रोवाइजेशन करते हुए अंतिम क्षण में गेंद को मोड़ दिया था with a twisted bat at the last moment just wide of the gully feeder and he finds the gap as well at last at deep backward third man, और ओवर रन नंबर 5 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है और 2 रन बल्लेबाज ने यहां पर बटोरे। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 45 रनों पर। It's 45 for the loss of 3 top Indians wickets fallen after the completion of 5 overs. A good over from Torpedo Scanner's point of view came in. Just 6 runs came from Nizam's over, और 5 ओवर के बाद अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा यंग फ्रेंड्स हुआ still looking in a good situation. It's 45 for 3 after completion of 5 overs. आज वर्किंग डे बुधवार होने के बावजूद जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया मैदान दर्शकों से भर चुका है, एब्सोल्युटली जम पैक स्टेडियम, और ये बात ये दर्शाता है कि अंडरआर्म क्रिकेट मंगलूर में खासकर इस यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान पर कितनी जनप्रियता रखता है। और प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट गौरव ट्रॉफी 2025 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए शाकिर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और जहाँ तक शाकिर का सवाल है अपने पहले ओवर में कुछ रन उन्होंने प्रदान किए थे 8 रन, और अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार अजहर इस वक्त सामना करते हुए रिवर्स शॉट स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद अजहर के लिए गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, मिड विकेट से फील्डर दौड़कर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे के लिए दौड़ पड़े, लास्ट सेकंड पर थ्रो पहुंचा अजमल काफी तेज और यहां पर 2 रन प्राप्त करने में सफल। हालांकि शाकिर ने थ्रो को रिसीव करने के बाद बैकहैंड थ्रो जरूर किया था, लेकिन उनका निशाना झुका जो और अजमल और अजहर विकेटों के पीछे निश्चित रूप से एक बेहतर रनर के रूप में जाने जाता है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से डेलिकेटली गेंद को मोड़ा था डीप मिड विकेट पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता थ्रो पहुंचा और बैकहैंड थ्रो जरूर था, लेकिन उनका निशाना झुका, शायद गेंद स्टंप्स पर टकराती तो यहाँ पर खतरा पैदा हो सकता था अजमल के लिए, लेकिन निशाना चूकता हुआ और बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 48 रनों पर। 48 for the loss of 3 wicket in the over number 6 in progress। और इस बीच गेंदबाज शाकिर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था, इन हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए अजमल के लिए यह गेंद, इसमें अजमल कुछ जान नहीं पाएगी गेंद कहां पर गई, रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन शाकिर का थ्रो इस वक्त चूकता हुआ और बल्लेबाज 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। ऐसा कहना पड़ेगा अजमल ने स्ट्रोक्स खेलने के बाद ये जानना चाहा कि ये कुछ हद तक उन्होंने दुविधा में पड़ गई कि गेंद कहाँ गई है, लेकिन आखिरकार 1 रन प्राप्त करने में सफल। और यहाँ पर तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है, और देखते हैं यहाँ पर थ्रो जब स्टंप्सों को टकराया था शायद तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं, और यहाँ पर देखते हैं शाकिर का थ्रो पहुंचता हुआ इस वक्त, अजमल इस वक्त रनिंग पर है और यहाँ पर स्टंप्स पर गेंद जाकर अब टकरा चुकी है। बिल्स इस वक्त डिसलॉज हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दिस इज इंटरेस्टिंग टू सी, और निश्चित रूप से सतीश यहाँ पर देखना पड़ेगा अजमल का बल्ला हवे में था या फिर ग्राउंड पर बल्ला लैंड हो चुका जब गेंद स्टंप्सों पर टकराई थी और बिल्स डिसलॉज यहाँ पर हुए थे। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है, और तीसरे अंपायर जो कि इसका परिशीलन करते हुए प्रदीप कोठारी, और निश्चित रूप से कई बार ऐसा देखा गया, कई बल्लेबाजों में ऐसा देखा गया है कि अंतिम क्षण में बैट लैंड करने में वो काफी हद तक गलती करते हैं, और यहाँ पर अजमल ने देखना यह कि उन्होंने कुछ देरी के साथ बल्ला यानी बैट यहाँ पर लैंड किया है और यहाँ पर वो बच पाते हैं या नहीं। Well, Gopi, it's not a fault of the batters. We are seeing so many dismissal like this because while you are dragging the bat, I already mentioned about the problem for the batter is the reaper, which is above the ground level. When the batters try to drag the bat was absolutely stuck in that reaper, and that was absolute. That time, I think automatically the bat will going in the air. So that's a very big problem, Gopi. It's a very disappointment. Sometimes it's happened 3-4 times. I'm watching in 2 days.
And but here he did the good thing that Gopi he's landed the bat afterwards. He landed the bat afterwards. So not out is a call from the third umpire. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर रीपर जो है थोड़ा सा ऊंचा है, अगर जमीन के सहारे बल्ले को घसीट कर ले जाएंगे सतीश तो रीपर पर बल्ला टकराने के बाद फिर से बल्ला हवा में उछल सकता है। तो यहाँ पर चतुर सोच की थी अजमल ने कि बल्ला क्रीज पर पहुंचने के बाद उन्होंने बल्ला लैंड किया और शायद इस वक्त वो बच चुके हैं और निश्चित रूप से बच चुके हैं और यहाँ पर अजहर सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम शाकिर। गेंद लगभग बल्लेबाज के पैर पर टकराई और यहाँ पर रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बेहतर लिंक तो लाइन के साथ गेंदबाज शाकिर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए 4 गेंदों में इस ओवर में सिर्फ 3 रन वो अब तक प्रदान कर चुके हैं और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को शेयर कर दिया, गेंद पहुंची शॉट थर्ड मैन पर, फील्डर मौजूद वहां पर इम्तियाज, लेकिन एक रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 50 रनों पर। 50 कम्स अप फॉर यंग फ्रेंड्स उर्वा, 50 for the loss of 3 wickets. 50 came in 5.5 overs for losing 3 wickets. Now still in overall calculation, it's going to be 7 balls remaining in their innings. Again, इस बार अजमल का स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पर पहुंचे, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, जस्ट अ सिंगल ही गॉट, 51 on the board, 6 overs completed, 51 on the board। और ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, अंतिम 2 ओवर में टॉर्पेडोज काना की गेंदबाजों ने एक बेहतर कमबैक किया। जब माइक्रोफोन आपने मेरे हवाले सौंपा था तब स्कोर था 39 रन, 39 after 4 overs, and after that in the last 2 overs they come back fantastically by the bowlers of टॉर्पेडोज काना, conceding just 12 runs in the last 2 overs। और निश्चित रूप से कहना पड़ेगा ये एक बेहतर कमबैक यहाँ पर कहलाएगा जो टॉर्पेडोज काना के गेंदबाजों ने अंतिम 2 ओवर में की है। Exactly, Gopi. It's a very good comeback because they got all 9 wickets in hand when I had hand over microphone to you. There's 39 for 1, and after they lost 2 wickets and a wicket of Santosh Bantwal, maybe the big reason that there's some decrease in that run rate because of the settled batsman is back in the pavilion. But 12, I think, Gopi. Of course, you can say that comeback over for the team Torpedoes Khana. Now, last over remaining, Gopi, the 51. I watched the 2 days of cricket tournament, Gopi, and few teams has just crossed the 50 marks. And this is a big semi-final, and getting a 50 in the 6 overs, Gopi. Now, any runs in the last over, the score by Young Friends Urva, definitely it's going to be a bonus run for the team Young Friends Urva. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर जितने भी रन इस अंतिम ओवर में बटोरते हैं यहाँ पर बोनस रन यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए कहलाएंगे। और इस बीच 2 ओवर में बेहतर कमबैक की है चेतन, इस वक्त टॉर्पेडोज खाना की गेंदबाजी में क्या वो बेहतर गेंदबाज के सिलसिले को इस अंतिम ओवर में भी गेंदबाज चेतन यहाँ पर बरकरार रख पाते हैं या नहीं देखना पड़ेगा। फिलहाल अजहर और अजमल इस वक्त क्रीज पर मौजूद और चेतन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त यंग फ्रेंड्स उर्वा की पारी में और चेतन ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजमल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और चेतन पहली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन करना चाहा लेकिन ठीक तरह से कर नहीं पाए। गेंद पहुंची इस वक्त शॉट थर्ड मैन पर इम्तियाज के हाथों में और अंपायर ने इशारा किया कि दे आर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। स्कोर बोर्ड पर अब पहुंच चुका है 1 रन के साथ, कुल मिलाकर 52 रनों पर, 52 on the board for losing 3 wicket at the start of the 6th over। अजहर निश्चित रूप से अजहर इस अंतिम ओवर में कुछ आक्रामक स्ट्रोक खेलना जरूर पसंद करेंगे क्योंकि 5 गेंदें बाकी हैं और अरशद का जो मनपसंद स्ट्रोक है इस वक्त रिवर्स शॉट, ये जानते हुए कि अजहर रिवर्स शॉट स्पेशलिस्ट है। इस वक्त टॉर्पेडोज खाना के कप्तान ने खिलाड़ी को ठीक डीप बैक थर्ड मैन सीमा रेखा के पास तैनात किया इस वक्त। और इस बीच देखते हैं अगली गेंद पर अजहर किस तरीके का स्ट्रोक यहाँ पर अपनाते हैं। और इस बीच गेंदबाज चेतन तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजहर के लिए अगली गेंद, ये गेंद अजहर ने गेंद को खेल दिया इस वक्त, गेंद पहुंची कवर पॉइंट पर, बासित गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, जस्ट सिंगल ही गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 53 रनों पर। 53 for the loss of 3 wickets in the over number 7 in progress. Just 4 balls left in overall calculation in the innings. Fantastic live coverage we are just watching on Mangalore Radio under the great leadership of Kamal Brothers। और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हजारों दर्शक इस बेहतरीन श्रृंखला का इस हाई वोल्टेज मैच का मुआयना करते हुए। और यहाँ पर बराबर का टक्कर जो की जा रही है मंगलूर के 2 प्रतिष्ठित टीमों के बीच, यंग फ्रेंड्स उर्वा और टॉर्पेडोज खाना के बीच। चेतन फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद इस वक्त तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर। पहले 2 गेंदें काफी बेहतर इस वक्त चेतन फेंक चुके हैं, तीसरी गेंद लेकर तैयार और अजमल इस वक्त गेंद बल्लेबाजी करते हुए। और इस बीच चेतन अगली गेंद लेकर तैयार, अजमल के लिए उछालना चाहा, गेंद इस वक्त लगभग पैर पर टकराई है, बल्ले का डिफ्लेक्शन हुआ नहीं, गेंद पैर पर टकराई थी लेकिन लाइन के बाहर टिप्पा खाती हुई अंतिम क्षण में। हालांकि गेंद डिविएट होकर अंदर की ओर आई थी जरूर लेकिन लाइन के बाहर टिप्पा खाती हुई अंपायर ने इसे सही तरीके से नकार दिया इस अपील को। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 54 रनों पर। 54
4 for the loss of 3 wicket. 3 fantastic deliveries bowled by Chetan in this over. और चौथे गेंद लेकर इस वक्त तैयार सामना करते हुए इस वक्त अजहर चेतन की गेंदों का हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज चेतन और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजहर के लिए अपना मनपसंद स्ट्रोक खेलना चाहा, लेकिन विकेट कीपर मंसूर इस वक्त गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए और जैसे ही अजहर ने रिवर्स शॉट खेलने के लिए अपना बल्ला तिरछा अड़ाया, चेतन ने जो गेंदबाज थे पहले ही भांप लिया कि वो रिवर्स शॉट खेलने वाले। लेग स्टंप पर बेहतर लेंथ और लाइन के साथ उन्होंने गेंद फेंकी जरूर है, लेकिन इस गेंद को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए। विकेटों के पीछे मंसूर और एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 55 रन, 55 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 7 दैट आर लास्ट इन प्रोग्रेस। जस्ट 2 balls रिमाइनिंग इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स। और इस बीच कमेंटेड बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाज चेतन यंग फ्रेंड्स रुआ की पारी की का दूसरा अंतिम गेंद लेकर तैयार। द सेकंड लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। 4 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज चेतन फेंक चुके हैं और अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहे, एक बार फिर से नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट, जस्ट अ सिंगल गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 56 रनों पर। अब तक 56 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि अंतिम गेंद उनकी पारी का इस वक्त बाकी। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ रिमाइनिंग और इस बीच चेतन गेंदबाजी करेंगे उनकी पारी की अंतिम गेंद को इस वक्त बल्लेबाज अजहर के लिए। अजहर सामना करने के लिए तैयार हो। देखते हैं इस उनकी पारी की इस अंतिम गेंद पर अजहर किस तरीके का स्ट्रोक यहाँ पर अपनाते हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए चेतन। द लास्ट बॉल ऑफ द यंग फ्रेंड्स उर्वास इनिंग्स इज नाउ coming up again. Oh, this time he bowled too far outside the leg stump. Wide declared by umpire. 1+1 2 runs now added to the total. 5 बेहतर गेंदें चेतन ने फेंकी थी, लेकिन इस अंतिम गेंद पर न जाने उनको क्या सूझी कि गेंद को लेग स्टंप पर उन्होंने फेंकना चाहा, लेकिन काफी बाहर फेंक दी, लेग स्टंप से बाहर और 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 गेंद इस वक्त बाकी है। और देखते हैं इस अंतिम गेंद पर बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। और इस बीच गेंदबाज चेतन पारी की अंतिम गेंद लेकर तैयार। इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हाजिर हो चुके हैं, अजमल स्ट्राइक पर आ चुके हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट चेतन इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अंतिम गेंद लेकर तैयार। इस बार चूंकि शॉट फाइन लेग पर थ्रो पर स्ट्राइक पर, लेकिन थ्रो को गैदर करने में सफल। हालांकि गेंद स्लिप डाउन पर पहुंच चुकी है इस वक्त, लेकिन बैकअप होता हुआ जस्ट अ सिंगल ही गॉट इन द फाइनल डिलीवरी ऑफ देयर इनिंग्स। द इनिंग्स इज अप for young friends Orwa. 59 runs they scored in the stipulated 7 overs, and now the target they set for Torpedoes Khana is exactly 60. So Satish, quite interesting figure, 60 exactly the score, the target. In 7 overs they have to score for victory with a required run rate of just over 8.5 runs per over. They have to score for victory. That means अब 60 रनों का लक्ष्य है और इस वक्त देखते हैं 60 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यहाँ पर टॉर्पेडोज खाना के गेंदबाज किस तरीके की रणनीति अपनाते हैं अपनी बल्लेबाजी में। तो इस वक्त इस श्रृंखला की सफलता के लिए श्रीमान राजेश कईकंबा इन्होंने शुभकामनाएं भेजी है। बेस्ट विशेस फ्रॉम राजेश कईकंबा टू द सक्सेस ऑफ दिस टूर्नामेंट। और एक बार फिर से हम अभिवादन करते हैं श्रीमान राजेश कईकंबा का, जिन्होंने इस श्रृंखला की सफलता के लिए शुभकामनाएं भेजी है। 60 रन एग्जैक्टली, जस्ट ओवर 8.5 रन पर ओवर। सतीश, इस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट इन द स्टिपुलेटेड 42 डिलीवरीज दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री विद हेल्प ऑफ 10 विकेट। द प्रेजेंट इक्वेशन शोज फॉर देम। और यहाँ पर टॉर्पेडोज खाना की पारी यहाँ पर शुरुआत होगी। दर्शक धीरे धीरे मैदान पर और ज्यादा इस वक्त जमा होते हुए मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। सतीश, जहां तक सवाल है इस वक्त 60 रनों का अंतिम 3 ओवर में फैंटास्टिक कमबैक मेड बाय द बॉलर्स ऑफ टॉर्पेडोज खाना इन द लास्ट 3 overs. They conceded just 20 runs after being conceding 39 in first 4. They come back very well in the next 3 overs, conceding just 20 runs. Now exactly 60 टारगेट। टॉर्पेडोज खाना के पास सशक्त बलाढ्य बल्लेबाजी का लाइनअप है और इस वक्त 60 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना उनके बल्लेबाजों को उतना मुश्किल नहीं होगा अगर वो अपने क्षमता एबिलिटी के अनुसार बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन यहाँ पर यंग फ्रेंड्स के पास भी बलाढ्य बॉलिंग लाइनअप है और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा इस बलाढ्य गेंदबाजी के लाइनअप पर टॉर्पेडोज खाना को अगर रन्स बनाने हैं, लक्ष्य की ओर मंजिल की ओर अग्रसर होना है, तो निश्चित रूप से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बल्लेबाजी यहाँ पर उन्हें देनी होगी। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। और इस दूसरे सत्र में, इस
आज के इस पहले मैच के दूसरे सत्र में देखना यह है कि एक रोचक क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखते हैं इस वक्त इस 60 रन 60 रन एग्जैक्टली 60 द टारगेट फॉर टॉर्पेडोज काना सेट बाय यंग फ्रेंड्स। और इस 60 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यहाँ पर टॉर्पेडोज काना के बल्लेबाज किस तरीके की रणनीति यहाँ पर अपनाते हैं। लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, इस दूसरा सत्र सेकंड सेशन काफी यहाँ पर दिलचस्प होगा। इस उम्मीद अपेक्षा के साथ माइक्रोफोन पर अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ सतीश। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Well, Gopi, exactly you mentioned about even that target which is set by young friend Surwa. It's absolutely big one. And by seeing that condition of the ball and seeing the condition of last 2 days cricket, we have watched that the bowlers most dominated. But Gopi, always we are mentioning about the cricket is game of glorious uncertainty. The new day and a different day. And if you look at the pitch, Gopi, it's a fresh pitch. After that, having a 2 days of rest, we can see that the pitch is so beautifully done by the curator under the leadership of JEPPU UFC. The ball which is coming very nicely to the bat. It's not like that watching the 2 days of cricket. The ball is absolutely coming to the bat, so that Gopi is a match which is not yet over. Because they have got some destructive batting department aside of Torpedoes Khana. They got the batter like Bashit, the captain is leading from the front, has got a plenty of runs in the last season. They got very destructive Ashraf in their side. They got a very good strike rotator, the very intelligent cricketer Shakir. So Gopi, I am not saying that this match is that much of easy for young friend Surwa, because they have to deal with some very good batting department of young Torpedoes Khana. So that Gopi, young friend Surwa, the batter did the job, and it's all up to the bowlers to justify the effort of their bowler. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा 2 दिन के विराम के बाद पिच जो कि काफी बेहतरीन तरीके से तैयार की गई है, खासकर जया यूएफसी के जो कि क्यूरेटर हैं इस मैदान के, जो पिच को बेहतरीन तरीके से उन्होंने तैयार किया। और गेंद हालांकि इस फ्रेश पिच पर गेंद काफी तेजी के साथ आती है, तेजी के साथ टर्न लेती है। और देखना है कि इस तेजी को किस तरह से समझकर यहाँ पर टॉर्पेडोज खाना के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर पाएंगे। लेकिन टॉर्पेडोज खाना के बल्लेबाज यहाँ पर एक बेहतर शुरुआत देते हैं। उनके सलामी बल्लेबाज जो कि बासित और शाकिर इस वक्त मैदान पर उतर चुके हैं, जो कि खासकर पावर प्ले का फायदा उठाने में माहिर है। तो निश्चित रूप से टॉर्पेडोज खाना अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकता है। लेकिन जहां तक यंग फ्रेंड्स का सवाल है, इस वक्त तुम्हें चाहिए एक मैजिकल गेंदबाजी, चमत्कारी गेंदबाजी राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर। तो देखते हैं यहाँ पर उनकी पारी में क्या होता है। और आगे का आगोते काल सुनाने के लिए अब माइक्रोफोन पर आइए सतीश। Well, thank you, Gopi. Just mentioning about the batting department of Torpedoes Khana. The first over will going to start here from the committee box end, and Rifan is a very successful opening bowler for the side of young friend Surwa, known to be a very economical bowler, will going to start the proceedings from the committee box end. Here comes first ball, right arm round the wicket. First ball itself! Oh my goodness! Can you believe this? I think they are missed the golden wicket. I'm not really thinking about that. They missed the tennis ball. He's absolutely missing the golden egg. What he need to grab in that occasion, isn't it? The fielder at short fire, like missing that golden opportunity to get that one. Even though the fielder is not expecting that the ball will going to come very quickly to him. Just have a look at the slow reaction coming from the fielder, and he just dropped that straightforward chance here for his team as well. So first ball itself, it's going to be luck here favoring Bashit, just like how the luck is favored for Arshad Bajal when young friends were batted in the middle, and same thing is going here for Bashit as well. Second time in this over, right arm over, Shakir wanted to go for the reverse sweep. They're going for the kick single. Chance of run out direct. It might be a curtain in the innings of the batter Shakir, like by call by umpire, and Rifan quickly turns back on his follow through and going for the run out in the non-seeker's end, but throw is very wide, very wide indeed in negation, so that Shakir survived from that run out. 2 runs in 2 balls. The intention is very clear here from both the batters. They know exactly if they wanted to chase this big total, they have to take the advantage of the power play overs. At least 1-2 big shot, just like how Santosh Bantwal and Arshad Bajal picked up 1-6 each in their bat, and did the same thing. They have to get in this particular 2 over the power play. Rifan from the wicket. Delhi was this time again going for the reverse sweep. No appeal coming from the bowler. The overthrow will going to comes into play. Couple of runs which is completed. Well, leg by call by umpire in that occasion, so that with the addition of that leg by scored Namuzan to 4 on the board. Shakir just wanted to go for the reverse sweep, but the low full toss. Shakir might be thinking about the ball is coming along the carpet, and ball is just missing the leg stump, off stump. In fact, he is going for the reverse sweep, so going to miss the off stump of the batter. Here comes the 4 balls which is completed, 4 runs which is completed in 3 balls.
and 56 more runs required for the victory in 39 balls. Here comes Rifan, right arm around the wicket to Bashid. Bashid drives that one, handsome looking drive, but protection is there in the deep. They wanted to come back for the second. In comes a throw, chance of run out, and they completed a couple of runs. Lovely running between the wicket. We can see some aggressiveness here in these two batters. Needed to be. When you're not able to get the boundaries and sixes, then you have to look for the rotation of strike, putting some extra pressure onto the outfielder by picking up the first run very quickly. And this is a very excited crowd here, absolutely enjoying the each and every moment of this beautiful match, isn't it? Nail biter. It was high voltage match between these two, and 6 runs already scored here in the over number first is in progress. Rifan, 5th time in this over. Right arm around the wicket. This time again he wanted to go for across the line of the delivery. Good pick up and throw there from Arshad Bajaj, but he couldn't manage to stop the single from this to batter. With that single scored Namuzan to 7 on the board without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. All kind of competition we can see from these two very good teams from the South Indian district, having high rankings, and definitely they're really going to battle hard here for the place in the big final of Gaurav Trophy 2025. Last time in this over, right arm around the wicket to Shakir. Shakir this time, oh, this is going to be a big miss. Wicket keeper behind the stump, Ishad. He's tried his level best to send Shakir into pavilion, but looks like it's a little bit late for him to react for the stump. The first over completed. After completion of first over, chasing 60 to win this match. It's 7 on the board without loss of any wicket. Gopi, the comparison between these two, I think in the first over, the team Young Friends has got 10 runs, and not a big difference, only 3 difference between these two. They got all the wickets in hand, Gopi. Maybe, I think, Gopi, the Rifan, I think from the point of view of Young Friends, this is a good over, because 7 in the power play, always considered as economical over. बिल्कुल सतीश, जब खासकर बासित और शाकिर जैसे बल्लेबाज मौजूद हो, पावर प्ले ओवर में 7 रन प्रदान करना बेहतर गेंदबाजी कहलाती है, खासकर रिफान ने जो इस वक्त की है। लेकिन अब 53 रनों का लक्ष्य, 6 ओवर का खेल बाकी था। रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ गॉन जस्ट बिलो 9 रन्स पर ओवर, दैट मींस 36 बॉल्स रिमेनिंग, 53 रन्स रिक्वायर्ड। अब इस दूसरे पावर प्ले वो जो ओवर शुरू होने जा रहा है, यहाँ पर कम बैक करना है तो कम से कम 10 से 12 रन टॉर्पेडोज खाना के बल्लेबाजों को बटोरने होंगे अगर उन्हें यहाँ पर कम बैक करना है। तो यहाँ पर पहला ओवर अंडर प्रेशर ऐसा कहना पड़ेगा रिफान ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। Exactly, and one more interesting move there by the captain of the side of Torpedoes Khana is that keeping Ashraf and down in the order. Usually Bashit and Ashraf is opening the innings in the first 2 matches, and one more big man, I actually never forget, the match finisher Sinan is absolutely relaxing there. We can see that dugout is some relaxation is there because Sinan is there. So everything that having Sinan in the middle order, of course we got a good chance to back in the game. Wait and see how he is going to come to that middle, and here comes the first ball. Right arm over the wicket, balls again. Lovely, not a good start here from the bowler Tanveer, one who did a great job here for young friend Surwa, especially in the opening overs. It's not an easy job for a young man to come and bowl under pressure game, and that's just clear. We can see the pressure, the man of the match in the previous 2 matches for his excellent bowling performance. Tanveer, right arm over the wicket, this time swings it hard, but the mid wicket is there. This is a very good field set there by the captain of young friends. So you need to appreciate, because usually you can see in the power play only orthodox long on and long off is the usual the field set, but they're seeing the strength of the batter. They kept the fielder in the mid wicket so that they're saving the boundary. This is what sometimes we are talking about. The game plan is so important in cricket if they wanted to win this match. Here comes Tanveer, bowling from the Planet Air Travel end. Right arm over the wicket. Ball Shakir wanted to go for the expansive drive. He misses the line completely. You miss height. What we are talking about, the man with the fantastic bowling performance in 2 matches, he's got the man of the match award, Gopi. Now he's justifying, I am not simply got the man of the match, I got a lot of hard work to get that man of the match, and once again he's carrying his business in this big semi-final, Gopi. Huge wicket. The Shakir is known to be for one who has got an ability and potential of playing a long innings, rotating the strike and making a little bit of trouble for the bowler, and his wicket, Gopi, definitely it's a huge one for the young friend Surwa. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर शाकिर का विकेट पतन होना काफी हद तक ड्रॉबैक साबित हो सकता है टॉर्पेडोज खाना के लिए। तो यहाँ पर जहाँ तक सवाल है, गेंदबाज थे तनवीर जिन्होंने गेंद फेंकी थी जरूर ऑप्शन से कुछ बाहर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आए और इस टर्न को समझ नहीं पाया शाकिर। इस गॉड इज इनसाइड एज ऑन दैट, जस्ट ट्रैक डाउन टू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट, और शाकिर का विकेट का पतन इस वक्त यंग फ्रेंड्स उरुआ के गेंदबाजों को कुछ हद तक आत्मविश्वास बढ़ाने में सहकारी हो सकता है। लेकिन
अभी भी टॉर्पेडोज काना के पास बलाढ्य बैटिंग लाइनअप मौजूद है और इस वक्त देखते हैं किस तरह यहाँ पर बलाढ्य बैटिंग लाइनअप जो है टॉर्पेडोज काना की, उस पर बल्लेबाज, उस पर गेंदबाज यंग फ्रेंड्स हुआ के आने वाले ओवर्स में किस तरह अंकुश लगा पाते हैं. Well, Gopi, in the dugout, we can see the big man there in the dugout, Gautam. Absolutely, the cameraman is very much impressed with this man. The big man is the biggest supporter of young friend Surua, and everybody knows that he is a very good traditional pili dancer and what you call the tiger dance, the traditional dance of our Tulunadu. Now coming to this over now, again Tanveer is continuing from the far, and Ashraf the danger man is got some demotion in the order, coming as a number 3 batter, and here comes the pass ball lofted, and that will be a bounding. Well, it's really surprised everyone the way that Ashraf is hit the ball. I'm really surprised how the ball is went to the deep long on long of boundary. Well, looks like maybe the bat speed which is taken the ball into their fans here. Just I want to see it in a replay. The very interesting cricketing stroke. Tanveer balls in cutter coming into the batter. Just have a look at that one in the replay. Oh, almost we can see the wrist work comes into play. He got a strong wrist and played it over the head of the bowler. Very straight as an arrow, and no chance for the fielder at deep long off to cut it off. So with that boundary, Rajesh, the fielder, is known to be one of the best outfielder. Is yes, absolutely. And yes, when he is missing miss, no one can get that because he is such a good fielder in the outfield and definitely fails to stop the boundary. Welcome boundary for Torpedoes Kana. Again, wanted to go for the expansive drive. It doesn't get hold up that properly. Ball landed safely. No one there in that point region, so that before the third man fielder will going to collect the ball. Ample time for the batter to complete the single. Now some confusion out here in the middle. Therefore that I think maybe some disturbance here from the closing fielder. That's what the batters are claiming here, not to disturb while they were delivering the ball. So umpire Roland Pinto is just having some word with the fielding team as well as the batters. What really happened, they need to clarify here. Scoreboard is 14 on the board. Already now the Torpedoes Kana is just switching the gear here, shifting the gear here by getting the boundary. Looks like it's going to be last comeback here for the team Torpedoes Kana. So what all together, and one more big tournament will go into commence in Krishnapura and KFC Premier League. An umpire will ask for the third umpire. I don't know actually the reason for the third umpire. So umpire will go into call to the third umpire. So actually what the call for the third umpire for the reason. Well, it looks like, and I think they're claiming maybe about that the before delivering the ball, after delivering the ball, before delivering the ball, whether the fielder is gone outside the circle. That's what umpire is claiming. I want to see here, but the question raising here: will it going to be a possible year for umpire to watch the field view? Definitely, the technician will going to provide you everything. The umpires will going to provide you everything about this, what really happened, whether he's gone outside after the delivery or before the delivery. This is what really want to see. It's very difficult to say, and looks like. Actually, the third umpire have to see that while delivering the ball, whether he is inside the line or not. The umpire have to see that after delivering, you can after the delivery, you can go back. You can go back outside the ring, and
We are talking about Krishnapura Premier League, the first time in the history without taking a entry fees. And KFC Krishnapura organizing the huge tournament, the 1 lakh cash prize, and 1.5 lakhs in fact, the huge cash prize for the team, winning team, and without entry fees. And this has been fantastic, and under floodlight, the first huge tournament which is organized without taking entry fees from the teams which is taking part in the tournament, and a lot of entertainment for the cricket lovers in coming December, and wait and see. So umpires absolutely has got a problem to get the view of the field set, whether the fielder is outside the circle before the delivery. So umpire will going to carry on, looks like that. Yes, it is. So sorry for that. And okay, the score which is remains on 14 on the board, 14 for the loss of 1 wicket, and outstanding cricket tournament is under progress. Gaurav Trophy 2025, and JEPPU friends organizing this cricket tournament with the sweet memory, the loving memory of late GAURAV BOLAR, one who is a very active member of the friends, JEPPU friends. Here comes Tanvir, will going to continue. Right arm over the wicket, delivers. Just driven that one in the gap, went to the widest long on boundary for 4 runs. My goodness, the way that Bashit is hit the ball, absolutely, it will going to frustrate the bowler, Gopi, because nothing wrong with the line of the ball, but he is very confident after playing that stroke against the line. That ball is almost coming into the batter, targeting the middle and off stump, and Tanvir, Bashit know exactly where the fielder is. They're long on, one field at mid-wicket. So he's choosing that cow corner, and one of the safest area to hit the ball, cow corner. Why you are calling that cow corner? Because of course in the olden days the cricket is playing in the agricultural lands, and there of course the cows is tied in that safest area. Ball doesn't going to hit the cows, so that that becomes the name for cow corner, and the safest area, and no one there in that region. Again driven that one into that mid-on. They're going for the single chance of run out, but the fielder the misses the ball completely. This is a good over. This is a good over from the point of view of team Torpedoes Khan and Gopi. What we're talking about, 25 what young friends got in 2 overs of the power play, and Torpedoes Khan 19 they got, loss of 1 wicket. That means 6 runs difference between these two teams. Not a big difference, Gopi, 6. That one big shot can change the complexion of the entire game. So that I think it's a good reply coming from the batters of Torpedoes Khan. बिल्कुल सतीश, और इस ओवर के प्रारंभ होने से पहले मैंने कहा था इस ओवर में टॉर्पेडोस खाना के इस ओवर प्रारंभ होने से पहले मैंने फरमाया था सतीश कि इस ओवर में कम से कम 10 से 12 रन यहां पर बटोरने होंगे। टॉर्पेडोस खाना के बल्लेबाजों का उन्हें कमबैक करना है, और यहां पर 10 से 12 रन वो बटोरने में सफल हो चुके हैं। इस ओवर में 12 रन बने, तो अब द इक्वेशन स्टैंड्स 41 ऑफ 30 डिलीवर्स, दैट मींस रिक्वायर्ड रन रेट स्ट्रेट अवे कमिंग डाउन टू 8.20 रन पर ओवर। 30 गेंदें बाकी, 41 रन चाहिए, और निश्चित रूप से यहाँ पर जब तक ये जोड़ी मैदान पर मौजूद रहेगी यंग फ्रेंड्स उरुआ के लिए सिरदर्द और भी बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहले यंग फ्रेंड्स उरुआ के सामने ये बात ठहरता है, उनके गेंदबाजों के सामने कि कमबैक अगर उन्हें करना है तो इस जोड़ी को यहाँ पर तोड़ना होगा। फिलहाल पिछले ओवर में जो चौका बासित ने लगाया था काबिल तारीफ, और यहाँ पर अशरफ का चौका था तो स्ट्रेट उन्हें लगाया था, वो भी काफी बेहतर है। वो 2 चौके टॉर्पेडोस खाना को इस मैच में वापस ला चुके हैं इस ओवर में। ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋಪಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಹತ್ತಿರ. Okay, first ball, Ashad brought into attack and starts with the dot ball, and now Gopi, the entire game will going to change after that power play, isn't it? What they got 2 boundaries. Of course, the second over comparison in the young friends innings, they got 2 sixes of the bowling of Chetan, and in this over, previous over, they got 2 boundaries, and of the bowling of
bowler Tanveer. So altogether, the equal battle is on between these two teams. It's 19 for 1 in the over number 3rd is in progress. Left arm round the. Oh, lovely delivery indeed. That ball is absolutely nipped back into the batter. The more turn in that ball, the deviation we can say, Gopi. That's why the Bashit is a little bit uncomfortable. By the ball is coming little bit extra turn in that ball, and he managed to play that one back to bowler. So back to back 2 dot balls will go into little bit pressure is building up here for the batter Bashit, and wait and see how we're going to break the shackles here. Again, shackle here, left arm around the wicket. Ball system. What we are talking about? He want to break the shackle, but he finds a fielder. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement is it. The way that ball is coming into the bat is absolutely short pitch delivery, no doubt at all. And batter Bashit just swings that one into the mid-wicket region, and Sajid down at mid-wicket. Just have a look at that, and across the line, swings it right from the middle of the bat. Platter version, Gopi. And one of the, what we're talking about, the dimension of this cricket ground is concerned, Gopi. This is one of the longest part of the cricket ground. And getting the distance in that region, I think it might be the short selection order too, but not up to the mark here from Bashit. बिल्कुल सतीश, स्ट्रोक काफी बेहतर था, लेकिन जैसा कि आपने फरमाया सतीश, डायमेंशन जो कि इस मैदान का है वो ऐसा है कि डीप मिड विकेट जो क्षेत्र है काफी लंबा है, तो यहाँ पर स्ट्रोक बेहतर था बासित का, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत। और अरशद ने एक फील्डर को वहां पर डीप मिड विकेट पर तैनात किया था, ये जानते हुए कि बासित ऐसे स्ट्रोक्स खेलने में माहिर हैं, और उसी तरीके की उछाल भरी गेंदबाजी उन्होंने की। गेंद अंतिम क्षण में थोड़ी सी उछाल ली, इस उछाल को पहचानते हुए इस वक्त उछाला जरूर बासित ने डीप मिड विकेट पर, लेकिन वहां पर फील्डर को प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि मैंने फरमाया था सतीश, चंद गेंद पहले यंग फ्रेंड्स के गेंदबाजों को कमबैक करना है, तो इस जोड़ी को तोड़ना होगा। बासित का विकेट यहां पर गिर चुका है, अब कमबैक करने का मौका जरूर है यंग फ्रेंड्स उरुआ के गेंदबाजों को आने वाले ओवर्स में। Well, Gopi, every fall of wicket is coming one more big players. The batsman is in the middle after losing Bashit here. Coming here is a Nizam, one more very quality players in the side of the team Torpedoes Khana, who can bat as well. Is a good all-rounder. Here comes Arshad, lovely delivery indeed, beating him outside the line of off-temp, so that no question of leg before wicket, but there is a question of leg by, in fact, there from umpire Roland Pinto. With the addition of that leg by, scored more than 20 for the loss of 2 wickets. Still long way to go. 40 needed from 26 balls. This is going to be a fantastic over so far. Only 1 run so far in 4 deliveries. Just like what Sharanis did in the 3rd over for the team Torpedoes Khana, when they're going with the big gun, 25 runs in the 2 overs. Then Sharan came in and picked up a wicket as well in that over. And same thing is going here for the team Young Friends Surwa. So altogether the equal battle is on. Now Danger Man is on strike. Ashraf, he can surprise with his big hits. And he got all the potential of sending the ball out of the park as well. Arshad, left arm around the wicket, delivers. Beautiful delivery, chip that one in the gap. Will they come back for the second? No. They're not going. This is asking for trouble. They're asking for trouble if they want to go for the second run, because the ball is almost close to that fielder. And coming for the second means definitely the danger for the batters. Settle for the single. With that single score, but was under 21 for the loss of 2 wickets in the over number 3 is in progress. Outstanding semi-final is in progress between these two very good teams. Here comes an Arshad. Final time in this over. Right arm over the wicket. Appeal for leg before wicket. Umpire not interested. Not a bad shot, I want to tell you, but umpire will going to see that where the ball is hit and where the ball is going to travel. And no signal came, means Gopi, it's from the bat. And that was really saved him from the leg before wicket. What a great over, Gopi. Excellent over there from Arshad Bajal. Only we are talking about Arshad Bajal. Coming to the Arshad Bajal, Gopi. The good news already I mentioned about he's been selected for the team Karnataka State for representing Karnataka State for the ISCL, Indian Softball Cricket League, and more than any Gopi, he is the one who can do from bat and ball as well. And I'm just wanted to watch him. Well, he was good enough to ball the overarm bowling, then become the perfect all-rounder. And of course, if, the captain will going to try for him in the ISCL, give one over for him to test him, can be very effective in the bowling as well. Because always Gopi in the left-arm bowler is very effective. We are watching so many left-arm bowlers in international cricket as well. Just like we are talking about Washim Akram is one of the swing bowler, and so many left-arm bowlers is so effective. Altogether, Gopi, just I'm talking about Arshad Bajal. He's been an absolutely big asset and the proud moment for all underarm cricketers. He's been selected for Karnataka State for ISCL. बिल्कुल सतीश, हमारे लिए काफ़ी बड़ी खुशी की बात है, खासकर मंगलूरियंस के लिए, हमारे लिए ISPL के लिए अरशद जो कि
ISCL के लिए जो कि अरशद सिलेक्ट किया गया है। और निश्चित रूप से अरशद के पास वो क्षमता एबिलिटी मौजूद है, अंडर आर्म के साथ साथ ओवर आर्म क्रिकेट भी बेहतर खेल लेते हैं। शायद वहाँ पर कर्नाटका टीम में जब वो खेल रहे हो तो शायद उन्हें गेंदबाजी भी दिया जाए ओवर आर्म के लिए। और हम दिलचस्प हम एक्चुअली इंतजार कर रहे हैं कि कब वो ओवर आर्म गेंदबाजी करते, किस शैली से करते हैं, ये हम देखना चाहेंगे यहाँ पर ISCL में जब वो कर्नाटक की ओर से खेलेंगे। तो एक बार फिर से अरशद बजालीन को बधाई देते हुए आगे की ओर आगे बढ़ते हैं इस मैच में। तो 38 रन और चाहिए, 38 मोर रन रिक्वायर्ड, द ओवर्स रिमेनिंग 4, दैट मींस 24 बॉल्स रिमेनिंग। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए मुशफीक का ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। और पहली गेंद इस वक्त तो फेंकते हुए आरिश के लिए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती है, गेंद इरशाद जो विकेट कीपर था गेंद को ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाए, वाइड का इशारा अंपायर का। और वाइड के इस रन के साथ इस वक्त गेंदबाजी की शुरुआत कर चुके हैं यहाँ पर मुशफीक। एक रन मिला जरूर, हर रन इस वक्त कीमती दोनों टीमों के लिए। और एक रन नतृप्तिया ने एक्स्ट्रा के रूप में उनके खाते में जोड़ता हुआ 23 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। एक बार फिर से गेंदबाज मुशफीक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेल दिया जरूर है लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। अजमल जब तक गेंद पर पहुंचे पॉइंट पर 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। और इस बीच अशरफ सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। निश्चित रूप से अशरफ और आरिस इस वक्त एक साझेदारी निभाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करते हुए, खासकर बासित और शाकिर का विकेट गिर जाने के बाद कुछ हद तक दबाव क्रिएट हो चुका है इस वक्त टोरपेडोस्काना के बल्लेबाजों पर। और उस दबाव को हटाने की इस वक्त वो पूरी कोशिश करते हुए इस बीच मुशफीक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद अशरफ के लिए, गेंद को उछालना चालू करेंगे, दैट वाज प्रॉपरली गेंद पहुंची इस वक्त स्लिम डाउन पर, गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया। बेहतर गेंद थी इस वक्त, गेंद पर दमदार प्रहार करना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए। शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। वाइड के साथ हालांकि शुरुआत जरूर की थी गेंदबाज मुशफीक ने, लेकिन उसके बाद 2 बेहतर गेंदें इस वक्त तो फेंक चुके। अपने ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार दाहिने तो बर्दा विकेट। ये गेंद अशरफ के लिए, गेंद को उछाला इस वक्त और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो 2 गेंदें इस वक्त बेहतर फेंकने के बाद बल्लेबाज के पास पिछले गेंद पर डॉट गेंद खेलने के बाद दबाव क्रिएट हो चुका था, उस दबाव को पूरी तरह इस वक्त हटा चुके इस वक्त छक्के के साथ। और यहां पर देखिए एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट हिट केम फ्रॉम द बैट ऑफ अशरफ। दिस टाइम ही जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर। दिस इज अ मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। क्यों सतीश? Well, Gopi, what a stroke that one. Stand and deliver, just like I mentioned about, just transferring his weight onto the back foot, and he's almost targeting the straight version, one of the safest version to go for the big shot. Because in UCC cricket, Gopi, getting the distance in a long off region, it is not so easy. You need to have the big power and timing equal for to get the distance. It's an outstanding cricketing stroke there from Ashraf. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर बेहतरीन स्ट्रोक था अशरफ का। और ये छक्का जो अशरफ के बल्ले से लगते है काफी हद तक दबाव को कम कर चुका है टोरपेडोस्काना के ऊपर। एक बार फिर से तैयार रहा और देखिए यहाँ पर छक्का फिर से दिखाया जा रहा है, काफी दमदार स्ट्रोक था, काफी ऊंचा। अगली गेंद के लिए तैयार, ऑफ स्टंप से काफी बार स्ट्रेट अवे द बॉलर इज नाउ अंडर प्रेशर। बॉल 2 फॉर आउटसाइड द ऑफ स्टंप और 1 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ। 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं। और अशरफ इस वक्त 12 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 5 गेंदों का उन्होंने अब तक का सामना किया है। और इस बीच अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट मुशफीक। गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अशरफ के लिए ये गेंद गेंद को इस वक्त छोड़ दिया था। मिसजजमेंट, एब्सोल्युटली मिसजजमेंट। इस दुविधा में पड़ गए कि गेंद को खेला जाए या छोड़ा जाए। अंतिम क्षण में गेंद को छोड़ दिया कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन यहां पर गेंद को ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 31 रनों पर। बराबर का टक्कर इस वक्त जारी। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। दर्शक इस वक्त खामोशी के साथ मैच का आनंद लेते हुए एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम, दर्शकों से खचाखच मैदान जो कि इस वक्त भर चुका है। और इस बीच गेंदबाज अगली गेंद के लिए तैयार। यह गेंद इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ ऐसा कहना पड़ेगा, टोरपेडोस्काना आर नाउ स्ट्रांगली बैक इन द गेम। दिस इज एन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट स्ट्राइक, जस्ट इनसाइड आउट cricket he played, just he exposing the stumps a little bit at the last moment and played that one magnificently just over the extra cover fielder's head, and he finds the gap as well at deep extra cover fence for a boundary. Fantastic strike.
और इस चौके के साथ समीकरण बिल्कुल आसान हो चुका है। 35 रन बन चुके हैं, छक्का और चौका। इस वक्त अशरफ काफी आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए मुशफिक 13 रन पहले 5 गेंदों में प्रदान कर चुके हैं। मुशफिक कंसीडेड 13 रन इन द 5 डिलीवरीज। और इस बीच इस ओवर के अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अशरफ के लिए यह गेंद। इस वक्त अशरफ ने गेंद को उछाला इस वक्त मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 36 रनों पर। 14 रन केम फ्रॉम द लास्ट ओवर फ्रॉम मुशफिक। और इस ओवर की बदौलत ऐसा कहना पड़ेगा अब सतीश टॉर्पेडोज खाना इस मैच में वापस आ चुका है। इक्वेशन स्टैंड्स 24 रन्स टू गेट इन रिमेनिंग 18 डिलीवरीज एंड स्ट्रेट अवे द रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ कमिंग डाउन टू एग्जैक्टली 8 रन्स पर ओवर। अब कम बैक करना है तो यंग फ्रेंड्स को यहाँ पर एक बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर देनी होगी और अशरफ का विकेट यहाँ पर उखाड़ना होगा। Well, Gopi, it's all about the game plan, and they know exactly they're chasing a big total, and they have to pick one bowler. They have to target one bowler to get some acceleration, and they picked up the new face, Mushfiq is the one who is the new face in young friend Surwa, and that's why Gopi, their target which is made, which is 100%, he picked up a boundary and 6 in that particular over, and that really opened the gate here for the Torpedoes Khan. And just talking about this remaining 3 overs, Gopi, 8 runs per over, it's manageable because they're still batting to left here for Torpedoes Khan. Of course, Ashraf will going to be a key man here to get Torpedoes Khana into the back in the game. But Gopi, the match is not yet over. Meanwhile, I would request captains of Reliance Katipala as well as STC JEPPU, kindly request you to please report here for the tossing ceremony for the second semi-final. And Gopi, Arshad Bajal, this is going to be very crucial. It's a match decider over, and wait and see how Arshad Bajal will going to continue his success what he did in the first over, and at the same time wait and see how well this batter will going to handle this man. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर अरशद बजाल जिन्होंने अपना पहला ओवर बेहतरीन फेंका था और यहाँ पर अशरफ के सामने उन्हें गेंदबाजी इस वक्त करनी है। और अशरफ पिछले ओवर में छक्का और चौका लगाने के बाद काफी हद तक आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए। देखना है कि अरशद बजाल उन पर किस तरह अंकुश इस ओवर में लगा पाते हैं। बाएं हाथ राउंड द विकेट, पहली गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर संतोष पंटवाल जरूर मौजूद थे, लेकिन जब तक गेंद उनके हाथों में पहुंची बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना स्ट्राइक रोटेट कर चुके थे। अब ये दोनों बल्लेबाज जान चुके हैं यहाँ पर सेंसिबल क्रिकेट कुछ हद तक अपनानी है अशरफ और एरिस। और पहली गेंद पर अशरफ ने उसी तरीके का स्ट्रोक खेला जिस तरीके का स्ट्रोक उन्हें खेलना चाहिए था इन हालातों में। और इस बीच एरिस सामना करने के लिए तैयार। अरशद बजाल बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। एरिस के लिए यह गेंद इस वक्त हल्के से गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद लगभग थोड़ी सी उछाल लेती हुई शायद बल्लेबाज के कंधों पर टकराई थी। जी नहीं, इट्स ऑफ द बैट। शायद गेंद टॉप एज पर टकराने के बाद बल्लेबाज के सिर पर टकराने के बाद फॉरवर्ड शॉट लेग पर गए थे। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। व्हाट अ मैच, व्हाट अ फैंटास्टिक मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। 22 नीडेड फ्रॉम रिमेनिंग 16 डिलीवरीज। अशरफ बैक ऑन स्ट्राइक। और इस बीच गेंदबाज अरशद बजाल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गया। ओह बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेट लाइन। अशरफ ने गेंद को इस वक्त खेलना चाहा था स्क्वायर ऑफ द विकेट। अंतिम क्षण में गेंद के धीमेपन को समझ नहीं पाए, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला और अरशद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अशरफ के लिए यह गेंद। इस बार गेंद को छोड़ दिया उन्होंने। एब्सोल्युटली मिसजजमेंट, दिस इज एन एब्सोल्युटली मिसजजमेंट डिड बाय अशरफ इन दिस डिलीवरी। 2 लगातार डॉट गेंदे। अब ये गेंद देखिए पिछले गेंद के मुकाबले काफी तेज रफ्तार के साथ थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ, बट स्ट्रेट लाइन। और इस गेंद को छोड़ दिया था लेकिन गेंद को ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज अरशद बजाल इस ओवर में अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अशरफ के लिए यह गेंद। इस बार अशरफ ने गेंद को उछाला है, टॉप एज पर गेंद टकरा चुकी है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए इस बार कैच को लपकने में सफल। दूसरे प्रयत्न में इस कैच को लपकने में सफल रहे। हालांकि मैं कहता हूं द फील्डर वाज एब्सोल्युटली अंडर प्रेशर। इस वक्त जिस तरीके से वो दौड़ कर आए, जिस तरीके से वो डगमगा गए, उससे अंदाजा इस वक्त लगाया जा सकता है कि वो दबाव में थे। अगर इस कैच को अगर वो छोड़ते तो निश्चित रूप से उन्हें इस मैदान से बाहर भेज देते यंग फ्रेंड्स के कप्तान। तो क्योंकि अशरफ का विकेट है यहाँ पर। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर गेंद पहुंची थी डीप एक्स्ट्रा कवर पर। और इस कैच को पहले प्रयत्न में गेंद उनके हाथों से छूटी जरूर है, लेकिन दूसरे प्रयत्न में बड़ी मुश्किल के साथ इस कैच को उन्होंने लपका। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जैसे आम लपकते हैं उसी तरीके से इस वक्त इस कैच को दूसरे प्रयत्न में लपक चुके हैं। लेकिन अशरफ का विकेट यहाँ पर गिर चुका है और निश्चित रूप से सतीश ऐसा कहना पड़ेगा अशरफ का विकेट का पतन इस वक्त एक बिग बूस्ट यहाँ पर कहलाएगा यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए।
Absolutely, Gopi. Once again, the man from the golden hand and doing the job here for young friends, isn't it? The way that he's handling the pressure. Whenever you see Gopi, the match almost turned the previous over into Torpedoes Khana. The bringing that momentum once again to the side of young friends, Gopi. Once again, Arshad Bajal leading from the pen. Of course, job is not yet over. And Ashraf's wicket is back in the pile. One ball is remaining here. And a new batter coming to the middle, Gopi. The danger man, Sinan, the match finisher. बिल्कुल सतीश, नए बल्लेबाज इस वक्त सिनान, एक और डेंजर बल्लेबाज टॉर्पेडोज खाना की ओर से इस वक्त मौजूद। अरशद बजाल बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में बाएं हाथ राउंड द विकेट, इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंद इस बार ड्राइव किया बैक टू द बॉल की दिशा में, रन नहीं मिलेगा। फैंटास्टिक ओवर, जस्ट 2 रन्स केम फ्रॉम दिस ओवर फ्रॉम अरशद बजाल, और ये ओवर ऐसा कहना पड़ेगा निश्चित रूप से यंग फ्रेंड्स इस मैच में वापस ला चुका है। क्यों सतीश? Why not, Gopi? Absolutely. We will see that the way that he bowled this over. Just I want to see his bowling figure. 2 overs, no maiden, 5 runs and picked up 3 valuable wickets, Gopi. That's what I am talking about, 2 wickets. That's why he's a complete cricketer, isn't it? He's a full package and whatever you say, he's a good full package here. From the ball, from the bat and even in the fielding. But Gopi, just like I mentioned about the match which is not yet over and still they have to get 22 runs from 12 balls. Asking run rate, of course, gone from 8 to 11. This is what the beauty of cricket. 1 good over and 1 big shot. The both things which is going to happen, that will going to change the entire complexion of the game. And 1 hour which is gone into the hands of Torpedoes Khana and 1 hour which is going in favor of young friends Urva. This is what the big department of the cricket, the bowling and the batting. And 1 big over, Gopi, which is came Torpedoes Khana back in the game, and 1 good over once again takes young friends Urva back into the track. बिल्कुल सतीश, एक बेहतर ओवर अगर जिसमें 12 से 15 रन अगर टॉर्पेडोज खाना के बल्लेबाज बटोरते हैं तो टॉर्पेडोज खाना इस मैच में वापस आ सकता है। और एक बेहतर ओवर जिसमें गेंदबाज किफायती गेंदबाजी करते हैं, 3-4 रन प्रदान करते हैं, चंद विकेट उखाड़ते हैं, तो यंग फ्रेंड्स का पलड़ा यहां पर भारी हो जाएगा। फिलहाल दोनों टीमों के लिए ये ओवर काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट। और इस बीच लंबे कद के खिलाड़ी रिफान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, पहली गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर, फील्डर मौजूद संतोष बंटवाल, वहां पर एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, लेग बाय का इशारा, और एक रन लेग बाय के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर, 39 for the loss of 3 wickets, still 21 to get from remaining 11 balls and the match is now still equally balanced. इस वक्त सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज एरिस और माफ कीजिए सिनान, और इस बीच फील्डिंग का मुआयना करते हुए और गेंदबाज रिफान इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार और गेंद सीमा रेखा से बाहर, इट्स अ बिगी, और इस बिगी के साथ टॉर्पेडोज खाना are now once again back in the game. Well, Gopi, this man have to get a send up. This is a send up stroke. While he was going to the broad, and before that he wanted to give some gift for his team, and what a shot that one, Gopi Sinan absolutely knows that exactly. This over his team is needed 1 big shot, and this is not an easy stroke to play in the books. Absolutely fantastic stroke, and that 6 once again brought team Torpedoes Khana back in the game now. Balls remaining 10 and runs required 15. What a game, Gopi, what a game. बिल्कुल सतीश, कभी खेल इधर तो कभी उधर, और देखना है कि अंतिम मैच अंतिम गेंद के बाद किसके पक्ष में यह मैच जाता है। तो इस बीच रिफान इस वक्त छक्का प्रदान करने के बाद देखते हैं यहाँ पर अगली गेंद पर किस तरीके से कम बैक करते हैं। फिलहाल इस वक्त सामना करते हुए सिनन, और इस बीच रिफान की ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ना चाहे, गेंद पहुंची बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, गेंद वहां पर फील्डर पहुंचते, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, क्लीन पिकअप, बेहतर थ्रो इस वक्त, और सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में इस वक्त जुड़ता हुआ। 46 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। नाउ 9 balls remaining, 14 runs required, एक चौका या छक्का टॉर्पेडोज खाना को इस मैच में वापस ला सकता है, और चंद डॉट गेंदे निश्चित रूप से यंग फ्रेंड्स को इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने पर और सहकारी बना सकते हैं। और इस बीच गेंदबाज रिफान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, इस वक्त आरिस सामना करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस वक्त रिफान की गेंद को इस वक्त उछाला मिड विकेट पर, इनटू द गैप एज वेल, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा दे आर स्ट्रांगली बैक इन द गेम। नाउ द इक्वेशन स्टैंड्स, और इक्वेशन जो भी हो, इससे पहले स्ट्रोक को इस वक्त देखते हैं, देखिए किस तरह से गेंद को पिक किया था, ऑफ द टोज, ही हिट दैट वन फैंटास्टिकली एंड ही जस्ट गॉट दैट वन फॉर अ मैक्सिमम एट डीप मिड विकेट। दिस इज एन एब्सोल्यूट आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक।
8 balls 8 runs required. सिनन का छक्का और उसके बाद एरिस का छक्का, और ये दोनों छक्के यंग फ्रेंड्स यहाँ पर टॉर्पेडोस काना को पूरी तरह इस मैच में वापस ला चुके हैं। और इस बीच देखिए एक बार फिर से इस छक्के को दिखाया जा रहा है, खूबसूरती के साथ गेंद को उठा रहा है, एक्सक्विजिट टाइमिंग्स के साथ डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए एरिस ने। और 8 गेंदे 8 रन, 2 छक्के इस ओवर में रिफॉन दे चुके हैं। और इस बीच देखना है कि अगली गेंद पर अब वो क्या करते हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाह, गेंद पहुंची इस वक्त फॉरवर्ड शॉट लेग पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। अब नो नीड टू पैनिक एट ऑल, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। 7 गेंदे 7 रन है, अगर हर गेंद पर सिंगल्स भी बनाते हैं तो यहां पर लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यहां पर कम बैक करना है यंग फ्रेंड्स हुआ के गेंदबाजों को। तो इस वक्त उन्हें लगातार डॉट गेंदे या फिर फेंकने होंगे या फिर विकेट उखाड़ने होंगे। और इस बीच इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज इस वक्त तैयार था, नॉट राउंड द विकेट। स्ट्रेट अवे द बॉलर इज नॉट अंडर प्रेशर, और बेहतर कलेक्शन, व्हाट अ फैंटास्टिक कलेक्शन टेक बाय द विकेट कीपर इरशाद, जस्ट ड्राइविंग टुवर्ड्स टू हिज राइट साइड टू ग्रैब द बॉल विद वन हैंड। और वरना निश्चित रूप से एक और रन शायद ज्यादा मिल सकता था। तो वाइड यहां पर जुड़ चुका है, 54 ऑन द बोर्ड, दैट मींस 6 रिक्वायर्ड फ्रॉम रिमेनिंग 7 balls. The things getting much easier now for Torpedoes Kana. Rifan दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया है, गेंद मिड विकेट पर बदल फील्डिंग ड्रॉप हो जाए इस वक्त, लेकिन थ्रो इस वक्त निशाना चूक चुका और 1 रन बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोर बदल चुके हैं। 55 now 17 runs came from the last over सतीश from Rifan। और ऐसा कहना पड़ेगा इस ओवर की बदौलत पहली बार इस मैच में टॉर्पेडोस काना का पलड़ा तख्ता यहाँ पर भारी लगता हुआ। Exactly, Gopi. The plan which is made by the captain of the side, bringing Rifan from the far end, from planet air end, Gopi, usually is very economical when coming from this end. So, but there is no choice because the previous over is very expensive. So that he just wanted to restrict the runs. But what these two batteries did is picking up 2 massive sixes, one from Sinan and one from Aris. And altogether, Gopi, the jam-packed stadium out here enjoying this big semi-final, and more than that, those of viewers have already crossed 5K, and this is what the popularity of one-run cricket is all about. बिल्कुल सतीश, जाम पैक स्टेडियम जैसा कि मैंने और आपने कई बार इससे पहले फरमा चुके हैं, और निश्चित रूप से ये जनप्रियता दिखाता है अंडरआर्म क्रिकेट का इस मंगलूर, खासकर इस यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान पर। और यहाँ पर तख्ता भारी लगता हुआ टॉर्पेडोस काना का कमबैक करना है, तो जो संतोष बंटवाल इस अंतिम ओवर को शुरू करने जा रहे हैं, इस ओवर में उन्हें निश्चित रूप से चमत्कारी गेंदबाजी, मैजिकल बॉलिंग इस वक्त करनी होगी अगर यंग फ्रेंड्स उर्वा को कमबैक करना है। तो पहले गेंद इस वक्त तैयार है, इस बार ऑफ स्टंप आती हुई डॉट गेंद, इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाहा और इस बार अंपायर ने इशारा किया कि देयर एग्जिस्ट देयर टाइम लिमिट। तो बेहतर गेंद थी इस वक्त, कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चुके 1 या 2 लगातार डॉट गेंदे और संतोष बंटवाल फेंकते तो शायद यहां पर कुछ बात बन सकती है यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार सिनन इस वक्त सामना करते हुए लगभग 5 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद, और संतोष बंटवाल दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर टॉप है, जिस वक्त फील्डर कोई वहां पर मौजूद नहीं है, पहुंचे लेकिन नहीं पहुंचे, मिस फील्ड इस वक्त, और 2 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके, 3 रन के लिए दौड़ पड़े और 3 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल। ऐसा कहना पड़ेगा हाफ माइंडेडली फील्डर इस वक्त दौड़ कर आए थे डीपी मिड विकेट, कोई खास दिलचस्पी उन्होंने नहीं दिखाई, शायद वहां पर 1 ही रन मिल सकता था, लेकिन न सिर्फ उन्होंने गेंद को छोड़ा बल्कि 2 ज्यादा रन प्रदान करने में सफल। अब सिर्फ 2 रन चाहिए, जस्ट टू गेट फॉर विक्ट्री, और टॉर्पेडोस काना ऐसा कहना पड़ेगा विजय के द्वार पर आकर रुक चुका है। 4 balls 2 runs टू विन। और इस बीच संतोष बंटवाल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए हैरिस इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और डॉट गेंद इस वक्त जरूर चाहिए संतोष बंटवाल को। और इस बीच ये गेंद फ्लाइटेड गेंद पैरों पर गेंद टकराई, लेकिन कुछ हद तक कहना पड़ेगा ऑफ सबसे बाहर की ओर निकलती हुई, और इस बीच लेग बाय का इशारा, और इस 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। नाउ जस्ट 1 रिक्वायर्ड फ्रॉम 3 डिलीवरीज, और सिनन इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक, और देखना है कि सिनन उनके लिए विजय का रन लगाते हैं या नहीं। और संतोष बंटवाल इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और फील्डिंग में कुछ हद तक जब आउट करने के बाद 3 डॉट गेंदों की जरूरत अगर मैच को टाई करना है तो यंग फ्रेंड्स उर्वा को। और इस बीच संतोष बंटवाल दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती विकेट को झलक टॉप है, जिस वक्त फील्डर गेंद तक पहुंच नहीं पाए, और इसी के साथ Torpedoes Kana register a thrilling victory by 7 wickets with just 2 balls to spare against young friends in the high voltage match, and with that victory they are through to the grand finale of this competition. So what a fantastic match came to an end. Kyo Satish?
Well deserved victory, Gopi. Everyone thought it when the 60 is a target for the team Torpedoes Ghana. It looks like the difficult task in front of Torpedoes Ghana. But already I mentioned, Gopi, that when we are. And Gopi, absolutely what we are talking about, the victory for Torpedoes Ghana, well deserved. And the way that they are chasing this total is not so easy. And at last, they deserve the victory. Congratulations for Torpedoes Ghana for their outstanding batting display in this big semi-final. So, well, the man who is going abroad and definitely who is given a special gift for the Torpedoes Ghana by one more match-winning innings here from the batter. Sinan, and along with him, I need to appreciate Harris as well. The way that both the batters are really built that partnership has been outstanding. Excellent batting performance, excellent batting display. Of course, winning and losing is a part of cricket, but both the teams they played a lovely game here in front of huge spectators. And young Fansura, unfortunately, they lost the match in the semi-final. So now it's the time to announce the man of the match of the big semi-final. And man of the match which goes to man who really changed the game when the batters are struggling in the middle. Ashraf of team Torpedoes Ghana is judged as the man of the match. So that I request Ashraf of Torpedoes Ghana, kindly request you to receive the man of the match award for his excellent knock of 18 runs. One who really changed the gear and takes the team into the victory. Congratulations.
Welcome back. Good afternoon, cricket lovers. And we are coming to the semi-final number 2 of the prestigious GAURAV Trophy 2025. And toss which is on by the captain of Planet Air SDC, and elected to ball first, so that we are watching the opening batters of team Reliance Katipalla are in the middle, and successful opening pair in the middle with the jersey number 18 Arafat is a striker, and with the jersey number 33 the left-hand batter Azhar, I think so, he is one more opening batter for the side. Azhar is a non-striker, and just want to see that how many overs? 6 overs. 6 overs told by the umpire. So 6 over side to be played, because no change in that format, because all the matches which is played in the 6 overs in that local pool, so that just want to change the format here, just want to continue that format in the semi-final as well. So 6 overs game, and please note both the teams and opening batters already they are making their way to the middle of the pitch. Umpires, umpire Sriraj and umpire at square leg. We are just waiting for the umpire of the square leg and Roland Pinto just walking towards the middle with the ball, and we're going to start the semi-final number 2. And what a day for cricket, and what the spectators are waited for the moment for these two teams clash, Torpedoes Khana and Young Friends Urva. And absolutely that was a Faisa Vasool match they are witnessed in the big semi-final. Outstanding battle in the semi-final between two very good teams, Young Friends Urva and Torpedoes Khana. And now we are going to witness one more big match here. Two very good teams. They got a very good journey in their first round quarter-final, pre-quarter-final and quarter-final match. And both the teams are deserve the place in the semi-final. And wait and see. Torpedoes Khana, the team is already entered into the Vega final. And wait and see from the local pool group which team will going to get the place in the mega final. The battle will going to start here for that place, and the signal came from umpire, and Deepak, our scorer, receives the signal, and everything is ready for the first over. Shahnawaz, as always, the bowler, opening bowler for STC. First ball, just wanted to drive the ball. He got a leading edge of the bat, and before the fielder will going to run across to his right to field the ball, ample time for batter to complete the single. So first run for the team Reliance Katipalla. The team has won the title ZBB trophy in last 2 weeks back with that excellent performance, and they are now once again looking for their consecutive second attempt for the final. Here comes Shahnawaz. The ball's far outside and off time wicketkeeper misses it. It's going to be a bonus run here for Reliance Katipalla. They got a couple of runs in the form of wide, and with that score moves on to 3 on the board without loss of any wicket. So that brings Arafat, one more very good striker of the ball, won the heart of all cricket lovers with this batting display. This time appeal is gone, Flum in front of wicket, playing across the line. Definitely it's a wrong shot selection here from Arafat. The ball was targeting the middle stump, and Yorker line delivery. Then Arafat just wanted to go for across the line. While you're trying for the across the line, you have to connect the ball. If you miss the ball, and the ball that we're going to hit you, your leg in front of some. Just have a look at the replay. Absolutely flump. No doubt at all. No doubt at all. And even Arafat knows that once he missed the ball, he disappointed. And have a look at umpire Sriraj raising his finger, saying that you are out. So big blow here for the team Reliance Katipalla. They lost Arafat, one who scored plenty of runs from the bat with this extraordinary batting display in the previous 2-3 matches, and he's back in the pavilion. It's 3 for 1. New batter in his captain of the side. The very successful captain Cool Zunaid is coming to the middle here in a very good position of number 3, batting position of number 3. Shahnawaz, successful bowler.
Right above the wicket, rise out of one of his scoring zone. He's so good in that particular shot. You can't get better than this when you're seeing that extra cover drive from this man. He loves to play that area. Every time, if you see that, he's just making room to play the shot. One of his the scoring zone, that cover and extra cover, got a plenty of runs from that area. Scoreboard now moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket. Shahnawaz. Azhar plays it quite just wide of the field, going for a quick single. Excellent running with the wicket, and with that single, scoreboard now moves on to 5 for 1. And the first is in progress, and the team Lance Katipalla. They got a history of 40 plus years as their organization formed. Again, what we are talking about, Zunaid is unstoppable in that area. When the ball is the middle and off stump, is so good to getting the position, getting his front foot into the line of the delivery with the full left face of the bat, with the high elbow, getting that single very easily. 6 for the loss of 1 wicket in the over number first stage in progress. Shahnawaz. Bounce this time off the toes, played it down to flicks it down to deep mid wicket region for a single. 7 runs came from this over and 1 wicket as well. Both the teams has got a start here, and it's a 7 for 1 after completion of first over. You are watching the semi-final number 2 of the prestigious GAURAV Trophy 2025, which is proudly presented by JEPPU friends in the sweet and loving memory of late GAURAV Bolar. Talking about more cricketing actions over the friends, Janasheva Sangha, Nornadka organizing SFC Trophy 2025, and that tournament will go into organize in coming 14th December 2025, SFC Trophy 2025, and we are wishing all the best for this cricket tournament and all the best for all the participating team. Here comes the first ball, sir, lofted, and ball is going. Oh, what a catch! What a catch! One of the catch of the tournament, but the umpire just wanted to clarify, but I think this is an outstanding catch. Nawaz Belal, remember the name here. Just have a look at the stroke time, Azhar. Lofted, ball is going and going. Looks like he's got the distance. Oh, have a look at the field where he was landing. Absolutely good bad body balance here from the fielder in the deep long. And now umpire is given out, so he's back in the pavilion. What a fantastic catch. It's been a fantastic, one of the best catch of the tournament, because way that is maintaining in body balance. Of course, he's got a jump. He's got the ball in his left hand. And have a look at how well he concentrated over that boundary line. This has been outstanding work done by the fielder at deep long on. And well. The catches win the matches, which is the greatest slogan in cricket. And what we are seeing is Nawaz Belal, the fielder, done an absolutely fantastic job. Well, just have a look at. Still is inches to go, and well inside the boundary line. The great take there from young man. What an excellent take. Just have a look at again and again in the replay, where he is maintaining his body balance. Well. Absolutely fantastic. Here comes next ball. Oh, change of phase. This is what we know this knowing for. It looks like it's a simple bowler with the action, but he can surprise with this slow leg cutters. Absolutely fantastic. The batters have to wait for a long time to get the ball. And this time he's looking for experiment, a quicker one. Sometime he bowls quicker one delivery, but sometime he misses the line as well. Afnan, the one more very quality batter for the side of team Reliance Katipalla, came into bat. 8 for 2. Oh, beautiful delivery. There is some excitement behind the stumps as well as the closing fielder, but nothing has happened. Ball misses everything. Beaten by the one more fantastic leg cutter.
Sometimes it's unplayable, isn't it? Just have a look at the replay, the way that he's getting that cutter deliveries. Well, looks like a very simple delivery, but have a look at the ball. All ball just misses the stump by Visca. What a delivery. Absolutely perfect one there from the bowler Vinod Pollard. Its score remains on 8 for 2. Vinod bowls. Once again, big leg cutter, but missing the line. The leg cutter which is missing the line. All the efforts are gone in vain. That two dot deliveries and 2 wide deliveries. So that scoreboard now moves on to 9 for 2. Vinod, sometime he couldn't manage to control this leg cutters, getting some extra deviation. Is trying for Afnan. Swings and missed. Is really struggling as bowling which is from Vinod Pollard. Sometime happening, isn't it? When stroke maker he loves to see that ball is coming into the bat very quickly. But once the ball is coming very slowly, the batter has got no patience to wait for the ball. That's all happening in sometime. It's again driven. This sort of delivery which is bowled off cutter, and they're looking for the second, and in comes a throw. Both the batters have completed a couple of runs before the captain Nisho will go in to collect the ball down at deep long on. Slight a bit of fumble, and they caught a couple of runs. So double figure straight away now for Team Reliance Katipalla. Just have a look at the field there from Nishu, the captain of the side. Not a clean collection. So batter taking advantage of that one. Again, disappointment. Third wide of this over, isn't it? All the efforts are what we are seeing in this particular over as 3 wide and 3 bonus run. Vinod Pollard just trying for the line for this Afnan as he little bit struggled with this particular over. Oh, lovely delivery. Again, one more dot ball here. Fantastic over, excluding that 2 wides. It's a great over from Vinod Pollard. So after completion of over number 2, it's 12 for 2. Reliance Katipalla. So I'm just watching the captain Zunaid. Zunaid was really upsetted with this over after watching in the other end. He's not happy with his partner. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು, ಜಾಗ ಉಂಟು, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯರ್ ಕೋಪರೇಷನ್. Big thanks to Swastik who is sitting in there. Thank you very much, and very difficult to recognize from the commentary box end, and we need to have a binocular to get the exact face. And again played it nicely in the mid wicket. They want to come back for a second. In comes the throw. Oh my goodness! Oh, he's searching for the ball. My goodness! Well. One stump is broken. Still they got opportunity to broke another stump. Need to broke the stumps. That's what they needed. But what happening here is that I think Santosh is fails to collect the throw. Just have a look at the throw from Vinod. Santosh collected. He broken the stump, but still he's searching for the ball. Again. Oh my goodness! And Santosh almost searching for the ball, but ball misses his hand. Anyhow, it's 14 for 2. Lovely leg cutter. This is what the speciality of this man. The jersey number 10 always loves to do in the field with their leg cutter. No one can bowl better than this. Again, right up over the wicket. Full toss. Misjudgment. Wicket keeper not up to the mark. By call by umpire. Frustration again. What could be a dot delivery? The wicket keeper fails to collect the ball. And it's 15 for 2. This time, swings it hard in the mid-wicket region, and Vinod Pollard won't get that one. This is what the batsman is frustrated in the previous over. And Afnan break the shackles here with that across cricketing stroke. Fantastically picked that leg cutter, shuffled across a little bit. That swings it away. Placement is so good in that occasion.
There's a mid wicket, but it's not a mid wicket in orthodox. Huge gap in mid wicket and square leg. Off cutter this time, misjudgment. The batter almost got a position to swing that ball. Very lucky indeed. Ball is not that much of short enough for the batter to get the ball. Dot deliveries. One more beautiful leg cutter. Going to miss the leg off stump clearly. Leg by call by umpire because of the turn of the ball. Umpire will go into judge the ball going to miss the stump. So one more over completed. 3 overs completed. 3 overs complete after completion of over number 3. It's 20 on the board, and of course Sinan in our monitor screen, and Sinan who played a wonderful innings in the previous match, and of course good news as well for him as he is starting his new journey, and all the best for your good new work for you, what he was going for into abroad. So all the best Sinan on behalf of all cricket lovers, on behalf of all officials, wishing you all the best for your future, as well as have a more cricket in Gulf country as well, and try to win the heart of all cricket lovers in Gulf country as well. So this is what Sinan for you is absolutely very what you call the silent killer. And 3 overs completed, Gopi, and completion of over number 3. It's 20 for 2, and before the next over going to start, I think it's a good start, and 20 is not a bad runs here for the team. Reliance Katipala, and remaining 3 overs, Gopi, definitely is going to be very interesting how well Reliance Katipala will get the acceleration in the run rate. At the same time, the team SDC, they have to get some 3 good overs here to restrict them under 40. बिल्कुल सतीश, 3 ओवर में बेहतर शुरुआत इस वक्त दे चुके हैं रिलायंस काटीपल्ला के बल्लेबाज। हालांकि 2 विकेटें उन्होंने जरूर खोए हैं, और इस बीच चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर नवाज लेफ्टी की गेंद थी, इस वक्त बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी दिस टाइम, बड़ी मुश्किल के साथ गेंद को रोका, 2 कदम आगे भी जरूर बढ़ाए अफनान ने, लेकिन इन मौके पर अपने कदमों को रोक लिया। देखा कि गेंद वहीं पर गिर चुकी है, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बेहतर गेंद के साथ नवाज लेफ्टी इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार अंदर की ओर आती हुई हल्के से गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची है, और इस बीच अंपायर बातचीत करने के लिए स्क्वायर लेग अंपायर की ओर बढ़ते हुए, शायद उन्होंने यहाँ पर स्ट्रोक्स ऑफर किया था या नहीं इस गेंद पर, यह देखने वाली बात है। और जहाँ तक सवाल है, दोनों अंपायर इस वक्त बातचीत करते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर 1 गेंद इस वक्त समाप्त हो चुका है। और जहां तक सवाल है, 2 विकेटें खोने के बावजूद एक बेहतर शुरुआत रिलायंस काटीपल्ला के बल्लेबाज दे चुके हैं, और देखना है कि इन बचे हुए 2.5 ओवर में और कितने रन वो यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इस बीच 1 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर, 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 3.2 ओवर्स कंप्लीटेड। नवाज लेफ्टी अगली गेंद लेकर तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑफ कटर गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर गेंद पहुंचे, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, वहां पर थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले के थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर, 22 for the loss of 2 wickets। और इस बीच नवाज अगली गेंद, ये गेंद क्विकर, एब्सोल्युटली क्विकर, गेंद पोजीशन टर्बल पर रन के लिए दौड़ पड़े, इस बीच 1 रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, पिछले गेंद के मुकाबले काफी तेज गेंद फेंकी थी, अंदर की ओर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूंकि 1 रन लेग पाई के रूप में उनके खाते में जोड़ता हुआ जुनैद और अफनान जो कि क्रीज पर मौजूद हैं, इस वक्त पारी को संभालने की कोशिश में, इस वक्त एक बेहतर साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश करते हुए नवाज 4 बेहतर गेंद इस ओवर में फेंक चुके अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त यार बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार ड्राइव किया, बैक टू द बॉलर की दिशा में काफी आगे निकल आए थे इस वक्त अफनान, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए। देखा कि फॉलो थ्रू में गेंद को दूसरे प्रयत्न में गेंदबाज नवाज लेफ्ट इस वक्त फील्ड कर चुके हैं, और बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, अंदर की ओर आए थे, ठीक तरह से जगह नहीं इस वक्त बना पाए जुनैद। अगली गेंद इस बार गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑन पर, और गेंद ब्रिलियंट, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग सेव मेड बाय द लॉन्ग ऑन फील्डर, और इस बीच बल्लेबाज दूसरे रन के लिए यहाँ पर दौड़ पड़े, 2 रन पूर्ण कर चुके हैं। दैट वाज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सेव बाय निशु, जो कि स्वयं कप्तान है एसडीसी के, यहां पर लंबे कद के खिलाड़ी और अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए जिस तरीके से उन्होंने गेंद को सीमा रेखा के अंदर की ओर ढकेला, काबिल तारीफ है।
सटन सिक्स, निश्चित रूप से ये छक्का हो सकता था और इस छक्के को इस वक्त बचाते हुए बेहतरीन फील्डिंग के जरिए गेंद फील्डर नीशू, देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद को अंदर की ओर ढकेला गया था. दैट वाज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सेव मेड बाय नीशू एट लंगोन एरिया. मॉनिटर पर बार बार इस वक्त दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से गेंद को इस वक्त रोका गया था बेहतरीन तरीके से लंबे कद के खिलाड़ी नीशू द्वारा. देखिए यहाँ पर एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली जस्ट पुश्ड इनसाइड द फेंस. और यहाँ पर देखना है कि जब वृक्ष के कोई डाल टकराया था यहाँ पर, जब गेंद नीशू के हाथों में पहुंची थी, इससे पहले ये देखने वाली बात है और तीसरे अंपायर इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए. और ये भी देखने वाली बात यह है कि नीशू का शरीर का अंग कोई सीमा रेखा को टकराया था नहीं, जब वो गेंद को सीमा रेखा की ओर सीमा रेखा के अंदर ढकेल रहे थे. और तीसरे अंपायर जो कि इसका परिशीलन करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है. सेमीफाइनल मैच नंबर 2 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट गौरव ट्रॉफी 2025, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है जप्पू फ्रेंड्स जप्पू मैंगलोर में. एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए और लगभग दर्शकों से मैदान अभी भी भर चुका है. हालांकि पहला मैच एक हाई वोल्टेज मैच है, समाप्त हो चुका है टोरपेडोस्काना और यंग फ्रेंड्स के बीच, जिसमें टोरपेडोस्काना ने एक रोमांचक विजय दर्ज की. सिर्फ 2 गेंदें बाकी रखते हुए लक्ष्य तक 60 रनों के लक्ष्य तक वो पहुंचे, यानी 6.4 ओवर में जो यंग फ्रेंड्स उर्वा ने तय किया था वो 60 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 2 गेंदें बाकी रखते हुए 6.4 ओवर में 3 विकेटों को खोने के बाद पहुंचने में सफल. टोरपेडोस्काना और उस विजय के साथ इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में जो कि वो प्रवेश प्राप्त कर चुका है. और देखना है कि दूसरे फाइनलिस्ट के रूप में कौन सी टीम यहाँ पर इस ग्रैंड फिनाले के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करती है, एसटीसी जेप्पू या फिर रिलायंस काटीपल्ला. इट्स परफेक्टली सेव्ड, जस्ट अ कपल रन एडेड टू द टोटल. और बेहतरीन सेव इस वक्त करते हुए नीशू, जो कि कप्तान है एसटीसी के अपने टीम के लिए, और 4 बहुमूल्य रन बचाते हुए 25 रन 4 ओवर की समाप्ति. 4 ओवर्स कंप्लीट है, 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और उनके अनुभवी गेंदबाज संतोष जप्पू जो कि इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार सामना करते हुए इस वक्त बल्लेबाज अफनान, जो कि एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए 7 रनों के व्यक्तिगत पारी पर 7 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हैं. उनका अच्छा साथ निभाते हुए जुनैद, जो कि वो भी 7 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त क्रीज पर मौजूद. और जहां तक सवाल है इस वक्त जुनैद इस वक्त प्लेयर्स डगआउट की ओर प्रस्थान करते हुए, शायद वहां पर कुछ तो जरूर हुआ है, कुछ बातचीत इस वक्त जारी है. और देखते हैं असल में वहां पर क्या हुआ है.
ಅಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟಗಾರರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬಾರ್ದು. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಪಂದ್ಯಾಟ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎಸ್, ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಂಡದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮಗೆ 3 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ 3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಪರೇಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಮ್ಯಾಚ್. Decision will going to remains the same here. The couple of runs which is added to total. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಾಳ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು.
ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟ್ವೆಂಟಿ 25. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So once again the match is now going to restart. मैं रिक्वेस्ट निवेदन करता हूँ दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं. प्लीज कंटिन्यू द मैच as soon as possible. Right, the match is now once again going to restart. The situation stands, it's 25 for the loss of 2 wickets for Reliance Katipalla at batted first against STC JEPPU, and the batsman dismissed
और Arafat and Azhar. Meantime, the Junaid and Afnan are the crease, and slowly and steadily the third wicket partnership is now building up here between Junaid and Afnan. Now Santosh गेंदबाजी 4 overs completed, 25 for the loss of 2 wickets, and the fifth over start. Santosh, the experienced campaigner of the side, is now going to start the second over. दूसरा ओवर शुरू होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त संतोष तैयार, अफनान सामना करते हुए, जुनैद नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद, और पांचवा ओवर, फिफ्थ ओवर ऑफ द इनिंग्स इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट। और इस बीच संतोष फील्डिंग में सजावट इस वक्त हो चुकी है, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज संतोष तैयार। ये गेंद पैरों पर टकराई, ऑफ कटर गेंद थी, और गेंद को जब तक पॉइंट पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर, 26 फॉर लूजिंग बोथ ओपनर्स एट द स्टार्ट ऑफ द फिफ्थ ओवर फॉर रिलायंस काडीपल्ला। और संतोष अगली गेंद लेकर तैयार जुनैद के लिए। ये गेंद फ्लाइटेड, बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, स्लो वन, चांस ऑफ रन आउट, लेकिन निशाना इस वक्त चूकता हुआ नवाज लेफ्टी का थ्रो स्टंप से काफी दूरी पर निकलता हुआ। और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है, स्कोर बढ़कर पहुंच चुके हैं 1 रन के साथ 27 रनों पर, 27। संतोष अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों बढ़ता विकेट, फैंटास्टिक डिलीवरी, दिस इज अ परफेक्ट ऑफ कटर, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई अफनान ने गेंद को उछालना चाहा, चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में संतोष जप्पू फेंक चुके हैं। अगली गेंद, ओह दिस टाइम ही लॉस्ट हिज स्टंप, एब्सोल्युटली परफेक्ट ऑफ कटर डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर संतोष, एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। और ऐसा कहना पड़ेगा, गेंद पर आक्रामक प्रहार करना चाहते थे अफमान, और इस बार गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी ज्यादा टर्न लेते हुए इस वक्त अंदर की ओर आए, और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, गेंद स्टंप्स को टकराने के बाद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंचे, और इसी के साथ अफनान का विकेट गिर चुका है। अफनान की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है, और तीसरा विकेट इस वक्त गिर चुका है। 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, एंड फैंटास्टिक डिलीवरी बॉल बाय संतोष टू डिसमिस अफनान, and third wicket loss for Reliance Kadipalla. It's 27 for 3. Number 5 batsman is now comes out to the middle. Number 5 बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ, और संतोष 4 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं, अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। सिर्फ 2 रन अब तक इस ओवर में संतोष प्रदान कर चुके हैं। और गेंदबाज अगली गेंद, ये गेंद, oh lost it, this time I think it could be taken inside the fence, just we have to wait and see, and taken inside the fence by the fielder नीशो, जिन्होंने पिछले ओवर में एक बेहतरीन सेव किया था, छक्के को रोका था, और यहाँ पर एक बेहतरीन जजमेंट के साथ वाइड स्लॉन्ग ऑन और डीप विकेट के दरमियान इस कैच को लपकने में सफल। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, गेंद को उछाला था, दमदार स्ट्रोक था, लेकिन स्ट्रोक्स में इतना लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं है। और देखिए यहाँ पर बेहतर तरीके से इस कैच को, जजमेंट के साथ इस कैच को फील्डर ने लपका वाइड स्लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर। तो संतोष का बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जारी इस ओवर में, और एक और विकेट गिर चुका है। तौफीक द मैन डिसमिस्ड फॉर अ गोल्डन डक इन हिज वेरी फर्स्ट बॉल, एंड नाउ इट्स 27 for 4. So last ball left in this over. Fantastic bowling performance continuing here from Santosh. Ugly गेंद, let's, oh this is an outstanding piece of work made by wicketkeeper behind the stumps. वाइड का इशारा जरूर हो चुका है, गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई ऑन साइड पर गेंद को फ्लिक करना चाहता, 2 कदम आगे निकला है क्रीज से, और गेंद जैसे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, इन फ्रैक्शन सेकंड गेंद से विकेट को उखाड़ दिया इस वक्त विकेट कीपर ने, और एक बेहतरीन स्टंपिंग इस वक्त विकेट कीपर करते हुए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्रिलियंट स्टंपिंग, one more wicket loss for Reliance Kadipalla. Suddenly they lost the momentum now. At one stage they were 25 for 2, and when the game restarted they lost their 3 vital wickets for adding just 3 runs on the board. That means now they are 28 for 5. और जहां तक सवाल है, इस ओवर में एक गेंद अभी भी बाकी है, और इस बीच नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, और संतोष एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में जारी रखते हुए इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ना चाहता, बेहतर गेंद थी, बेहतर ओवर के समाप्ति, फैंटास्टिक ओवर केम फ्रॉम संतोष, अपने संपूर्ण अनुभव का अनावरण इस ओवर में वो करते हुए, और इस ओवर के बदौलत इस वक्त काफी हद तक कहना पड़ेगा सीसी जप्पू इस मैच में वापस आ चुका है। 5 overs completed, 28 on the board for losing 5 wickets, and now just last over remaining in their innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी, और यहाँ पर देखते इस बचे हुए अंतिम ओवर में
रिलायंस काटीपल्ला के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। दूसरा सेमीफाइनल मैच, second semi-final match of this prestigious cricket tournament, Gaurav Trophy 2025 is now progressing here, which is proudly presented by JEPPU friends, JEPPU Mangalore, winners of this so in fact Santosh got a hat-trick in the last 3 successive deliveries, और जहाँ तक सवाल है 3 लगातार गेंद में 3 विकेट संतोष प्राप्त करने के बाद हैट्रिक इस वक्त परिपूर्ण वो कर चुके हैं और निश्चित रूप से बेहतरीन गेंदबाजी कही जाएगी। अंतिम ओवर शुरू होता है। विनोद पोलार्ड स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स, फर्स्ट बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, नो बॉल का इशारा अंपायर का। सो 2 रन्स एडेड टू द टोटल, नाउ द स्कोरबोर्ड बाय का इशारा, नाउ नो बॉल एंड अ बाय, दैट मींस 30 ऑन द बोर्ड और फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए। और देखते हैं बल्लेबाज इकबाल इस फ्री हिट गेंद का किस तरह फायदा उठाते हैं। विनोद पोलार्ड अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, फ्री हिट गेंद लेकर इस वक्त बल्लेबाज इकबाल जो कि सामना करते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ माइटी फैंटास्टिक डिलीवरी, लेग कटर, और यहां पर जुनैद दौड़ कर आ गए नॉन स्ट्राइक रन पर, आसान सा रन आउट होता हुआ स्ट्राइक रन पर। तो ऐसा कहना पड़ेगा जुनैद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, इस वजह से वो दौड़ कर आए स्ट्राइक रन की ओर, लेकिन नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज वहीं पर रुके रहे और आसान सा रन आउट नॉन स्ट्राइक रन पर होता हुआ जुनैद स्ट्राइक इस वक्त अपने पास रख चुके हैं। अब कुल मिलाकर 5 गेंदे इस ओवर में बाकी, और 3 बचे हुए 5 गेंदों में बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं रिलायंस काटीपल्ला के। एक वक्त स्कोर था 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद, अब 5.1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच विनोद जुनैद के लिए एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए जुनैद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार जस्ट कॉल फॉर अ बिग वन, फैंटास्टिक वर्क मेड बाय विकेट कीपर, लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद था और इस वजह से बिल्कुल सुरक्षित। निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा बेहतरीन विकेट कीपिंग विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे की, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। स्कोर इस वक्त रुक चुका 30 रनों पर, 30 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बेहतर तरीके से विकेट कीपर ने विकेट यहाँ पर उखाड़े थे। और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, विनोद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए जुनैद के लिए 4 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। विनोद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, जुनैद ने लॉन्ग ऑफ पर मौका और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर जो थे, हालांकि उन्हें अपनी बाईं ओर दौड़ जरूर लगानी पड़ी, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए गेंद को लपकने में सफल। और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा लेग कटर गेंद पर स्ट्रोक शो जरूर खेला जुनैद ने, लेकिन प्लेसमेंट गलत था और गेंद को वाइड लॉन्ग ऑफ पर फील्डर द्वारा लपक लिया गया। ಅದೇ ರೀತಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ಟಲ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು। तो जहां तक सवाल है स्कोर का 30 रनों पर स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका 7 विकेट के नुकसान पर। और श्रेयस नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हैं विनोद की गेंद को दाहिने हाथों पर विकेट, यह गेंद उछाला, लॉन्ग ऑफ पर एक बार फिर से फील्डर के लिए मौका और आसान सा कैच, कंसेक्यूटिव कैचेस फॉर द फील्डर एट लॉन्ग ऑफ। 1 मोर विकेट फॉलन और यहां पर टाइम आउट का भी इशारा हो चुका है। तो कुल मिलाकर 30 रनों पर विकेट इस वक्त गिर चुके हैं 8। At once they were 25 for 2 and now they are 30 for 8. Dramatical collapse happened in the innings of Reliance Katipalla in between 4 to 6 overs. और यहाँ पर आसान सा कैच, लॉन्ग ऑफ के फील्डर लपकते हुए नंबर 10 बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ। नंबर 10 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। 2 गेंदें सिर्फ बाकी अब उनकी पारी में। राहुल नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ। राहुल जिन्होंने इस ऋतु में अपनी गेंदबाजी के जरिए बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, इस वक्त बल्लेबाजी में सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट, विनोद की गेंद, ये गेंद उछाला इस वक्त राहुल ने, लगोल पर और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है यहां पर 6 रनों के लिए।
What a fantastic strike! This time he just caught that one right from the middle of the bat. और ऐसा स्ट्रोक पहले ऐसा लगा कि गेंद लंगोन पर लपक ली जाएगी, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके और लंगोन पर इसे कन्वर्ट करने में सफल छक्के में राहुल बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त. 36 लास्ट बॉल नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स. अंतिम गेंद बाकी इस वक्त और देखते हैं इस बार अंतिम गेंद पर राहुल और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं. और विनोद पोलार्ड उनकी पारी की अंतिम गेंद लेकर तैयार राहुल के लिए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए क्विकर गेंद उछाला इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट. गेंद जाते हुए खाली क्षेत्र पर कवर पॉइंट पर एक रन बल्लेबाज को मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े राहुल. दूसरा रन पूरा कर चुके. तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े. 9 सेकंड पर थ्रो पहुंचा लेकिन राहुल यहां पर बच नहीं पाए. Is out run out in the final delivery of the inning. Scored 8 runs in just 2 deliveries with a strike rate of 400 and he done a short but good job for his team. And finally the innings is up for Reliance Kadipalla. They finished with 38 for the loss of 9 wicket. And they stipulated 6 overs, and now the target for STC JEPPU is 39 set by Reliance Kadipalla to qualify for the grand finale of this competition with a required run rate of exactly 6.5 runs per over. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. And let's see can they reach the target or not. 39 रनों का लक्ष्य. 39 the target in 6 overs for STC JEPPU. और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं. फिलहाल STC JEPPU की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद. और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ जब यहाँ पर STC JEPPU की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. Well, welcome back. And before we are coming to this match, and the very interesting view from cameraman, he is absolutely very excited, observing everything in ground. Even what you call one man is very sleeping. Everyone is excited with the match, but one man is absolutely is not even bothered about anything what is going on in cricket field. What you call chinte illadavaniಗೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ. And like that only, he is absolutely not really bothered about what really going on cricket ground, but he is enjoying his sleeping. Maybe has got night shift yesterday, who knows. And coming to this match now, 39 is the target for the team Sridevi Cricketers JEPPU. Planet Air STC JEPPU need to get 39 to qualify for the mega finals. So opening batters came into middle. Two very destructive opening batters are in the middle. Left and right combination. We have Nawaz, the lefty batter, and Mr. Altaf, the jersey number 17, is the right-hand batter. And most successful bowler for team Reliance Kadipalla, Rahul, brought into attack. Rahul, now you cannot call him as only the bowler. You can call him as an all-rounder after seeing that 6 in the last over. Here comes first ball. The first ball appeal for leg before wicket. Umpire is not interested. Certainly the ball is going to miss the leg stump. Loud appeal coming from wicket keeper behind the stump, showing that how important the wicket of Nawaz is for the team Reliance Kadipalla. And very dangerous batter again. Rahul, right arm.
round the wicket. Quicker and pass one. They're going for the quick single, and they completed single as well. Good work done by Rahul on his follow through. So this is what I really seeing is this man Rahul is very energetic and athletic. The very young man, talented boy, and know the seriousness of winning this match here and you know exactly what to get the first over for his team. And so far he starts well with the two very good deliveries. Almost uncertain, the left-hand batter Nawaz with that fast and quicker delivery. And Altaf Walpadi, one big name as big hitting is concerned in underarm cricket, is on strike now. Rahul. This time swings and missed. Line is so good in the relegation. This is what a typical reaction of the batter Altaf. As his first ball is not really looking for that anything, but only just wanted to clear the fence, but beaten by the pace and the line. And here comes the next ball. This time, what we're talking about, Altaf Walpadi wanted to get the distance, but he just fails to do that. Now you can imagine, the ball is once it got a contact with the Altaf Walpadi's bat, everyone thought it might be a maximum. What this is the what we can see that Rahul. Sometimes that's kind of a slogan when Sachin Tendulkar coming to the bat. The what Sachin, what the crowd is acknowledging, and even Virat Kohli as well. But here in underarm cricket is also such kind of followers, the fan followers for the best performance here. Rahul. Well. This is what the Rahul is did for his team Reliance Katipalla so far for the success. This time once again, what we are talking about, so excited spectators, of course, occupying their places. They are not really bothered where he was there. They are sitting and enjoying the game of cricket. But altogether, this is what the beauty of underarm cricket is all about. And so excited dugout here from Reliance Katipalla. They are know exactly. They got a huge wicket of Altaf Walpadi. Replacing him is Altaf Basavanagudi. Rahul. Almost slog sweep what is attempted by Altaf. Overthrow comes into play. It's not a good cricket. They wanted to convert that one into 3 now. And they completed valuable 3 runs as well. This is not a good cricket there from Reliance Katipalla. How difficult here for the batter to get the runs against the bowling of Rahul. This is highly irresponsible. And the throw coming from the fielder. Just trying for the run out. Nothing wrong with that, trying for the run out, but no backup. And fielder is absolutely fails to back up in the relegation. And over number first pitch is in progress. 4 on the board for the loss of 1 wicket. And the bowler Rahul. And final time in this over. So far it's a very good over, quiet over in progress here for Reliance Katipalla. And Nawaz is on strike now. Rahul. Some drives that one, doesn't get hold up that one properly, just wanted to go for the expansive drive. Great over from Rahul, 5 runs and a wicket. And chasing a total score of 39 to qualify for the mega final. And the JEPPU got 5 from first over. 34 needed from 30 balls. Still the equation is favoring the chasing team because know exactly what target they are chasing. But you cannot say anything in cricket and in the beginning itself. Only 1 hour which is completed, but I think it's a good over and from Rahul, and 5 runs in the power play overs when we're having a powerful striker like Altaf Walpadi and Nawaz as an opener. It's not so easy for any bowler to come and bowl, and Rahul did a great job to bowl that good first over for Reliance Katipalla. Iqbal is a new bowler in. There's one more good bowler, especially did a great job in this power play overs so far for the team Reliance Katipalla. And wait and see how well he's going to bowl here in this big semi-final. Once again, jam-packed stadium out here in UCG cricket ground. After the spectators witnessed the first semi-final, they got some after lunch break. They again came in good number. Enjoy this one more big semi-final between 2 very good teams in the semi-final. GAURAV Trophy 2025 witnessing some record number of crowds. Here comes the next ball. First ball wanted to go for the reverse sweep and beaten by that line which is bowled by Iqbal in the relegation. Seeing the batsman is going for the reverse sweep. Of course the line is
almost suitable to go for the reverse sweep, but because of the batter Nawaz is failed to make any contact with that ball, he missed it completely and dot ball. 5 for 1. Nawaz will going to take the strike. The bowler in front of him is Iqbal. Second time, balls. Again, once again, wanted to go for the expansive drive. So far, Nawaz is not really able to get the ball to his bat neatly. Just a single with the addition of that single score, but moves on to 6 for 1 in the over number. Second is in progress. So very interesting field set here for Basavanagudi. The short fine leg, short square leg, the fielder at short square leg in front of square, the mid on, the fielder at mid wicket, and one fielder at long off. The two fielders outside the circle, which is the mid wicket. Arafat is a man is in the deep mid wicket, and long off is there. There is no fielder in the deep long on, in fact, here for Altaf Basavanagudi. Not surprisingly, he's been promoted up in the order as a number 3 batter, especially particularly in this tournament. He's given an opportunity to showcase his talent from the bat. Altaf going to face Iqbal. Right arm over the wicket, he balls. This time inside out, played it in the long off. What a catch! What a catch! There from the long off fielder, outstanding running catch. The celebration is on in the field. Why not? Huge one more huge wicket for the team Reliance Khatipala. Again, we can see that Altaf Basavanagudi's intention to get the placement down to a cover on extra cover. But because of that line is so difficult, isn't it? Almost he's picked that one off his legs and just wanted to play inside out cricketing stroke. And have a look at the effort there from fielder. Absolutely good one there from Jussi number 17, Taufiq. One more, the man who's did a great job in the previous tournament as well for the team. Reliance Khatipala is in the picture. Outstanding running catch. Now the pressure for Sridevi cricketers JEPPU. Each and every batters are not really looking for the rotation of strike. They're not chasing a big total like what Tarpados Khan has chased against young friend Surwa. This is a little score. Some sensible batting which is required, isn't it? But so far we are seeing some unnecessary. The batters are looking for the big shot and not really looking for the rotation of strike, and they pays the penalty. So successful second over is also for Reliance Khatipala is in progress from Iqbal. The new batter Sabit just came into bat here facing Iqbal. One more lovely delivery indeed, almost targeted midland off stump. Very lucky that Sabit has got a bat onto that in the last moment. They picked up a single for that with the single score. Numbers on to 7 for 2. Equal battle is on here from these two teams. And I'm just thinking about the 6 which is came from the bat of Rahul in the last moment. Is given some kind of energy for the bowlers to get to depend that total of 38 runs and 39 to win the match for the opposition. Iqbal around the wicket, over the wicket, correction. Driven and set to the fielder. Huge fish in the net. Well. What really going on here for the Sridevi cricketers, JEPPU? Absolutely one more irresponsible cricketing stroke. When the team is required some partnership after losing 2 wickets, the experienced batter like Nawaz is doing such mistake. It's not acceptable. Once again, they're trying for the inside-out cricketing stroke. The intention is to clear the infield, but the fielder just a couple of steps back and getting that catch right in front of his chest and complete the catch. It's 7 for 3 all in sudden. Team Sridevi cricketers are looking in deep trouble. So this is what the cricket is all about. What we are talking about sometime. If you underestimate the total, the 39, what the team Sridevi cricketers JEPPU, when they started, the beginning is not good. Already lost the 2-3 top order batters back in the pavilion. The captain Nishu himself came to middle to face
the bowling of Iqbal. Iqbal away from us. Balls, reverse sweep comes into play. This time misfield there by the field. They wanted to come back for the second. They're asking for trouble. My goodness. If it is the good throw into the hands of wicket keeper, the Reliance Bolar almost looks like they will going to celebrate one more wicket in the form of run out. Nish is so lucky indeed again. Misfield there by the fielder and back up by the fielder again. Pick up and throw there from Rahul. And throw is not really up to the mark. That almost in the off volley. If it is a throw in the pull. But wicket keeper have to be ready for everything, isn't it? Being the wicket keeper. Whether it came from the off volley or anything. They need to be very collective as far as technique of collecting the ball is concerned. Anyhow, the couple of runs, important couple of runs. One more good over which is comes to an end here from Iqbal. Searching for the right track. Planetaire STC JEPPU are still struggling in the middle. It's 9 for 3. 30 needed from 24. Still match is evenly balanced. The 6 difference which is between run and ball. And that difference is manageable with one big shots with the rotation of strike. But the question raising here is that who is the batter will going to take the risk of getting that maximum? And after losing 3 wickets, this is what the condition of the game is all about. This time opportunity of run there, but Sabit is no idea where the ball is. That's why always mentioning about you don't watch the ball, just watch your partner when the ball is behind the stump. Of course, he doesn't know where the ball is, but your partner know where the ball is. He is the judge of the run. But unfortunately, and the team misses one important run. It's 9 for 3. Rahul round the wicket right arm. Again, helicopter shot comes into play. Zunaid, the captain of the side, diving effort, but not good enough to stop that ball. Just a single with the single scope, but now moves on to double figure. 10 for 3 now. Now these two gentlemen from Sridevi Cricketers JEPPU have to do the job here for the team. Youngsters, hot-blooded, and never gets that kind of scenario when the condition, the situation of the game is forcing him to perform. And you are become the good player only once when your man is to handle the pressure situation. Rahul. Balls, bowlers back drive, no run. Every dot ball, the supporters of Reliance Kartipalla absolutely cheering. And why not? Way that this team has did a performance in the last 2 tournaments has been unbelievable. 10 for 3. Rahul to captain of the opposition. This time steers the ball, placing the ball down to backward point region for a single. With the addition of that single scope, it moves on to 11 for 3. And every hard work is going on here for each and every run against disciplined bowling, against the good fielding of Reliance Kartipalla. This is a danger man. He's got a potential of doing anything. And here comes Rahul. Sabit takes his own time. You know exactly, this is not a time to throw your bat. This is a time to respecting the condition, isn't it? And try to play as per the condition required. Try to get moving the scoreboard and just spend the time middle a little bit. Catch it is a call, but no one there to catch the ball. And one more single is added to total. With the single, again Sabit is little bit absence of mind. The Nishu is telling is no one there to collect the throw from there. This is my call, you have to react that one. Anyhow, the one more over completed, 3 gone. After completion of over number 3, it's 13 for 3. Still 26 more runs required for the victory. In remaining 3 overs, 18 ball, 26 required for the victory. And Gopi, time for you to take the microphone here. And so far I think is the first 3 overs which is belongs to team Reliance Kartipalla, because they picked up a huge 3 wickets in the name of Nawaz, Altaf Valpadi and Altaf Basavanagudi. So that I think Gopi, the team Reliance Kartipalla still are looking in a driver's seat of winning this match. But the thing what you're talking about, one big over which will going to change the complexion of the game. And the problem here for the STC Gopi,
Not a problem of changing the gear, but problem they lost 3 wickets. This is what a big problem for these two batter. But anyhow, Gopi, the equal battle is on, and I think now time for STC cricketers to do something special as far as the technique of getting runs is concerned, because 26 needed from 18 balls. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त तो कुछ खास करने का वक्त इस वक्त आ पड़ा है यहाँ पर एसटीसी के बल्लेबाजों को, क्योंकि फर्स्ट 3 overs belongs to the bowlers of Reliance Katipala. They bowled fantastically in the first 3 overs, conceded just 13 runs and captured 3 vital wickets of STC JEPPU. 3 over का खेल बाकी. Oh, this is outstanding delivery. This is a fantastic delivery from the bowler. और बल्लेबाज नीशू जो थे इस गेंद को बिल्कुल समझ नहीं पाए. फैंटास्टिक डिलीवरी. अंतिम अक्षर में गेंद कुछ हद तक घुमा हुआ टर्न लेते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद फेंके थे. हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले. दिस इज एन एब्सोल्यूट फैंटास्टिक डिलीवरी. परफेक्ट लेग कटर, और लेग कटर गेंद को समझ नहीं पाए इस वक्त. और श्रेयस से जो गेंदबाज थे जिन्होंने ये गेंद को फेंकी थी, और इस बीच रन से नहीं मिला, तो इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार था. ना तो बढ़ता विकेट. निशु का स्ट्रोक इस वक्त लंगोन की दिशा में, लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को इस बीच मिलेगा. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर. निश्चित रूप से एक बेहतरीन लिंक लाइन के साथ गेंदबाज रिलायंस काटीपल्ला के इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और 3 विकेटें जो गिरे हैं नवाज लेफ्टी, अल्ताफ वॉलपाडी और अल्ताफ बसवनगुड़ी के, निश्चित रूप से सीधे हुई क्रिकेटर्स को काफी हद तक बैकफुट पर लाकर खड़ा कर सके. बॉलर जस्ट कॉल फॉर अ बिग वन, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली. लेग स्टंप uprooted. Sabit, the man dismissed, just wanted to play the reverse shot, not succeeded. The ball pitched almost on the block hole, and he's flattered his leg stump. This is an outstanding delivery from Shreyas, and he just got rid of Sabit. So, एक और विकेट गिर चुका. Have a look at this in the replay. This is an outstanding delivery, fantastic one. Just uprooted the leg stump, and because of this dismissal, once again I must say, STC are now looking deep in trouble. तो 4 विकेट यहां पर गिर चुके हैं. 14 for the loss of 4 wicket. They badly required a partnership at this stage to get back into this match. 25 more runs now they have to score for victory in remaining 2+ overs. That means 15 deliveries. और निश्चित रूप से न सिर्फ साझदारी बल्कि एक तेज साझदारी, क्विक पार्टनरशिप की इस वक्त जरूरत है बल्लेबाजों को एसटीसी जप्पू के. और इस बीच नए बल्लेबाज दीक्षित का आगमन यहां पर होता हुआ, और श्रेयस इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, चूंकि गेंद तक पहुंचना चाहा चूंकि, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. हर डॉट गेंद के साथ रिलायंस काटीपल्ला के प्लेयर्स डगआउट से तालियों की आवाज, सीटियों की आवाज इस वक्त सुनाई देती हुई. और इस वक्त कम बैक करना एसटीसी जप्पू के बल्लेबाजों को, तो इस वक्त चौके और छक्के लगाने होंगे. लंगोल पर गेंद को खेला और एक और विकेट गिर चुका है. 1 more wicket fallen. Disaster continuing here for the batsmen of STC JEPPU, and Reliance Katipalla got 1 more breakthrough. तो रिप्ले पर देखिए दमदार स्ट्रोक जरूर था, लेकिन लंगोन पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची, और आखिरकार उन्होंने कोई गलती नहीं की. जश्न इस वक्त बनाते हुए सेलिब्रेशंस इज गोइंग ऑन द कैप ऑफ Reliance Katipalla. They lost their 1 more wicket. In fact, STC JEPPU lost their 1 more wicket. Now they are 14 for 5. 14 रन 5 विकेट, और सब कुछ इस वक्त रिलायंस काटीपल्ला के पक्ष में चलता हुआ. और अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही, मैजिकल बैटिंग जिसे कहते हैं, इस वक्त एसटीसी जप्पू को इस मैच में वापस ला सकती है. और न सिर्फ रिलायंस काटीपल्ला के पास सशक्त बैटिंग का लाइनअप है, बल्कि बलाढ्य बॉलिंग लाइनअप भी है. और इस बलाढ्य गेंदबाजी के लाइनअप के जरिए इस वक्त एसटीसी जप्पू की बैटिंग लाइनअप को वो इस वक्त तोड़ने में काफी हद तक सफल रहे हैं. और नए बल्लेबाज 1 more batsman is now comes out to the middle. नवाज बेलाल नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद. चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस वक्त एसटीसी जप्पू को, जहां तक विजय का सवाल है. इस बीच श्रेयस की गेंद, ये गेंद बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी. गेंद पर शॉट फाइनल पर रन के लिए दौड़ पड़े. रन यहां पर पूर्ण करने में सफल. निशु काफी तेज विकेटों के पीछे, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 15 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. 15 for the loss of 5 wicket. 1 more fantastic over in Reliance Katipalla's point of view came to an end. Just 2 runs conceded by Shreyas in this over, and captured 2 wickets, and 4 overs gone, and after 4 overs still STC JEPPU are now struggling. 15 for 5, 24 to get from remaining last 12 deliveries. That means in remaining last 2 overs 5 विकेट सुरक्षित.
और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा रिलायंस काटीपल्ला के खिलाड़ियों ने अब तक का सर्वांगीण प्रदर्शन देते हुए इस मैच में अपना प्राबल्य स्थापित कर चुके हैं। बंधनों को तोड़ना है तो इस वक्त एसटीसी जप्पू को चंद चौके और छक्के यहां पर लगाने ही होंगे इन बचे हुए 2 ओवर में। और प्लैनेट एयर ट्रैवल्स इनकी ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अनीश 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। 24 रन चाहिए, 12 गेंदें बाकी। और नवाज बेड़ाल इस वक्त सामना करते हुए। दूसरा सेमीफाइनल मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट गौरव ट्रॉफी 2025 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया जप्पू फ्रेंड्स जप्पू मैंगलोर ने एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करते हुए एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम वी आर जस्ट वाचिंग हियर। दर्शकों से खचाखच मैदान इस वक्त भर चुका है और इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए मुकाबला जारी है। ऑफसाइड ऑनसाइड पर गेंद को स्वीप इस वक्त स्कूप कर दिया वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, जस्ट सिंगल ही गॉट। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 5th स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले को। तो इस वक्त अगली गेंद लेकर गेंदबाज अनीश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए 16 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और जहां तक सवाल है सामना करने का तो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार निशु। और निशु जो कि स्वयं कप्तान है एसटीसी जप्पू की, उनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आन पड़ी है एक बेहतर बल्लेबाजी निभाने की, अपनी टीम को सही मंजिल तक पहुंचाने की। और इस बीच ये गेंद शॉट फैंटास्टिकली स्ट्रक, दिस इज आउटस्टैंडिंग स्ट्रक, 1 बाउंस इनटू द फेंस। और ऐसे स्ट्रोक्स की इस वक्त जरूरत है और निशु ने जिस तरीके से इस गेंद को पिक किया था राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट, काबिल तारीफ। Fantastically placed with a reverse shot and finds the gap as well at deep back of the third man. 19, in fact it's a 20 on the board, 19 to get from remaining 10 balls. 10 गेंदे 19 रन चाहिए, एक और चौका या छक्का निश्चित रूप से काफी हद तक एसटीसी को इस मैच में वापस ला सकता है। और यहां पर देखिए किस तरीके से चौके को इस वक्त झड़ा था निश्चित ने रिवर्स शॉट के जरिए। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार अनीश चौका प्रदान करने के बाद कुछ हद तक दबाव में नजर आते हुए गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए कप्तान रिलायंस काटीपल्ला के। और गेंदबाज इस वक्त तैयार अनीश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। निशु इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त गली की दिशा में, अपील जोरदार लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, शायद गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर। पहली चेतावनी फर्स्ट वार्निंग इस वक्त दी गई है गेंदबाज को पिच के बीच डेंजर जोन पर प्रवेश करने के लिए। और जहां तक सवाल है इस वक्त 9 गेंदें बाकी, 18 रन चाहिए, 18 टू गेट फ्रॉम 9 बॉल्स। लेफ्टी बल्लेबाज नवाज बेड़ाल इस वक्त सामना करते हुए। निश्चित रूप से नवाज एक चौके या छक्के की सख्त तलाश में इस वक्त। और देखते हैं यहाँ पर अगली गेंद पर किस तरीके का स्ट्रोक वो अपनाते हैं। इस बीच गेंदबाज अनीश दाहिने हाथ राउंड द विकेट ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा। ऐसे रन की जरूरत है इस वक्त एसटीसी जप्पू को यहाँ पर कम बैक करने के लिए, क्योंकि रन से उन्हें चाहिए, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। फिर से एक बार अनीश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को मोड़ दिया इस वक्त मिड विकेट पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, डीप मिड विकेट से फील्डर दौड़ गया, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट एंड द क्लेवर थिंग इज जस्ट वर्क इट अवे ऑफ द टोस डाउन टू शॉर्ट मिड विकेट एंड कम बैक फॉर द सेकंड रन वेरी क्विकली इन द एंड। और यहां पर देखिए किस तरीके से गेंद को टैप कर दिया था ऑन साइड पर कलाइयों के सहारे, जब तक डीप मिड विकेट से फील्डर दौड़कर आकर गेंद को फील्ड करे। कुछ मिसफील्ड के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल, it's 23 on the board, in fact it's a 24 on the board for losing 5 wicket, 15 to get. And Anish comes इस बीच ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूके अगेन दिस वक्त स्टंप्स पर टकरा चुकी है। That is the end of Nawaz Belal, just wanted to play a reverse shot at the last moment, not succeeded. And the ball kept low at the last moment, passed below off his bat and struck his midland off stump. One more wicket fallen in the critical circumstances of the match for STC JEPPU, and now once again they are looking in trouble. 24 the score, 6th
सो वेलकम बैक वंस अगेन। और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है, अंतिम गेंद पर एक रन बन चुका है, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 25 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर 25 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स, 14 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर। 14 रन चाहिए अंतिम ओवर में, और निशु और विनोद पोल्लार जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा क्षमता एबिलिटी जरूर है ये दोनों बल्लेबाजों में, चौके और छक्के लगाने की इस अंतिम ओवर में। और देखना यह है कि अंतिम ओवर में जो 14 रन इस वक्त चाहिए उनकी टीम को, एसटीसी जयपुर को, क्या वो 14 रन यहाँ पर विनोद पोल्लार्ड और निशु साथ में मिलकर बना पाते हैं या नहीं। तो गेंदबाजी शुरू करते हैं श्रेयस, जिन्होंने अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन फेंका था, सिर्फ 2 रन प्रदान किए थे, 2 विकेट वो प्राप्त करने में सफल। अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं विनोद पोल्लार्ड, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 14 टू गेट फ्रॉम 60 डिलीवरीज। फर्स्ट बॉल, हियर वी गो, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद उछालना चाहा, बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट टर्न पर गेंद पहुंची, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, जस्ट सिंगल ही गॉट 26 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। नाउ 5 बॉल लेफ्ट, 13 रन रिक्वायर्ड। निशु बैक ऑन स्ट्राइक, निशु पिछले ओवर में एक चौका रिवर्स शॉट के जरिए लगा चुके हैं, क्या इस ओवर में भी उस सफलता के सिलसिले को वो दोहरा पाते देखना पड़ेगा। और इस बीच निशु सामना करने के लिए तैयार, जो कि स्वयं कप्तान इस वक्त एसटीसी जयपुर की काफी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। 13 रन चाहिए 5 गेंदों पर। श्रेयस की गेंद, ये गेंद लेग से पर आते हुए मिस जजमेंट, एब्सोल्युटली मिस जजमेंट, और अंपायर ने इशारा किया कि दे आर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट। तो निशु इस वक्त तक गेंद को छोड़ दिया था उन्होंने, हालांकि लगभग फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, थोड़ा सा भी कनेक्ट कर लेते तो शायद गेंद डिफ्लेक्ट होता, तो गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके डीप फाइनल सीमा रेखा के पार हो सकती थी, क्योंकि वहां पर फील्डर काफी सीधे तैनात है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। लेकिन एक गेंद व्यर्थ, 4 गेंदें बाकी, 13 रन चाहिए, 13 टू गेट फ्रॉम 4 डिलीवरीज। और इस बीच गेंदबाज श्रेयस दाहिने हाथ ओवर द विकेट, निशु के लिए गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार निशु के लिए उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, एक्स्ट्रा कवर फील्डर आफ्टर इट, जस्ट सिंगल ही गॉट। और निशु इस वक्त स्ट्राइक शायद अपने पास रखना चाहते हैं, दूसरा रन लेना चाहा, लेकिन एन मौके पर अपने निर्धार को बदलते हुए क्रीज पर सुरक्षित और एकमात्र रन बल्लेबाज को मिला। 27 नाउ 12 to get from 3 deliveries. विनोद पोलार्ड बैक ऑन स्ट्राइक, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार श्रेयस की गेंदों का, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, सिर्फ चौके छक्के इस वक्त एसटीसी को इस मैच में वापस ला सकते हैं। इस बार विनोद पोलार्ड के लिए शॉर्ट टर्न पर गेंद निकली, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि एक रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके। अब द लास्ट चांस, द लास्ट अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ एसटीसी। ऑलमोस्ट 2 sixes रिक्वायर्ड, 11 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग लास्ट 2 बॉल्स, बाई का इशारा अंपायर का। और क्या निशु इन 2 गेंदों में 2 छक्के लगा पाते हैं, या फिर एक चौका या छक्का लगाकर मैच को टाई कर पाते हैं, देखना पड़ेगा। और इस बीच श्रेयस तैयार, निशु के लिए यह गेंद, ओह फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम श्रेयस। और इसी के साथ लास्ट बॉल रिमेनिंग, 11 टू गेट। अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो यहां पर रिलायंस का टिपल्ला की विजय निश्चित है, लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक आखिरी गेंद फेंकी जाए। क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। और कप्तान जुनैद इस वक्त आकर गेंदबाज श्रेयस को कुछ समझाया कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ अंतिम गेंद इस वक्त फेंकनी चाहिए, और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज श्रेयस तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज कमिंग अप, राइट आर्म ओवर द विकेट, मिसेस, दैट्स इट। 10 runs thrilling victory for Reliance Kadipala against SCC JEPPU, and with a 10 runs thrilling victory they are through to the grand finale of this competition. और इस श्रृंखला के गौरव ट्रॉफी 2025 के मेगा फाइनल मैच में अब मुकाबला होगा टॉर्पेडोज खाना और रिलायंस काटीपल्ला के बीच। दोनों सूरतकल साइड की टीमें इस वक्त इस श्रृंखला के चैंपियन खिताब के लिए भिड़ेंगी, रिलायंस काटीपल्ला और टॉर्पेडोज खाना। और वो मैच ठीक 5 मिनट बाद यहां पर शुरू होगा। द मैच स्टार्ट्स राइट आफ्टर 5 minutes. द ग्रैंड फिनाले ऑफ गौरव ट्रॉफी 2025 will going to start the mega final between Torpedoes Khana versus Reliance Kadipal, and that match starts exactly right after 5 minutes. So till then we're taking a short break. We'll be back right after 5 minutes with my friend Satish for the second last time in this tournament when the mega final match, the grand finale of this prestigious cricket tournament, Gaurav Trophy 2025 is now going to start. Now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. Gopi.
So man of the match of this match award goes to the man who played short but a quick fire innings. He scored 8 runs unbeaten of just 2 deliveries, including 1/6 with a strike rate of 400. Also, he picked up 1 wicket and bowled a fantastic economical spell. 2 overs, no beaten, 6 runs and 1 wicket from the ball, and 8 runs of just 2 deliveries, unbeaten from the bat, including 1/6. Rahul for Reliance Katipalla adjudged the man of the match. I request Rahul please go to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. Rahul of Reliance Katipalla adjudged man of the match. Thank you. Dhanyavad. ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಂಡದ ತಂಡದ ರಾಹುಲ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಾಹುಲ್ ಆಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ adjudged man of the match. I request Rahul of Reliance Katipalla please go to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
both the teams captain Tarpas Kana and Reliance Katipala come to the toss within 2 minutes.
ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕರು. So Reliance Katipalla, after won the toss, they elected to field first, and in the grand finale of this prestigious cricket tournament, GAURAV Trophy 2025, which is proudly organized by JEPPU Friends JEPPU Mangalore, is now coming up live and exclusively right in front of you within just a short while. Thank you.
Right, Reliance Carnival after won the toss, they elected to field first, and I request the players, the both teams players, to please start the match as soon as possible. The grand finale of this prestigious cricket tournament, Gaurav Trophy 2025, which is proudly organized by JEPPU Friends. JEPPU Mangalore is now coming up exclusively right in front of you. And that match, that mega final match, that grand finale is now going to start within just a short while. We are just taking short break, and we'll be back right after short break for the second last time in this tournament with my dearest friend Mr. Satish in English, where the match will going to commence within just a short while. Thank you. Dhanyavad. Welcome back once again for the mega final of prestigious Gaurav Trophy 2025, which is proudly presented by JEPPU Friends in this historical usage cricket ground. Once again, Reliance cricketers Katipala, they try to make a history here, and consecutive second time they are coming into the finals of this usage cricket ground. And a signal came from umpire, and will it going to be history here? Already the two tournaments witnessing the team which is coming from local pools are winning the titles, and will it going to be one more opportunity for Reliance Katipala to create the history and continuing the history here? And but they need to have a lot of hard work because they're playing against Torpedoes Kana. Here comes the first ball across the line, played it down to deep square leg and defeat the fielder. Will it going to be bounded there? Very good stop by the fielder in the deep square leg, and before the throw coming from the fielder from the deep, ample time for the batter Bashit to complete the 3 valuable runs. So very, very interesting to watch these two teams. Reliance Katipalla, after defeating team STC in the semi-final, they are looking so confident. And even Torpedoes Kana is also, after defeating Young Friends in the big semi-final, they know exactly they cannot take this team lightly because of their performance in the last tournament, SBB Trophy. They are upsetted Young Friends in the final. Can they upset here the big team Torpedoes Kana? Again, the next delivery ball by Rahul, who is a man who is looking in a terrific form in the bowling performance. Once again, he just wanted to get a good start here for the team Reliance Katipalla. Third time in this over. Right, over the kid wanted to go for the expensive drive, wanted to go for the single in the negation, asking for trouble. Now they're going for the run. And opportunities created for a run there because of that overthrow. And Iqbal, the man in the third man, is not happy with that backup by the fielder. Even Zunaid is the one, the captain of the side, having some exchange of word there between Iqbal and the fielder and captain of the side, Zunaid. And Zunaid saying that I can't run quickly because of injuries, which is for him knee injuries in the last tournament. So that looks like a little bit uncomfortable. And here comes Rahul, right arm over the wicket. This time, chance here for the fielder. And looks like the catch which is taken quite easily at short extra cover region. Well, this is a wicket what they really wanted in the beginning. Team Reliance Katipalla picking up a huge wicket of Bashit. The Shreyas is the one who is standing at a short point region, taken the catch here. And the wicket number first is back in the pavilion. It's 4 for 1. And over number, the first is in progress. So this is what the team Reliance Katipalla wanted in the beginning. They know exactly they're bowling against one of the formidable batting department. What to team
Torpedoes Kana has got, and the wicket of Bashit, certainly it will go into some kind of encouragement for the team there, that they got a huge wicket. And the new man in is a man of the match of the previous match, the semi-final, after they got an excellent victory against team Young Friends and they chased that huge total of 60 to win the match. This man is really changing the gear and getting some important runs from his bat when it's required the most down the leg side. This is what the pressure straight away for the bowler after seeing that he is bowling against one of the good striker of the ball, Ashraf, down the leg side, and scored Namuzan to 5 on the board, correction, without loss of for the loss of 1 wicket. This time wanted to go for the big shot, chance of runner. Zunaid is not having a big arm, throwing arms, but still he's released the ball quickly to the hands of Rahul, but that time Ashraf, I think, he's just made it. Looks like the opportunity is created for the run out there when the ball is went straight to the hands of short mid wicket, and he cannot throw quickly, just cannot use his arm and totally just flicks the ball, but it's not good enough to get the result. Got the result, and 6 scored Namuzan to 6 on the board for the loss of 1 wicket. You're watching the mega final of prestigious GAURAV Trophy 2025, which is organized in the sweet memory of late GAURAV Bolar. So good crowd again in the big final as well, and this is a very good day for the entertainment for the cricket lovers here in UCG cricket ground. The mega final is on. Rahul, right arm around the wicket. Oh, disappointment. Rahul looks like the same Rahul who did a great job in the semi-final. A little bit struggling as far as a run, as far as the line and length is concerned. Again, the ball is gone far away outside the line of leg stump. And Nizam, the batter, will go into face a next delivery. Final time in this over. This time across the line, played it nicely down to mid-wicket region, but not more than a single. With the addition of the single, the first over which comes to an end, equal result for both the team. 8 runs from this over for the team Torpedoes Kana. At the same time, 1 wicket for the team Reliance Katipalla. It's 8 for 1 after completion of over number first. Seven hours game in the mega final, and 2 hours going to be a power play, and Iqbal, the man, is brought into attack to bowl the second over. One who did a great job in the last match as well as an opening bowler. It's not so easy, so isn't it, for the bowler who is bowling in the power play when only 2 fielders outside the circle, restricting the boundaries, and need to be a very good on line and length, good in line and length, and no excuse, a little margin for error, especially when you're going to ball against the batters like Nizam and Ashraf. Ashraf scored 18 runs in the previous match with 2 massive sixes, really changing the game, shifting the game. And here comes the first ball. Lovely delivery, good start there from Iqbal. Ball just passing between the bat and pad, and ball missed the leg stump in the negation, and there's no chance at all for any run. Good start there from Iqbal. So very impressive, Reliance Katipalla, what they did in these 2 tournaments. And today, in this particular tournament, GAURAV Trophy, we are just watching the team which is got a lot of confidence when they are lifting that ZBB trophy. This is what happening when you are lifting a prestigious title. All in sudden you are taking totally different team. Oh, lovely start again. The second delivery. The wicket keeper has been outstanding so far in behind the stump, but this time little bit. The first attempt he missed it. The opportunity may be the created for the stump out. Just have a look at the replay. Oh, just a fumble. Absolutely fumble. It might be there's a close one. If he manages to collect that one quickly, then opportunity created for the stump out. Rahil, the little master behind the stump, did a great job. One of the unique part of the field, wicket keeper behind the stump, because the wicket keeper is the one is giving a lot of confidence for the bowler. When he collects the ball neatly, gathers the ball neatly, making some stump out, taking some tough catches behind the wicket, behind the stumps,
and makes a lot of confidence for the bowler as well. This time he picked it right from the middle of the bat and one bounce into the fence for 4. This is what a typical stroke of Nizam. He loves to play across the line. Quite dangerous one, but he need to take the risk. After that, back-to-back 2 dot balls. He just wanted to break the shackle. Just have a look at the replay. There's nothing wrong with the line of the delivery. The ball is on the middle of the stump, and batters just hit that one right from the middle of the bat down to deep square leg boundary for 4 runs. And with that boundary, Skoban moves on to 12 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. Here comes, try to repeat the ball, repeat the stroke. Too clever there from Iqbal. You know exactly, he did a mistake in the previous delivery. Just try to ball mid-line leg stump, then quickly learning from the mistakes. This is very important for the bowler. Of course, mistake is a common, but learning from the mistake is so important to bounce back. And he came in with a very good line just outside the line of off stump. Here comes Iqbal. Bowles drags it from the outside the line of off stump, played it down to mid-wicket region. They wanted to come back for second. Oh, fumble from the fielder. It looked like some kind of hesitation for the second run. Ashraf is, of course, is not the kind of the player who takes plenty of risk to come back for the second. He doesn't want to take any risk, and rightly so, because coming for the second is asking for trouble, because he is the one is running towards a dangerous end, non-striker's end, and that's why he is not subtle for the second. But maybe the reason that he wanted to keep the strike. And you know exactly, this is the last over of the power play and the last delivery remaining. He just wanted to go for one big shot in this over. Iqbal. Balls outside the line of off stump, too far. White call by umpire. This is what all about the pressure what talking about with the addition of that extra run score. But moves on to 14 for the loss of 1 wicket. So good score on the board here for the team. Torpedoes Khana and Reliance Katipalla have to restrict the runs. Again, wanted to go for the expansive extra cover drive. Misses the line completely. Good line, good comeback. 2 outs completed. After completion of 2 over of the power play, the team Torpedoes Khana are looking not that much of a big run rate, but it's a good one. It's 7 runs per over. 14 for 1. Outstanding cricket tournament which is organized by JEPPU friends. And it was a long tournament, isn't it? We have started Saturday and continued to Sunday, but because of rain interrupted, taken into this day, the Wednesday. And I think it's a one more extra day for the spectators to get some entertainment, isn't it? The way that we are witness the 2 semi-final has been outstanding for the big crowds here in UCG Cricket Ground. Everyone is enjoyed this game of cricket, and now it's a mega final. We are witnessing in the beautiful UCG Cricket Ground. So after that power play, the fielding restriction is off, so that the fielder is spreading out, not more than 5 outside the circle. 1 down at deep extra cover, 1 at long off in orthodox long off. The long on is a little bit wideish. The fielder at mid wicket and 1 fielder down at deep square legs, just behind the square. Here comes Rahul. This time top edge, opportunity created and is gone. Well, Arish. Usually he is a batter, always believe with that powerful sweep shot, but he just wanted to help the ball. Maybe the reason that he wanted to get that one very fine, just wanted to defeat the fine leg fielder, but because of the top edge, the ball is ballooning up in the air, and the fielder at short fine leg region making no mistake at all. Wicket number 2 back in the pavilion of Torpedoes Khana. Just have a look at it in replay again. Absolutely, the beaten by the extra bounce, and just wanted to go for the scoop shot, and but he couldn't manage to get the direction right as the fielder is underneath it. And 14 on the board for the loss of 2 wicket. Replacing Nizam, Harris coming to the middle. With the jersey number 18, Harris, one more very good striker of the ball. Just like Nizam, very strong on the onside. Especially as far as the slog sweep is concerned, powerful sweep shot is concerned, very strong. And once again Rahul with the wicket, isn't it? He's got a habit, isn't it? He got a habit of every time he's in action, he's got a habit of picking up the wickets for that team. 2 wickets for him so far. Reverse sweep comes into play to take that one into the deep cover point region for a little bit outside the circle. In fact, it's not a deep. And
1 run added to total. With the addition of that single scoreboard, now moves on to 15 for 2 in the over number. Third is in progress. That brings Ashraf into strike now. The protection is given in the deep, in the 5 protection for Ashraf as Rahul. Right above the gate. This is what the speciality of Rahul, isn't it? It's not an easy bowler. It's not like what the young friends Uruva bowlers did. They only just try to bowl wicket to wicket with the power, with the face. But if you generate lot of face, and it's easy for the powerful striker of the ball, because always the powerful strikers loves to see the ball is coming to the bat very quickly. But Rahul is not kind of the bowler who bowl very quickly. It's just releasing the ball and just makes the batsman to wait. Just like that. Just like that. Just comes out of run out. It's a sider. And he's sacrificing his wicket for his senior player. My goodness. Rahul absolutely having a fantastic tournament. Not as a bowler, as a batter, and even in the field as well. Just have a look at that one. Stops the ball, quickly releasing the ball to the hands of wicketkeeper. And wicketkeeper completes the formalities of a run out as well. Wicket number 3 gone. It's 15 for 3. Team Torpedoes Khana. The first final for the team Torpedoes Khana in this particular season. Every big teams are struggled to lift the prestigious title. In the first trophy, Nutan Trophy, Gori Young Boys, they came into final, but they faced the defeat against the team Friends Kuttar. Then the second tournament, ZBB Trophy, Young Friends Urva came into final, and they are defeated by the same team, Reliance Katipala. Now once again, Reliance Katipala has got opportunity to upset one more big team in the mega final. Again, delicately swept that one, just closing the face of the bat, what Shakir usually does in his beginning of his innings. And he picked up a single, rotate the strike, and 16 on the board for the loss of 3 wicket in the over number. Third is in progress. So far it's a quiet over. The great over is in progress from Rahul. This time wanted to go for the helicopter shot. Doesn't get hold up then properly outside edge of the bat. Fantastic over. Rahul once again been outstanding in his spell. 2 overs, no maiden, 10 runs and picked up 2 wickets. See that, 10 runs in 2 overs, and out of that 2 overs, 1 hour is bowling in the power play. And why I am telling this is a good economical over, because they are bowling against one of the formidable batting department what Torpedoes Khana has got. And seeing this all things, I think the Rahul has been outstanding from the bowling. Man who won the art of all cricket lovers with his courage and temperament, what is shown in these 2 tournaments. Absolutely, he will going to take this level of confidence for high level in coming tournaments. The one more successful bowler, Shreyas. The one bowler is a lot of damage for the position. He is in action now. 4th over. This time, this is what the lecture of Shreyas. The ball is getting an extra turn so that Shakir is misjudged. He thought it might be a wide, but because of the turn in the ball just passing inside the line and no damage done. Shreyas. Full toss, chance! Oh my goodness, the fielder. Oh, looks like one more wicket back in the pavilion in the form of run out. Ashraf is the man. He is not a quick runner between the wicket, and he just pays the penalty for that. At one stage, I think the catch for the fielder, Azhar, I think, shot fine leg region. He's not really tried for the catch, but I think I take a luck enough. Even though catch which is not converted, but they got a huge wicket in the form of run out. The wicket of Ashraf. Just have a look at it in the replay. Pretty ordinary effort there from Azhar, but they got a huge wicket of Ashraf. Well, it's 16 for 4. Reliance cricketers, Katipala, once again, they are inching towards making one more upset in the big final. But job is not yet over. Job is not yet over because the batter is coming to the middle. It might be the last tournament for him in this year, as he was traveling to Gulf for the job. And can he lift once again this team from the danger? He already is proved in the previous semi-final.
with this extraordinary technique of hitting the ball. Now Shreyas will go into ball. Ooh, that delivery is absolutely quicker and the faster one. The need to appreciate Shreyas. Everyone talking about he will going to be a junior Ashwin for underarm cricket. But I think I will tell you the small difference between him and Ashwin after this. Again, faster deliveries attempted. This is what he wants. You know exactly. He cannot bowl the slower one for the batter like Shakir. This is what all about the pressure. And the run which is conceded in the form of extra 17 on the board. Here comes in Shreyas. Bowls this time again outside the line of off-run pressure. What we are talking about, the young man has feeling. And what I'm talking about between the similarity between these two, Ashwin of course bowling that leg cutters and off cutters, but 70 to 80% he bowls the leg cutter, Ashwin. And this man is mixing up very well. My goodness, one more. The consecutive third wide delivery is here. Now, this is what the cricket is all about. Every matches is all going to be a new experience. And every opposition and every opposite batsman is a different experience, isn't it? Of course, you bowled beautifully, no doubt at all, in the last 2-3 matches. But this one is absolutely is a little bit feeling pressure. And holding your nerve and keeping cool and concentrating on the line and length is so important for a young man. And here comes the next ball. That three back-to-back wide deliveries, but no matter, doesn't matter. He got a huge wicket. My goodness, just have a look at the dugout of the team Reliance Cartipala. They absolutely enjoy this wicket of the danger man. Is back in the pavilion. Sinan with the beautiful delivery, quicker and faster one. Just have a look at the replay. This is a leg cutter, and that's what I'm talking about. The leg cutter. The difference between Ashwin and Shreyas. Ashwin was bowled leg cutters with the little bit flighted and slower one, but this man can bowl the quicker leg cutters with the pace. This is what has given him a wicket in this occasion. Completely misreading the turn of the ball, the flight of the delivery. Just have a look at it in a replay. After two bounce which came into him and hitting the leg stump, the middle stump in fact, and hitting the timber, the middle stump, and the 19, which is the total score for the loss of 5 wicket. What an outstanding performance so far there from Reliance Cartipala. New batsman in his experience. Oh, whoa, that one again very close to the leg stump. It didn't got that much of turn in that occasion, but I think Imtiaz, who played it very dangerously, exposed his leg stump for the leg cutters. It's not an ideal technique to implement. It's a very dangerous and very risky one. And lucky for him that that ball didn't got that much of turn enough to hit the leg stump. Here comes Shreyas. Oh, beautiful leg cutter, beautiful. One more excellent delivery, good comeback here by young man. Only 3 wides in this over. Can you believe this? 4 gone, it's 19 for 5. And once again, Reliance Cartipala absolutely doing something new here. They're going towards one more history in UCG ground. And Gopi, once we thought that when of course, the team Torpedoes Khana winning the toss, Reliance Cartipala winning the toss, elected to ball pass. After seeing the Torpedoes Khana's batting department, it looks like they will going to get more than 50 to 60 runs. But the way that the bowlers Reliance Cartipala did, they're once again sending a strong message. We are only the team can make one more history after that big upset in the previous tournament, defeating young friends Urva. They can defeat even Torpedoes Khana as well if Torpedoes Khana underestimate this team. बिल्कुल कोई भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए सतीश। और जहां तक सवाल है इस वक्त रिलायंस कार्टिपला का, तो बेहतरीन गेंदबाजी इस श्रृंखला में उन्होंने दी है बल्लेबाजी के साथ साथ। और यहां पर फाइनल मैच में टॉर्पेडोज खाना के खिलाफ एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए फलस्वरूप इस वक्त रनों के लिए संघर्ष करते हुए खाना के बल्लेबाज पहली गेंद थी, इस वक्त गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहा था, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो इस वक्त 4 ओवर, द फर्स्ट 4 ओवर्स कंप्लीटली बिलोंग्स टू द बॉलर्स ऑफ रिलायंस कार्टिपला। राहुल, इकबाल, श्रेयस, जिन्होंने जिस तरीके से पहले 4 ओवर में गेंदबाजी की है, काबिल तारीफ है। इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त शाकिर ने, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर, 1 रन का इजाफा
और जहां तक सवाल है, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर। जैसा कि सवाल है, रिलायंस काटीपल्ला का ZBB ट्रॉफी 2025 है जो कि चंद दिन पहले खेला गया था, उसकी चैंपियन टीम रही है रिलायंस काटीपल्ला, और यहां पर उस सफलता के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद सीधे पॉइंट फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। इम्तियाज की पारी समाप्त। गेंद को धीरे से उन्होंने इस वक्त उछाला था, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था, स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं था, हल्के से ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को उन्होंने छुआ था। देखिए किस तरीके से, और गेंद आसानी के साथ पहुंची इस वक्त पॉइंट फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। विकेट नंबर 6 और एब्सोल्युटली Torpedoes Ghana are now looking deep in trouble. 19 for 6 at this stage, and what a fantastic batting bowling performance continuing here from the bowlers of Reliance Kadipala in this grand finale of this prestigious cricket tournament, GAURAV Trophy 2025, which is proudly organized by JEPPU friends, JEPPU Mangalore. और इस बीच नए बल्लेबाज मंसूर, एक और अनुभवी बल्लेबाज टॉर्पेडोज गाना की ओर से इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और गेंदबाज अनीश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और अनीश का सामना करेंगे इस वक्त नए बल्लेबाज मंसूर। ये गेंद फैंटास्टिक डिलीवरी, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कमबैक मेड बाय द बॉलर, और यहां पर देखना पड़ेगा मंसूर जैसे बल्लेबाज को एक बेहतरीन गेंद के जरिए बोल्ड आउट किया है, जिस तरीके से अनीश ने यहां पर काबिल तारीफ है। दिस इज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट ऑफ कटर डिलीवरी, और मंसूर फॉरवर्ड फ्रंट फुट पर जाने के बाद गेंद को ढकेलना चाहते थे, और यहां पर देखिए किस तरीके से हुआ था। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, इट निप बैक एंड दिस इज एन आउटस्टैंडिंग वन, इज गॉट अ गैप बिटवीन हिज बैट एंड लेग, और गेंद उस गैप से वो निकलकर सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर टकराई, और निश्चित रूप से फ्लाइट में इस वक्त ललचाया था बल्लेबाज मंसूर को, और बल्लेबाज मंसूर इस फ्लाइट में इस बार फ्लाइट में आ गए। देखिए यहां पर किस तरीके से फ्लाइट के झांसे में आ गए कहना पड़ेगा, फ्रंट फुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहता, लेकिन बल्ले और पैर के बीच में, बैट और पैर के बीच में लंबा अंतर, और उस अंतर को चीरते हुए गेंद टर्न लेते हुए, घुमाव लेते हुए सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराई, गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ मंसूर का विकेट पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में गिर चुका है। ताश के पत्तों की तरह इस वक्त विकेट गिरते हुए टॉर्पेडोज गाना के, और रिलायंस क्रिकेटर्स के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद जो पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, उस निर्णय का संपूर्ण समर्थन करते हुए यहां पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज रिलायंस काटीपल्ला के, और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार चेतन, नए बल्लेबाज हल्के से विकेट, पहला स्वीप इस वक्त चेतन ने करना चाहता, और इसी के साथ हैट्रिक यहां पर परिपूर्ण कर चुके हैं अनीश। He's got the hat-trick. What a fantastic delivery. यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा चेतन का दुविधा भरा स्ट्रोक, पहले सोच का गेंद को इस वक्त स्वीप किया जाए, लेकिन अंतिम क्षण में देखा कि गेंद को हल्के से मोड़ा जाए, और इस दुविधा में पड़ गए। देखिए पहले रिवर्स शॉट खेलना चाहता, फिर हल्के से गेंद को स्वीप करना चाहा, लेकिन जब तक वो कुछ करे गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए लेग स्टंप पर जा टकराई, गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए। फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस, he's got the hat-trick, और निश्चित रूप से सतीश एक बेहतरीन गेंदबाज का प्रदर्शन यहां पर देते हुए रिलायंस काटीपल्ला के गेंदबाज। Exactly, Gopi. What an outstanding bowling performance, and you need to appreciate Anish as bowling two different deliveries. If you see the two deliveries, two dismissal, Gopi, he bowled off cutter for Mansoor, and the leg cutter for the batter Chetan. If you see this Chetan just wanted to make a little bit uncertain by moving here and there, and he made us uncertain. The bowler made the batsman uncertain, bowling that leg cutter. This is what the beauty of cricket is all about, and getting hat-trick Gopi in the mega final, and team against team like Torpedoes Ghana is absolutely outstanding bowling performance from Anish. बिल्कुल सतीश, absolutely outstanding bowling performance, और टॉर्पेडोज गाना के जैसे नामी टीम के खिलाफ हैट्रिक प्राप्त करना उतना आसान बात नहीं है, और अनीश ने यहाँ पर हैट्रिक परिपूर्ण किया है। इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, रिवर्स शॉट इस वक्त खेलना चाह चुके हैं, रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन यहाँ पर मिलेगा जरूर। शाकिर एक छोर पर मौजूद है, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर। व्हाट अ फैंटास्टिक ओवर केम टू एंड फ्रॉम अनीश, 5 overs completed, and after completion of 5 overs still the problems are continuing for the batsmen of Torpedoes Ghana. They are struggling out in the middle. It's 21 for 8 after 5 overs, और जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, पहली गेंद थी ऑफ कटर मंसूर के लिए, फ्रंट फुट पर जाकर गेंद को ढकेलना चाहता, बल्ले और पैर के बीच में लंबा अंतर, और उस अंतर को चीरती हुई गेंद ऑफ कटर के तौर पर टर्न लेते हुए, घुमाव लेते हुए सीधे जा टकराई स्टंप्स पर, मिडल ऑफ स्टंप पर, और यहां पर देखिए हैट्रिक किस तरीके से होता, पहले पॉइंट पर कैच लिया गया था, उसके बाद दूसरी गेंद पर मंसूर का विकेट गिरा, और उसके बाद तीसरी गेंद पर चेतन लेग कटर गेंद पर चेतन का विकेट प्राप्त किया अनीश ने। इस बीच ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रन इस बीच
बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देखिए मंसूर का विकेट गिरा था, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, तो इस वक्त चेतावनी वार्निंग दी गई है। और यहाँ पर ये चेतन का विकेट देखिए किस तरीके से गेंद हल्के से पैडल स्वीप करना चाहता, लेग कटर के तौर पर गेंद मिडल लेग स्टंप पर टकराई और इसी के साथ ये विकेट गिरा। और अब तीसरे अंपायर के लिए यहाँ पर अंपायर द्वारा सौंपा गया है कि ये वाइड है या नहीं परखने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया द्वारा किया जा रहा है। और जहाँ तक मैंगलोर मीडिया के टेक्नीशियंस के बारे में अगर कहा जाए तो एक बहुत ही काबिल टेक्नीशियन तुषार, जो कि जब से मैंगलोर मीडिया यूट्यूब चैनल हुआ है तब से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तुषार जो कि बेहतर टेक्नीशियन, उनके साथ एक और टेक्नीशियन अशफक अपना कार्यभार बाखूबी अदा करते हुए कैमरामैन के तौर पर प्रणाम, जो कि सीनियर कैमरामैन है मैंगलोर मीडिया की शुरुआत से, वो उनके साथ जुड़े हुए। और शागिर एक और बेहतरीन कैमरामैन, और तीसरे कैमरामैन के रूप में अनास जो कि हमारे साथ मौजूद। लीगल डिलीवरी, इट्स अ लीगल डिलीवरी। और निश्चित रूप से ऑनलाइन स्कोरिंग पर इराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन पैनल मैंगलोर मीडिया के एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर देता हुआ। तो शाकिर के लिए इनाम घोषित किया गया, अच्छू माडूर 1000 रुपए का इनाम घोषित कर चुके हैं हर चक्के के लिए, सिर्फ शाकिर के लिए। और अमन इस बीच ओवर की सामने, one more wicket fallen, 9th wicket gone, Shreyas got the breakthrough। so ऐसा कहना पड़ेगा ताश के पत्तों की तरह विकेट गिरते हुए। और यहां पर इस गेंद को देखा जाए तो एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्रा क्विकर डिलीवरी। और ऑन साइड पर गेंद को आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहता, लेकिन चूके पूरी तरह और गेंद लगभग उनके लेग स्टंप को बिखेर कर ले गए। और यहां पर रिप्ले पर देखिए दिखाया जा रहा है किस तरीके से क्रीज के कोने से यह गेंद थी इस वक्त एक्स्ट्रा क्विकर, एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट लेग कटर। थोड़ी सी टर्न ली, अंदर की ओर आई और बल्ले को वंचित करती हुई लेग स्टंप पर जा टकराई। 9 विकेट गॉन, अंतिम बल्लेबाज क्रीज पर। और देखते हैं यहां पर अंतिम बल्लेबाज जो है शरण, इस वक्त बचे हुए गेंद को शाकिर के साथ दूसरे छोर पर बल्लेबाज उनके साथ मिलकर बचे हुए गेंदों को खेल पाते हैं या नहीं। और श्रेयस इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम रिलायंस काटीपल्ला। ये गेंद इस वक्त जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप। बेहतरीन गेंदबाजी और स्कोर इस वक्त हो चुका है 21 रनों पर, 21 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। Struggling time for the batsmen of Torpedoes Khana is now continuing here. इस बार ऑन साइड पर खेला, परफेक्ट लेग कट गेंद थी, ऐसा कहना पड़ेगा गेंद के टर्न को पहले भाप लिया था, ऑफ द टोस गेंद को इस वक्त मोड़ दिया शरण ने। बड़ी स्लॉन्ग ऑन पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर, 22 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, श्रेयस दाहिने हाथ ओवर द विकेट शाकिर के लिए, ब्लाइंड स्ट्रोक खेलना था, plumb in front, absolutely plumb in front, and the innings of Torpedoes Khana wrapped up for just 22 runs. They were bundled out for just 22 runs. What a fantastic bowling performance given by the bowlers of Reliance Kadipala. They bundled the innings of Torpedoes Khana for just 22 runs. Have a look at this in the replay. Absolutely plumb in front. There is no doubt about that. और अंपायर ने बिल्कुल सही तरीके से उन्हें आउट घोषित किया, अंपायर रोलैंड पिंटो ने। और अब 23 रनों का लक्ष्य, 23 द टारगेट फॉर रिलायंस काटीपल्ला। और निश्चित रूप से काबिल तारीफ गेंदबाजी की है राहुल, इकबाल, श्रेयस और अनीश है जो 4 गेंदबाज इस वक्त इस्तेमाल किए गए। श्रेयस ने 4 विकेटें उखाड़े, अनीश ने 3 विकेटें, एक हैट्रिक की मदद से 3 विकेटें उन्होंने उखाड़ा। और क्या यहां पर देखिए गेंदबाजी का स्कोर 1.5 ओवर्स, ही कंसीडर्ड जस्ट 4 रन्स एंड कैप्चर्ड 3 विकेट्स बाय श्रेयस। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग फिगर्स। और राहुल 2 विकेट जिन्होंने प्राप्त किए, अनीश ने 3 विकेटें प्राप्त की है, श्रेयस ने 4 विकेटें प्राप्त की है। कुल मिलाकर ये तीनों गेंदबाजों ने मिलकर 1 रनआउट के रूप में विकेट गिरा था। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा राहुल, श्रेयस और अनीश, ये 3 गेंदबाजों ने मिलकर टॉर्पेडोस खाना के सशक्त बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी को इस वक्त उन्होंने तोड़ा है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये विकेट सब गिरे थे, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये गेंद देखिए उछाल कर ऑन साइड पर उछालना चाहता, गेंद पैरों के बीच से निकली थी और पहला विकेट सीनान का गिर चुका था। उसके बाद दूसरा विकेट इस वक्त गिरता हुआ इम्तियाज का, छठा विकेट इस वक्त गिरता हुआ। देखिए गेंद को इस वक्त छुआ था
और गेंद सीधा पॉइंट फील्डर के हाथों में पहुंची थी और आखिरकार पॉइंट फील्डर ने कोई गलती नहीं की। ये विकेट था मंसूर का, परफेक्ट ऑफ कटर गेंद थी। देखिए किस तरीके से गेंद डिविएट होकर अंदर की ओर आई थी, फ्रंट फुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहता, एब्सोल्युटली नो क्लू, गेंद को खेलने का कोई मौका ही नहीं। गेंद और पैर, बल्ले और पैर के बीच में लंबा अंतर छोड़ गया, गेंद सीधे स्टंप चौक पर टकराई। ये चेतन का विकेट था, पहले रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बाद में पैडल स्वीप करना चाहा, लेकिन यहाँ पर गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई मिड लेग स्टंप पर जा टकराए और ये विकेट यहाँ पर गिर चुका। और यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, ये गेंद थी अमन के लिए, अनीश की, श्रेयस की, माफ कीजिए। ये देखिए किस तरीके से एक्स्ट्रा क्विकर लेग स्टंप को बिखेर कर ले गए थे और ये विकेट यहाँ पर गिर चुका था। तो ये अंतिम विकेट गिरा था, एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट, द बॉल स्टक टू हिज बैक लेग फॉर शाकिर। और देखिए यहाँ पर अंपायर को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई, उन्हें एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट घोषित करने में। सो the innings of Torpedoes Khana are bundled out for 22 runs, 23 the target for Reliance Katipalla। और जहाँ तक सवाल है 7 ओवर में 23 रन का लक्ष्य सतीश, 3 अगर कहा जाए 3.30 लगभग रन की रिकॉर्ड रन जो चाहिए इस वक्त। और जहाँ तक सवाल है टॉर्पेडोज खाना के पास भी बेहतरीन गेंदबाजी का लाइनअप है, लेकिन 23 रनों के अंदर टॉर्पेडोज खाना के गेंदबाजों को अगर रिलायंस काटीपल्ला के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है, रिलायंस काटीपल्ला के बल्लेबाजों को 23 रनों के अंदर अगर टॉर्पेडोज खाना के गेंदबाजों को रोक कर रखना है तो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी। और देखते हैं यहाँ पर टॉर्पेडोज खाना के बल्लेबाज, टॉर्पेडोज खाना के गेंदबाज रिलायंस काटीपल्ला के बल्लेबाजों को 23 रनों के 23 रनों के लक्ष्य के अंदर रोक कर रख पाते हैं नहीं। फिलहाल उनकी पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल के बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे ब्रेक के बाद एक बार फिर से फॉर द लास्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ सतीश के साथ आपके सामने हाजिर होंगे जब यहाँ पर रिलायंस काटीपल्ला की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। Well, thank you very much, Gopi. What a dramatical collapse in the batting order of batting department of team Torpedoes Khana. The signal came from umpire Roland Pinto. Everything is ready for the first over, and 23 runs, which is target set for Reliance Katipalla to lift the prestigious GAURAV Trophy 2025. Opening batters came into middle. Arafat is a batter. The first ball just wanted to go for the sun. Chance of run out, and it's a disaster start. Well, what we are talking about, the cricket is all about the funny game, isn't it? The 23 runs required for the victory. I think Arafat, no need to panic at all, isn't it? Of course, maybe the run is there, but it's a risky run. Why to take the risk? Azhar is too right that why you are going for the risky run? We needed only 3.30 runs per hour. So I think Arafat is a little bit wrong here as far as selection of run is concerned. Of course, if you are chasing a 45 or 50 runs, you have to take that risk of getting that risky single. But you are chasing only 23 to become the champion. You got a wonderful opportunity to upset one more big team. So bowlers absolutely create the stage for the batters. And this kind of scenario you can't get again and again. So you need to appreciate the bowler of team Reliance Katipalla, because they are created the stage for the batters. Getting that's a little 23 runs. Of course, they're playing against one of the top team, but this is gettable runs if you play sensibly. Nizam, right arm over the wicket, the captain of the side. Zunaid, as always, very strong on the offside region. Again, the placement is too good, but this time they're not taking any risk of coming back for the second. So with that, the confident looking extra cover drive, Zunaid is the captain of the side. What a tournament is having as a captain for the side of Reliance Katipalla, taking his team successfully twice into the final. Once become the champion, and once again a dream which is absolutely created here. Dream which is absolutely created to become once again the champion of the prestigious tournament. Zunaid, they have to be a little bit cool and calm here to take his team safely to the home. Here comes Nizam. Right arm over, they get bounced. Oh, ball him! Clean him up! Wicket number 2. Match is not yet over. Well. Nizam strikes with a beautiful off cutter.
Of course, for the left-hander, it is an away-going delivery, but it has been outstanding off-cutter. Just have a look at it. Not that much a big turn in the ball. Slight bit of deviation, total misjudgment. After a second bounce, which is a ball came very near to the bat of Azhar, he's misjudged that one and is up stump. So you can see that absolutely hitting the off stump of the batter. 2 wickets back in the pavilion, 1 for 2. The Reliance Kartipalla, the team absolutely, once they bundle out their opposition for 22 runs, the dream already started in the dugout that once again they can become the champion here. They can upset the big team. But they lost 2 wickets, but not the match. Still, they got 8 wickets in hand. Just like I mentioned about don't take anything lightly. Just like I always am mentioning about the cricket. It's an absolutely game of glorious uncertainty. Here comes Nizam, bowling with a short run up. Right arm over the wicket bounce. Leading into the drive. Ball is in there for a while, but out of the reach of Sinan in the direction. Once the ball is in there, looks like it's going to be a chance here for the fielder. Harif, the batter, is going to run from his bat. It's 2 for 2. Equal battle is on now. The Nizam is just open the gate a little bit for the Tarpadoes Khana with the wicket and with the run out. Now Zunaid is the captain of the side. Again, he wanted to take his ship safely to the destination. Again, down the leg side, going to be a wide. And even Zunaid knows very well a small leakage can sink a big ship. Cannot underestimate the small totals. It's 3 for 2. Again, this time going for the quick single. This time the fielder Harris has lost his balance, tried to make a run out, just almost quickly moving to the direction of the ball, tried to make a run out, but he couldn't manage to stop the single. Once again, Zunaid almost is looking towards a rotation of strike. You know exactly each and every run is going to be very crucial. 4 for 2. Nizam balls. Once again, he wants a single. No run there. Good call there from Zunaid. Good call. Harif even, he was just upset, but I think it's a good call from the captain. If he went for a run, definitely a certain run out. It's 4 for 2 after completion of first over. So 19 needed from 40 for 36 deliveries. 36 deliveries remaining and 19 runs required for the victory. Still, they got a plenty of deliveries to play. But thing here is that holding your nerves, handling the pressure, and playing sensibly is very important here for the Reliance Kartipalla. But lot of hard work required for the team Tarpadoes Khana. The two teams coming from the same region, the Suratkal. A proud moment for all the cricket lovers of Suratkal region, that team which is coming from same areas. But if Reliance Kartipalla will going to upset Tarpadoes Khana, definitely one more biggest achievement what Reliance Kartipalla they wanted to once again create the history in this historical UCG cricket ground. For that, I think they needed some sensible batting here. But Tarpadoes Khana, they know exactly that to win this match, they needed wicket. Without taking the wicket, each and every over, it's very, very difficult for them to save this match. Sharan brought into attack from the Planet Travel end. Lovely leg cutter to start with. After seeing the bowlers of, the spin bowlers of the team Reliance Kartipalla are most succeeded. So here also, Sharan is trying for the spin delivery. Just have a look at that one. It's run up and bowling. Again, friction off his legs. Quite dangerously played by Zunaid, but very confident. If he hit the ball, will going to miss his bat. Definitely, that ball will going to hit him back foot and definite chance of leg before wicket as well. Well, it's a 5 for 2 in the over number. The second is in progress. Just like I mentioned about different strategy, different technique to be implemented to get the wicket. So Sharan is not with bowling with the run up, with the short run up. Appeal for leg before it is from the bat. Exactly the deviation we can see clearly.
And Arif again, both the batters are so lucky. The two deliveries, both the batters got a bat in the last moment. And a couple of runs in a couple of deliveries. It's 6 for 2 in the over number second is in progress. Beautifully balled. Mansoor uprooted and flies the stumps. Usually what Mansoor is loves to do here whenever he's getting the ball. And flying the stump. That shows the frustration, isn't it? The frustration, we can see that. And we can see that beaten by the turn and the flight. And he's not having a ball in his hand. And even no problem whatsoever. Zunid's back foot is inside the crease. It's 6 for 2. Wonderful, wonderful cricket tournament. And what a day for cricket. We have witnessed some unbelievable performance from all 4 teams which is qualified for the semi-finals. And now we are watching a mega final. The well-deserved 2 teams here in the final, battling here for the prestigious GAURAV Trophy 2025. Sharan from the far end. Lovely delivery once again. Once again, question raised for the stump out. But umpire has got a little bit extra work as well. Uprooted the stumps, fly the stumps. This is almost identical mirror display of the previous delivery, isn't it? Same line, same length, same reaction coming from Zunid, struggling to reach to that delivery. But you can see that Sharan is a potential, isn't it? He's just doing something different here. Just like a spin bowler. How the Shreyas, how the Harrises did for the team Reliance Katipala. Anish, correction. Anish and Shreyas, both are dismantling the batting department. Driven nicely in the cover point. Reach a chance of run out in the strikers and direct it. But looks like umpire will going to draw the television. And just going for the umpire, third umpire to that run out decision. Ball is in there for a while. Shinan is in the picture. Didn't the direct hit. Well, whether the batter is safe or not. Looks like the batter is very confident. The body language, just I am talking about. The body language of Arif looks like he is safe. But we need to see here, because always the direct is directed to the most of the time. Most of the time it gives the result in favor of fielding team. But sometimes the batter is having a good technique of dragging the bat. But so many batters are struggle to try to drag the bat. That's a different story. But here I think maybe is safe in that occasion. But need to wait for the umpire decision, isn't it? The third umpire, yes, is a not out. Is a call from umpire, the Pradeep Kothari. Rightly so. And relax here in the dugout of team Reliance Katipala. So 7 for 2. Every battle is on for each and every runs here. Reliance Katipala. It's a 7 for 2. Still 16 needed for the victory. The match what looks like is evenly balanced. And not evenly balanced, I want to tell you the 70-30. The 70% is the winner of Reliance Katipala. And Torpedoes Khana is only 30% the remaining. "24 balls, 16 runs required for the victory." Seven runs on the board. 7 hours game, in fact. 30 balls remaining. Correction. This time Arif, is it trouble, but the bowler misses the throw from the fielder. Of course, the stumps which has been uprooted, but not from the ball. He's not having a ball in his hand, his arm. You can see that frustration in the camp of Torpedoes Khana, and very silent camp we can see in the dugout of team Torpedoes Khana. Quite understandable, because it's always when you are playing a final after defeating the team like Young Friends Surua, and they thought it might be the easy game in the final, but Reliance Kantipala once again showing their excellency in bowling. Point ball taken. This is a huge wicket. Nizam taken a wonderful cotton ball and captain back in the pavilion.
Very loose stroke in that occasion. And of course, we can see the intention of the batter to just pick the single down to offside it. As always, he loves to play that shot. But this time, because of the slower delivery from Nizam, he played it back to bowler. Wicket number 3 gone. It's 8 for 3. The match is not yet over. Correction, it's 7 for 3. So new batter coming to the middle with a lot of responsibility in his shoulder. Here comes Nizam, successful bowler. Tried to york the batsman, negotiated very well by the new batter, getting his bat right into that line of the ball, denying the yorker from Nizam. 2 wickets here for Nizam. Altogether 3 wickets fell in the same over. This time going to miss the leg stump straight away. Umpire knows that the ball is off cutter, leg by call by umpire. One more addition with the addition of that single score. Namuzan to 8 on the board for the loss of 3 wicket in the over. Number 3 is in progress. Well, now the new batter Arif Rahil is a non-striker, the wicket-keeper batter. Oh, bowled him! He just clipped the bills. Well, wicket number 4 is back in the pavilion. What a final! 8 for 4. It's an absolutely low-scoring encounter is going on here in this UCG cricket ground, the mega final of GAURAV Trophy 2025. What an outstanding off-cutter, absolutely clipping the bills of the batter. One more wicket back in the pavilion. It's 8 for 4. All in sudden, the match is still alive. Umpire now asking for the third umpire has got a little bit doubt whether the ball hits a stump or a wicket keeper behind the stump did anything. The wait and see. And the umpire knows that after having this much of advanced technology, why not just go for I think there's a huge gap between the wicket keeper and the stump, and when the ball is coming into the batter, is bowled out, and no contact with any part of the body from the wicket keeper. The ball is just clipping the base, just kissing the off stump. Good enough to just have a look at that. An absolutely perfect off cutter from Nizam. 8 for 4. It just looks like the 5th day of Chennai test match between South Africa versus India. I am not talking about the South Africa batting. They batted brilliantly. But how badly Indians are batted in a home condition. Lot more think about the Indian test team. And really big disappointment for Indian fans. The way that Team India played the last two test matches against South Africa. So this test match scenario in UCG. Delicately played. Anish, the experienced campaigner, the perfect man to deal with this condition. Picked up a single, rotates the strike. Over number 3 gone. It's 9 on the board for the loss of 4 wicket. And Gopi, what we are watching here, is it looks like, it doesn't look like Gopi, it was a 7 hours match. It's just like we are watching a 30 hours format of a game, UFC trophy. Low scoring game encounter is going on, isn't it? Just like when NFC bowlers are bowling such like that, both the bowlers are dominating here. And I'm really not understand, Gopi, what really happened to that pitch. Because the 60 run which is chased by Torpedoes Khana in the same pitch against the top bowling department, all in sudden both the teams started to see devils in the pitch. बिल्कुल सतीश, एब्सोल्युटली नाइटमेयर इन द पिच, ऐसा कहना पड़ेगा। 31 रन बन चुके हैं सिर्फ इस मैच में और 13 विकेट खो चुके। 13 विकेट्स फॉलन फॉर जस्ट 31 रन्स इन दिस मैच, एंड दैट शोज हाउ द बॉलर टुक द एडवांटेज कंप्लीटली इन दैट पिच। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का,
तो गेंदबाजी शरण गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद स्वीप करना चाहा इस वक्त लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से रनों के लिए कड़ा संघर्ष किया था टोरपेडोस काना के बल्लेबाजों ने, उसी तरीके का संघर्ष यहां पर करते हुए रिलायंस का टिपल्ला की गेंदबाज बल्लेबाज इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया। गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्कोर लेग पर, 1 रन का इजाफा हो चुका है। लो स्कोरिंग गेम इस वक्त होता हुआ ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट गौरव ट्रॉफी 2025 विच इज प्राउडली ऑर्गेनाइज्ड बाय जप्पू फ्रेंड्स जप्पू मैंगलोर। और शरण इस वक्त गेंदबाजी करेंगे, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार राहुल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए गेंद और इस बीच तेज तरीके की विकेट कीपिंग मंसूर द्वारा और ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज को विचलित करने का प्रयास करते हुए और इस बीच तेजी के साथ विकेट जरूर उखाड़े थे मंसूर ने, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 10 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और निश्चित रूप से 13 रन जरूर और चाहिए, काफी गेंदें बाकी जरूर है, लेकिन सवाल है इस वक्त विकेटों का। इस बार गेंद को स्वीप किया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई, 1 रन बासित जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोरबोर्ड धीरे धीरे से बढ़कर इस वक्त 11 पर पहुंच चुका है। 11 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट। एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम वी आर जस्ट वाचिंग हियर। दर्शकों से मैदान खचाखच इस वक्त भर चुका है। ये गेंद हल्के से स्टीयर कर दिया। इस वक्त ऐसे ही क्रिकेट खेलना चाहिए, बल्लेबाजों को अपनानी चाहिए, स्ट्राइक रोटेट इस वक्त करना चाहिए क्योंकि गेंदें काफी ज्यादा है, रन्स कम बना रहे हैं। तो अगर विकेटों को बचाए रखते हुए ऐसे सेंसिबल क्रिकेट बल्लेबाज अपनाते हैं, गैप पर गेंद को ढकेलने के बाद सिंगल्स कपल जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस बीच बल्लेबाज तैयार नहीं थे तो एक बार फिर से गेंदबाज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और 12 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। 4 विकेट के नुकसान पर राहिल इस वक्त सामना करते हुए शरण की गेंद, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को मोड़ना चाहे इस वक्त ओवर की समाप्ति और इसी के साथ चौथे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर और रन से चाहिए 11 इस वक्त। ओवर्स बाकी है 3 यानी 18 गेंदें बाकी और 11 रन चाहिए। 18 बॉल्स लेफ्ट, 11 runs required and still they got 6 wickets kept intact। और जहां तक मैच के विजय का सवाल है अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा द मैच इज नाउ स्टिल इन बैलेंस। और इस वक्त जरूरत है रिलायंस का टिपल्ला के बल्लेबाजों को सेंसिबल बल्लेबाजी की, जबकि टोरपेडोस काना के गेंदबाजों को इस वक्त चाहिए एक घातक गेंदबाजी, डेवास्टेटिंग बॉलिंग जिसे कहते हैं। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए शाकिर और सामना करते हुए इस वक्त अनीश। विकेटों की सख्त जरूरत है टोरपेडोस काना को इस मैच में पूरी तरह वापस आने के लिए, रनों की सख्त दरकार रिलायंस का टिपल्ला को अपने मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। ओवर की पहली गेंद लेकर शाकिर इस वक्त तैयार था, इन हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद हल्के से गेंद को पहला स्वीप कर दिया, रन के लिए दौड़ पड़े, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 13 रनों पर 13 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। निश्चित रूप से गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा संघर्ष जारी है और इस गौरव ट्रॉफी 2025 का चैंपियन खिताब अर्जित करने के लिए संघर्ष इस वक्त जारी है टोरपेडोस काना और रिलायंस का टिपल्ला के बीच। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया, इस वक्त स्कोर लेग पर गेंद पहुंची, बल्लेबाज जान चुके हैं ऐसे तरीके से ही इस वक्त स्ट्रोक खेलकर रन उन्हें बटोरने चाहिए, आक्रामक स्ट्रोक का प्रयोग इस वक्त नहीं करना चाहिए इन हालातों में। और इस बात से वाकिफ इस वक्त क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते हैं, रिवर्स शॉट डेलिकेट, एब्सोल्युटली डेलिकेट और बेहतर रिस्पांस नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज द्वारा। जैसे ही गेंद को तिरछे बल्ले के साथ रिवर्स शॉट किया बल्लेबाज अनीस ने तुरंत दौड़ना शुरू किया, वहां पर राहिल ने स्ट्राइक रन किया और 1 रन आसानी के साथ इस वक्त पूर्ण करते हुए और फिर से एक बार शाकिर अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक इनटू द गैप एज वेल, कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे। कवर पॉइंट पर गेंद को फीड कर लिया गया, थ्रो पहुंचा लेकिन 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त करने में सफल। बेहतरीन स्ट्रोक, क्विकर गेंद थी, इस उछाल को पहचानते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था इस वक्त थोड़े से स्टंप्स एक्सपोज करते हुए बल्लेबाज ने अनीश ने और 2 रन राहिल ने माफ कीजिए और इस बीच 2 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर 17 ऑन द बोर्ड। और इस बीच गेंदबाज शाकिर एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, इस वक्त रन आउट का खतरा और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। हालांकि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी, अपील को नकार दिया था लेकिन बल्लेबाज गेंद को बिना देखे दौड़ पड़े और यहां पर आसान सा रन आउट स्ट्राइक रेट पर होता हुआ तो विकेट यहां पर गिर चुका है। तो सतीश एक बेहतर साझेदार यहां पर बन रही थी और जहां तक सवाल है 7 या 8 रन जुड़ चुके थे 5 विकेट के लिए, तो इस वक्त राहिल का विकेट यहां पर गिर चुका है। तो विकेट का पतन
हाँ, यहाँ पर अनिश का विकेट गिर चुके, तो विकेट का पतन इस वक्त निश्चित रूप से रिलायंस का काटीपल्ला को कुछ हद तक मुश्किलों में ढकेल सकता है, और टॉर्पेडोज खाना के गेंदबाजों को यही वक्त है इस वक्त चंद और विकेट उखाड़ने का अगले चंद गेंदों में। Well, Gopi, were quite unnecessary, isn't it? Not required when they got 3 runs in 3 consecutive deliveries. I think they got runs what they really wanted in this particular over. And Gopi losing a wicket in this condition, Gopi, that giving some opportunity for the Torpedoes Khana to back in the game. And wait to see how Shakir will going to put some pressure onto the incoming batters. बिल्कुल सतीश, नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त हो चुका है। ये गेंद इस outstanding delivery and he just got the rid of the batsman. Fantastic Yorker delivery from the bowler Shakir, and a middle stump has been uprooted. Golden duck dismissal for the batsman, and with this dismissal I must say Torpedoes Khana are now back in the game a little bit. Well, Gopi, what really watching today in this particular mega final, Gopi? Absolutely bowlers dominating, and have a look at the delivery. Beautiful, unplayable Yorkerland delivery from Shakir, isn't it? And perfect delivery for the fresh leg, Gopi. When you are having a new batter in the middle, and Shakir is very intelligent, you know exactly, it's not so easy for the fresh leg to come and face that kind of deliveries. And he produced a beautiful, unplayable Yorkerland delivery for the new batter. Now, Gopi, 17 for 6, and 2 overs remaining. They needed another 6 runs to win this match. 3 runs per over, Gopi. It looks like the runs which is can be made in 1 hour. But condition here, it's not like that, isn't it? They got only thinking about, they only got 4 wickets in hand. They're not thinking about how many runs they wanted to get, but only thinking about we got only 4 wickets in hand, and that's what Torpedoes kind of wanted to do here. Just targeting, attacking the stumps, getting a wicket, and put some pressure onto the batters of Reliance Katipalla. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर विकेटें ही उखाड़ने होंगे टॉर्पेडोज खाना को, और सिर्फ इस वक्त रिलायंस क्रिकेटर्स काटीपल्ला के बल्लेबाजों के दिमाग में ये बात चल रही है कि इस वक्त विकेटों को किस तरह बचाया जाए। जैसा कि आपने फरमाया, रन से फिर भी बन सकते हैं, 12 गेंदों में 6 रन बनाने हैं, लेकिन सवाल है इस वक्त विकेटों का। सिर्फ 4 विकेटें सुरक्षित, और इस बीच गेंदबाज नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। इम्तियाज को इस वक्त गेंदबाजी दी गई। यह पहली गेंद, इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेला, गली फील्डर शरण गेंद तक पहुंचे, लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए। 1 more run added to the total 18, और पिछले ओवर के अंतिम गेंद थी शाकिर की एब्सोल्युटली फैंटास्टिक Yorkerland delivery, and the ball beats the batsman's bat and flattered his middle stump, and this is an outstanding delivery ball by Shakir in the last delivery of the previous over. 1 run मिल चुका है, scoreboard moving up to 18 now 5 to get from 11 balls. इम्तियाज, quite surprisingly इम्तियाज के लिए इस वक्त गेंदबाजी सौंपी गई, और इस वक्त बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार अफनान। ये गेंद इस बार bowled out, off cutter, perfect one more wicket fallen. Now the match is now equally balanced, और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि गेंद टिप्पा खाने के बाद कितनी टर्न ली थी। Absolutely the ball nipped back a lot than the batsman expected at the last moment, और गेंद सीधे टकराई इस वक्त लेग स्टंप पर। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था। इम्तियाज की गेंद थी, ऑफ कटर गेंद, गेंद को इस वक्त खेलना चाहते थे, इस वक्त उछालना चाहते थे कहना पड़ेगा, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, एब्सोल्युटली नो वे, और गेंद सीधे उनके बल्ले को वंचित करती लेग स्टंप पर टकराए। तो एक और विकेट गिर चुका है सतीश। तो 40 रन स्कोर्ड इन दिस मैच and 17 wickets lost. That shows the dominance of the bowlers in this match. Kyo Satish? Exactly, that's why I'm talking about Gopi. There's something devil in the pitch, isn't it? The way that the wickets are tumbling here, and it's a surprise move by the captain of the side, and so not a surprise but a good move, because bringing Imtiaz and a part-time bowler, and he picking up a wickets as well. So Gopi, still the 3 wickets remaining, 5 runs required for the victory. The match has still been balanced. बिल्कुल सतीश, देखते हैं क्या होता है। इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, इस बार गेंद को छोड़ दिया था, और शायद अंपायर के पास रिव्यू इस वक्त मांग करते हुए वाइड की, लेकिन यहाँ पर अंपायर इस वक्त और अब रिव्यू लेते हुए, तो यहाँ तक सवाल है रिव्यू का। तो देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। और 40 रन कुल मिलाकर 22 रन स्कोर्ड बाय टॉर्पेडोज खाना, 18 रन still scored by the batsmen of Reliance Katipalla, 22 plus 18, 40 runs total scored, and 17 wickets lost in this match. और निश्चित रूप से ये बात ये दर्शाता है कि गेंदबाज कितना प्राबल्य स्थापित कर चुके हैं। लीगल डिलीवरी और सही गेंद घोषित, 1 डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ, स्कोर इस वक्त हो चुका है
18 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर 18 for the loss of 7 wicket. The match is now still yet over. The equal battle is now continuing here. और शाम का वक्त लगभग शाम के इस वक्त 5:30 यहाँ पर बचते हुए सूरज इस वक्त मैदान की दाईं और अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ 5:10 इस वक्त बच चुके हैं और इस बीच इम्तियाज तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त नए बल्लेबाज जो कि इकबाल एक गेंद का सामना कर चुके हैं, अपने दूसरे गेंद की सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद फ्लाइटर गेंद उछाला और इसमें और एक और विकेट गिर चुका है। वन मोर विकेट फॉलन, गेंद को हल्के से चिप किया था, पॉइंट भी लगी दाईं ओर से बाईं ओर से, लेकिन कहना पड़ेगा इस वक्त बाईं ओर लपकते हुए फील्डर काफी चौकन एक बेहतर कैच उन्होंने लपका और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले। तो किस तरीके से मिडल ऑफ स्टंप पर हालांकि ऐसा कहना पड़ेगा कि बल्लेबाज को ललचाया था, गेंद को टॉस किया था कि बल्लेबाज इस वक्त स्कूप शॉट के लिए गेंद को खेला इस वक्त, लेकिन पॉइंट पर फील्डर काफी चौकन ने बाईं ओर दौड़ते हुए इस कैच को लपका बेहतर तरीके से। 8वां विकेट खो चुका है। तो सतीश यहाँ पर 2 विकेट सिर्फ बाकी है, 5 रन और बनाने हैं और निश्चित रूप से रनों के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है बल्लेबाज द्वारा। Well, Gopi, you need to appreciate the effort of a part-time bowler. He never looks like going to be a part-time bowler. Now, from this onwards, this match onwards, he can become a regular bowler for Team Torpedoes Khana. With that, he is getting a wicket for his team, and Imtiaz might be a very useful bowler now because in the particular days he is not able to get the runs from the bat, so he can become a bowler in the future. बिल्कुल सतीश यहाँ पर ये क्या बॉलर, one more wicket fallen. This is an absolutely turning out to be a fantastic match. This is an absolutely fantastic delivery from Imtiaz. Nip back, back foot पर जाकर खेलना चाहते थे राहुल और इस गेंद पर सोच खेलने में चूके मिडल और लेग स्टंप पर जाकर गेंद टकराते हुए बिल्स डिस्टर्ब होते हुए सेलिब्रेशंस इस वक्त टॉर्पेडोज खाना के कैंप में देखिए किस तरीके से हुआ था। Absolutely fantastic nip back, a lot than the batsman expected at the last moment. और देखिए किस तरीके से खिलाड़ी टॉर्पेडोज खाना के जश्न मनाते हुए 18 for 9 राहुल डिपार्ट्स फॉर गोल्डन डक। अंतिम विकेट मैदान पर और यहाँ पर अब पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम दिस मैच द प्रेशर ऑन द बैट्समैन ऑफ रिलायंस क्रिकेटर्स। तो यहाँ पर देखते हैं अंतिम विकेट मैदान पर है। अगर टॉर्पेडोज खाना 22 रनों के अंदर रिलायंस का टिपल्ला के बल्लेबाजों को रोक कर रखता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये एक असामान्य साहस कहलाएगा। और इस बीच देखते हैं यहाँ पर क्या 5 रन बनाने से यहाँ पर रोक कर रख पाते टॉर्पेडोज खाना के गेंदबाज या नहीं रिलायंस के बल्लेबाजों को। लास्ट विकेट नंबर 11 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। श्रेयस सामना करते हुए इम्तियाज की गेंदों का ये गेंद और क्विक मिस ओवर लेकिन इस वक्त मंसूर क्रीज पर मौजूद। सक्सेसफुल ओवर केम टू एन एंड फ्रॉम इम्तियाज एंड नाउ लास्ट ओवर रिमाइनिंग, फाइट टू गेट लास्ट विकेट इन हैंड। और मैं समझता हूं सतीश, मैं समझता नहीं लेकिन यकीन के साथ कहूंगा फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस गिवन बाय द बॉलर्स ऑफ टॉर्पेडोज खाना in the first 6 overs. Well, Gopi, have a look at the crowd here. Absolutely, they're cheering each and every moment. What a match, a low-scoring thriller. No one thought that this match will going to come to the last over, and the Imtiaz is a surprise package in the bowling department. And now he's sending a strong message for the Torpedoes Khana selector that my place is absolutely cemented with that bowling performance. He will never going to shake afterwards. and absolutely perfect bowling performance, Gopi. He is absolutely the breakthrough for the team Torpedoes Khana. Way that is bowled at 1 over with the 3 wickets. And Gopi, I think in that over didn't allow any run. Only 1 run he conceded and picked up a 3 wickets, Gopi. But still, I will say, Reliance Katipalla, they got opportunity to win this match and need to be brave and gutsy enough to face last over and just try to rotate the strike and get the winning run. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर देखना यह है कि अंतिम ओवर में 5 रन बना पाता है यार शाकिर गेंदबाजी करते हैं। अनीश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद यह गेंद अनीश के लिए रिवर्स शॉट खेल दिया, गेंद पहुंची इस वक्त गली के पर और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर। तो बल्लेबाज जिन्होंने इस गेंद को खेला था राहिल थे, 1 रन वो प्राप्त करने में सफल। अब 5 गेंदें 4 रन अंतिम जोड़ी मैदान पर। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड। दोनों बल्लेबाज श्रेयस और राहिल इस वक्त बातचीत करते हुए, राहिल श्रेयस को समझाते हुए कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त उन्हें अपनानी चाहिए। और यहाँ पर दर्शक खामोशी के साथ मैच का आनंद इस वक्त लेते हुए मेगा फाइनल मैच, ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट गौरव ट्रॉफी 2025 which is proudly
presented by JEPPU friends. JEPPU Mangalore is now progressing here. The match is now inching towards to a nail biting finish. और गेंदबाज शाकिर इस वक्त तैयार. Number 11 batsman, number 11 batter श्रेयस is now going to face शाकिर. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद ड्राइव करती है. इस वक्त गेंद जाती हुई खाली क्षेत्र पर. गेंद का पीछा करता है फील्डर. एक रन बल्लेबाज को मिलेगा. दूसरे रन के लिए तौर पर. This could be trouble. This goal. He misses. He misses this time. Couple of runs at it. मंसूर का थ्रो विकेटों को नहीं टकराया, वरना निश्चित रूप से बल्लेबाज को यहाँ पर खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर उनका थ्रो चूका और बल्लेबाज देखे यहाँ पर किस तरीके से हुआ था. थ्रो किया था लेकिन थ्रो विकेटों पर नहीं टकराया. 2 रन मिले. बेहतर शॉट था इनटू द गैप एज वेल. और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा, देखिए नहीं, बल्लेबाज पहुंच चुके थे. थ्रो भी शायद टकराता तो बल्लेबाज के लिए कोई खतरा यहाँ पर पैदा नहीं होता. 2 रन मिल चुके हैं. स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 21 नाउ. 1 for tie, 2 for win, 4 balls left. What a match. What a fantastic match. Well, Gopi, absolutely all we can see that the heart in the mouth when they coming for the second. Everyone, the Reliance Car people dugout is absolutely got a heart in the mouth. It's going to be run out or not, but they survived. And first time seeing Gopi, the Reliance Car people dugout is alive because of that couple of runs. Because 1 run will going to tie the match and 2 run will going to make them champion. बिल्कुल सतीश, 1 रन टाई करा सकता है, 2 रन उन्हें विजय दिला सकता है. 4 गेंदें बाकी है. सराउंडिंग फील्ड की इस वक्त सजाई गई है. दबाव इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर बढ़ता हुआ. द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स. और इस बार शाकिर, हियर वी गो, दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ओह बेहतर, फैंटास्टिक लेकर कपिलिंग फॉर बिहाइंड. और इसी के साथ तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त अपील की गई है. और देखना है कि यहाँ पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर मंसूर. बिहाइंड दिस हम विकेट जरूर उखाड़े हैं, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि तब तक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे या नहीं. हालांकि जश्न जरूर बना रहे इस वक्त टॉरपेडोस काना के खिलाड़ी. ओह दिस टाइम दिस कुड बी ट्रबल. दैट इज एन एब्सोल्युटली दिस टाइम. देखना यह है कि इस वक्त तीसरे अंपायर का निर्धार आना बाकी है. और तीसरे अंपायर, द डिसीजन इज स्टिल पेंडिंग. हेलो टॉरपेडोस काना, स्टिल डिसीजन इज पेंडिंग. डिसीजन इज स्टिल पेंडिंग. तो इस वक्त तीसरे अंपायर का निर्धार आना बाकी है. द डिसीजन इज नाउ स्टिल पेंडिंग. And now the decision again, he's gone. He's gone. Torpedoes Kana become the champion of GAURAV Trophy 2025, which proudly organized by JEPPU friend JEPPU Mangalore. Magnificent piece of work made by the wicketkeeper. Magnificent piece of stumping made by wicketkeeper behind the stumps by Mansoor, and also a magnificent piece of bowling performance given by the Torpedoes Kana's bowlers. So absolutely fantastic match came to an end. Kyo Satish? What a match, Gopi. What a match. What a low scoring thriller here from these two teams. And Torpedoes Kana, the holding there now when they're depending only 22 to win the match. And the bowlers once again dominated. Bowlers really dominated and really surprised with the Imtiaz is a surprise package in this, changing the game with that 3 wicket. But everyone, Gopi, everyone did a great job. Nizam started well with the bowling, picking up early 2 wickets and put some pressure onto the batter. And after that, each and every bowler of team Torpedoes Kana, the bowled excellent line and length and deserved the champion of the prestigious GAURAV Trophy 2025 by just single run. They defeated team Reliance Katipala. Congratulations for champion team Torpedoes Kana, and even congratulations for the runner-up team Reliance Katipala. Kaushik.
ಅಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಡಬಾರ್ದು, ದಯಮಾಡಿ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಡಬಾರ್ದು ಪ್ಲೀಸ್. ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಡಬಾರ್ದಾಗಿ ವಿನಂತಿ. We heartily welcome you to the Gaurav Trophy 2025. I request Gagan Shetty of Team STC to please hand over the moment of gratitude towards the guests to welcome them. It's a big round of applause welcoming the guests for the team for the trophy of Gaurav Trophy 2025.
Yes, the next chief guest we have Sri Sandip as well as Sri Sunanda. I request Uttam Bolar to come to the stage and hand over the moment of gratitude to the guest. Yes, we heartily welcome you to the GAURAV Trophy 2025. Yes, one more chief guest on the stage. We have Sri Santosh as well as Sri Geeta, Srimati Geeta, pardon. I request Mahesh to give the moment of gratitude to the guests and welcome them to the GAURAV Trophy 2025. The next chief guest we have Prashant of Young Friends Surva. I welcome him. I request Santosh JEPPU to please hand over the moment of gratitude to him and welcome him to the GAURAV Trophy 2025. And the next chief guest we have Ratan JEPPU, President of Sri Devi Cricketers, welcoming him to the main stage. Ratan JEPPU of Sri Devi Cricketers. The next chief guest we have hello, check. Yes, it's Farooq of Torpedoes Khana. I request him to please come to the stage. I'm welcoming him to the GAURAV Trophy 2025. I request Kaushik to give the moment of gratitude to him and welcome him for this tournament. Yes, next coming to the main thing. Hardly welcoming our umpires, the three most experienced umpires of Mangalore cricket. That's Roland Pinto, Sri Raj as well as Pradeep Kochari. To please come and take your Token of gratitude from our chief guests, Roland Pinto, Sri Raj as well as Pradeep Kochari. I request Ratan of Sri Devi Cricketers to please come to the stage and to please seat up. So I request Sri Hemachandra to hand over the token of gratitude to our most experienced umpire, Pradeep Kochari. Yes, next we have the second. I request Roland sir to please come to the dais to Roland Pinto sir. Okay, coming over to the next thing, that's commentators who bring the hype for the tournament, Satish and Gopi. I request Ratan JEPPU to please give the token of gratitude to our two commentators, that is Satish as well as Gopi, the English and the Hindi commentators of Punjab cricket. Yes, please give a big round of applause for both the Yes, I request Farooq to give the token of gratitude to Satish, the one most English commentator of Punjab cricket. Thanking him as well for taking part in this GAURAV Trophy 2025. Yes, next coming to the scoring department, we had Shrikant on the man on scoring board. I request him to collect a token of gratitude from Prashant of Young Friends Surva.
Yes, next coming towards the live telecast. That's brought by Mangalore Media, with the spectators in the house could have watched them and take out the entertainment there. I request Kamal of Mangalore Media to please come to the main stage to collect his token of gratitude from Sri Hemachandra. Kamal of Mangalore Media, or any one of them from the Mangalore Media, can come and collect the token of gratitude here. I request anyone from Mangalore Media team to please come and collect the token of gratitude from one of our guests in the main stage. Yes. It's coming towards the most important moment of the GAURAV Trophy 2025, the prize distribution ceremony, heading over to the final man of the match. Any guesses from your side? No, it's Nizam from Torpedoes Kana. He has made 7 runs and take up 3 valuable wickets for the team and bringing up Torpedoes Kana for the finals of GAURAV Trophy 2025, and as well as making them champions of this tournament. I request Srimati Sandhya to please hand over this individual trophy to this man. A big round of applause for him. It's the next individual of the GAURAV Trophy 2025. Best batsman. Any guesses? Any guesses? It's Santosh Bantwal from Young Venezuela, who has scored 54 runs in 3 innings, having a strike rate of 143. And I request Sri Sandeep to hand over this individual to this big man, Santosh Bantwal. Congratulations for you. Let's head over towards the next individual. That's best bowler of the tournament. Any guesses from your side? No guesses? Nevertheless, Shreyas of Reliance Katipala. He has took 14 wickets, having an economy of 2.4. I request Prashant of Young Venezuela to hand over the best bowler award to Shreyas, a young talented bowler from the region of Hoiki Bazaar. A big round of applause for him as well. It's coming towards the most important individual of this tournament. That's man of the series. Any guesses? Any guesses? No, it's yet again Shreyas of Reliance Katipala. He has taken a 40 wickets and he has also brought the team into the finals. Nevertheless, hard luck being the winners of GAURAV Trophy 2025. I request Ratan JEPPU to please give this individual award to him. Congratulations him also. Big round of applause. Yes, I request Kaushik to please welcome our President of Sridhar Cricketers, that's Ratan JEPPU. Yeah, he was not welcomed in this tournament. Nevertheless, yes. It's heading over towards the 2 Champions Trophy, that's champion as well as runners. Runners-up of GAURAV Trophy 2025 is backed by Reliance Katipala. I request all the team members, captains, players to please come to the main stage and collect your individual
collect a runner-up trophy as well as a cash prize of 25,000 and get a check of GAURAV Trophy 2025. Congratulations team. You were the winners of Zone Boys Collect Trophy and as well as the finals of GAURAV Trophy and being up the runners-up. Congratulations team, and also request the spectators to please give a big round of applause for the team. Played well, looking the hard work and as well as taking up the trophy home. Is heading over to the most weighted moment of GAURAV Trophy 2025. After an intense final in the final match that's between Innings as Torpedoes Khana. What a match that was. And the champions are Torpedoes Khana. I request the players to come to the main stage and collect a champion trophy and a cash prize of 50,000. And even the check. Request the guests to please hand over the trophy towards the team. Congratulations team on being the winners of GAURAV Trophy 2025. Congratulations to the winner Torpedoes Khana, winning the GAURAV Trophy and a cash prize of 50,000 rupees. Last but not least, I would like to thank Mr. Satvik being our third commentator and for hosting this closing ceremony. I request Mr. Ratan JEPPU, President of STC JEPPU, to give him a token of gratitude. Thank you. Thank you everyone. Also, this is not the least with us. We have our GAURAV Bolar, who is being from day one as being one more official for this team, looking in the scoring side as well as on being organizing side for GAURAV Trophy 2025. Thank you, man, in giving full hard hand handsome for this tournament. Thank you.
I request all the organizers of Gaurav Trophy, Mr. Santosh Pantwal and all the organizers to please join us on the stage for a group photo. Sujit, Uttam, Kaushik Shetty, Gagan, Karthik Shetty, please everyone join us on the stage for the group photo. All the organizers of Gaurav Trophy. I request all the organizing team of Gaurav Trophy to please join us on the stage for a group photo.